and they played 3 days of play. They got qualified in top 18, and then we are witnessing them just dominating the lobby and being the second spot. But let's just have a look on the teams playing right now, Edge. They are teamed in the grand finals for one last time here in day number 4, phase 2 grand finals. That is, we have 2K Esports, Team Pandem, Glug Glug, Bigatron by Vitality, the winners of Chapter 2, RIQ Rue, Team Flash, the winners of phase 1 grand finals, Team 52 Esports, SI8 Esports, T2K Esports, Alter Ego Ares, Alliance, Xavier, Boom Esports, Wine Esports, Team Warguy, Team Secret, DRS Gaming, and Four Tribes, the 2 fan favorite teams. Regardless, they would have made it to the grand finals, but yes, these are the teams with the highest number of votes. Yeah, exactly. I mean, they're having the highest number of votes, and man, oh man, I'm just super duper excited to see the overall rankings, and then witnessing the map of Rondo, because the chaos will be here, and everything is gonna be changing from today, because it's the final day, it's the final time, it's final 6 more matches, and I'd say the game for the teams on the second page, it's over, right? The teams below 15 positioning, it's over for them. Let's just have a look on the overall rankings, because Team Flash is doing tabletop, lurking into the shadows. It's gonna be alliances. They fought like warriors throughout the whole team and lobbies, and they are having 150 points. And Four Tribes, they will be having 149, just below alliances, and a point difference gap. That's a single point that'd be. I mean, you give in. Okay, I was thinking more like 7th position. That's it. I don't think anyone below 15. I mean, I don't even think anyone below 7 has any chance. 5, 6, as a matter of fact. Sometimes, because with the way Flash, Alliance, and Four Tribes are going, it feels like unless Boom or Alter Ego have an insane game today, we probably will be looking at one of these 3 teams get the championship for themselves. But it's okay, we'll be a little more optimistic. I gotta admit, RQ, that jump is pretty decent coming in. So yesterday was a good game for them, but overall, it's still not enough. That's true. I mean, it's not enough, but the team's lurking in the second page. I guess their game is over for them. They won't be able to make a huge comeback today, and it's not going to be easy, man. Edge, Asia Battlefield Chapter 3rd, it has been great already, and it's going to be the last phase, the last final day, right? I mean, we do have phase number 3rd, but phase number 2nd, grand finals, day number 4, man, oh man, my energy is super duper, and I hope so that audience is also feeling great today and supporting their teams, players, and supporting the channel as well. But right now, Edge, we'll be having a look at the second page, because the teams on the second page, what do you think? Can we see a comeback here? The teams on the second page, like Team 52, the Xaviers, Team Secrets, SIT Sports, Warguy, Team DRS, T2K Esports, Glue Esports, Wine Esports. What do you think? Can they make a comeback today? I mean, comeback. I don't know, to be really honest. I mean, to be in a situation where you don't even have 100 points now, going to the grand finals, the last day, Warguy, DRS, T2K, Glue, Wine. I mean, not really sure if there's going to be a comeback, but we would all love to see these teams disrupt the flow. That let me tell you that. I don't really think that there's a chance they can actually go to the number 1 spot. Maybe top 5. Still, yes, understandable. 5th position is up for taking. I get it, but anything more than that is pretty much an impossible task. And well, I've learned my lesson from phase 1. Let's not be overly optimistic. I mean, yeah, let's just not be over optimistic. That's true, and I mean, we can have a positive mindset, but not with that thing. But after this, we'll be having a look on the overall MVP, because we do know that Flash Win, he is just totally decimating and dominating the lobbies right now, and he is the overall MVP. He is sticking up with that first spot of the overall MVP. Let's just see, can we see some changes today in the overall MVP as well? Can a new player in top 5 can a new player climb the ladder till the overall MVP? Because Rosemary, he's been performing great, especially Noki from Four Tribes. He is just totally crazy, right? So I'm looking forward to those players to climb up in top 5. Let's see what's going to be happening, Edge, because the storyline for phase 2nd grand finals, it's not with the top 3 teams, it's with those top 5 overall MVPs as well.
take a look at the MVP. They're coming in, and well, maybe a little longer. We will have to wait for that one. But now, taking a look at the votes here coming in for your favorite team, both tribes. Still, I mean, their fans, as we all talked about it, are just unmatched. The RS, on the other hand, their fans also coming in supporting day in and day out for the squad. I do feel a little bad for them. We expected a lot more. This is kind of a disappointing performance coming in from DRS. The four tribes, they are in for this. They're still in the race of getting the number one spot. So there's a really good chance the four tribes. Let's just call them the four tribes. Community at this point are probably gonna be back on the stream, and probably are gonna be we're probably gonna be looking at 16, maybe 70,000 votes at the end of the day. I mean that's true है क्योंकि फोर थ्राइव्स के फैंस हमेशा यहाँ पर अपने टीम को अपने प्लेयर को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं. I'm back. You were missing me at the desk, I feel like, but yeah, here. Let's see what's gonna be, because we are feeling great, and it's gonna be Asia Bandwidth Chapter 3, and it is going to be day number 4, the final day. Which team it's gonna be? Team Flash, Team 4 Thrives, Team Alliances, from the second page to the first page. मेरे को कुछ नहीं पता. There are a lot of questions, and उसका आंसर आज हमको मिलेगा. इन सभी सवाल के जवाब आज के दिन के अंदर यहाँ पर सब खत्म, और यहाँ पर फेस सेकंड का विजेता आज के दिन के अंदर we're going to be crowning them up. So Edge, let's just not make any sort of spoilers, because always whenever we take a name of a team, we just give them a little bit of asteriskers. So let's just be quiet, right? Let's just not say anything. I mean, I don't know, man. It's going to be Alliances, 4 Thrives. बहुत सारी टीम है जो टॉप 5 के अंदर यहाँ पर बेहतरीन खेल रही हैं. But द स्टोरी लाइन, ये जो श्रृंखला है फेज सेकंड की, आज के दिन के अंदर आखिरी दिन के बाद खत्म हो जाएगी. फेज फर्स्ट हम लोगों ने देखा, हमने 10 दिन यहाँ पर फेज 1 के अंदर देखे, जहां पर फ्लैश ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से खेला. उसके बाद में उन्होंने अपनी जीत हासिल करी. उसके बाद में यहाँ पर अभी भी फ्लैश डोमिनेट कर रही है. क्या यहाँ पर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या वो कोई ऐसी टीम और ऊपर चढ़ के आएगी? लेट्स डू वन थिंग. देखिए, हम तो यहाँ पे प्रेडिक्शंस नहीं देंगे, क्योंकि वी डोंट वांट टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ कास्टर्स टू द टीम्स, राइट? सो क्यों ना हम लोग आप लोगों से पूछे, जो अभी यहाँ पर हमारी स्ट्रीम को देख रहे हो, आप लोगों को क्या लगता है कि आज के दिन के अंदर यहाँ पर कौन सी टीम विजेता बनेगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? हम कभी कभार बीच में चैट भी देख लेते हैं, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर सपोर्ट करते हो सभी टीम्स को, हमको एंड सभी प्लेयर्स को. सो अपनी प्रेडिक्शंस हम लोग को एक बारी चैट के अंदर जरूर बताना. एंड उसके बाद में अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर 141 esports के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर देना. एंड एज, let's just tell our audience as well कि यहाँ पर giveaways भी चल रहे हैं, right? So हमारे चैनल पे अभी giveaways भी चल रहे हैं. We'll tell you everything about in game and between the matches, and giveaways के अंदर भी participate करना है. And giveaway के अंदर अगर आप लोग wonder कर रहे हो what you guys are going to be winning, it's going to be an elite royal pass. I mean, Edge, you don't have an elite royal pass. What even you are waiting? Go and participate in the royal pass movie. I mean, definitely. I mean, when the time is right, I think it's all about the timing. I think I have to just wait. For the sun to be at a certain angle, for the stars to align. क्योंकि अभी तक जितने भी giveaways मैंने already participate कर दिया मैंने. It just every single time that screen comes up and I'm like, oh, is that my character ID? And then I'm like, man, this is not mine. क्या production थोड़ा इधर उधर करके कुछ थोड़ा help कर सकते हैं? Anyway, I'm kidding. That's not how it works. We are keeping it pretty clean. We are keeping it pretty clean. And yeah, I mean, once again, congratulations to all the winners. I'm pretty sure we've had 15, 20, almost up until now. We will probably have 6 more winners coming in. With 6 matches left in the grand final. So things are going to be interesting for the players, for the audience, and well, for the 6 lucky winners as well. So we'll tell you all about the giveaway when the time is right. We want you to have a little bit of luck too. But yes, Inferno now coming in, the last day of the grand finals here in phase 2. Tomorrow, phase 3. So I mean, we'll talk about that. It's a different story. It's a completely different story. Nothing related to what happened, what is happening, and what will happen in the next few games. So anyway, what will happen in the next few games? 6 maps, 2 Erangel, 2 Mirama, 2 Rondo. 2 Rondo. Those are the 2 maps, most important ones. I feel like. I think Mirama is going to be very important for Flash, and Rondo is going to be very important for the side of 4 Tribes. And Alliance,
I think Erangel is their map. So I think it's gonna go a three-way split between both the all three teams. So it is definitely gonna be an important one. But what do you think? Or who do you think? Do you think? Okay, let's not take names per se. Who do you think? Do you think these top three teams will have a champion, or do you think someone else other than these top three? Wait, Edge. I mean, I did take name of alliances from the start, so I do want them to actually be in top three. So I'll stick with alliances. I'll stick with my boys. And the question of your answers, maybe yes, that could be the case scenario. But let's just have a look on Rondo. पहला मुकाबला यहाँ पर हमारी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कौन लेके जाएगा इस मुकाबले को अपने हित के अंदर. देखिए न्यूयॉर्क फैक्ट्री टेस्ट ट्रैक का रीजन स्टेडियम जेरेना सिटी, ये यहाँ पर कुछ रीजंस रहेंगे जो यहाँ पर हॉट ड्रॉप के सिनेरियोज हम लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं, राइट. उसके बाद में तिनलोंग गार्डन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी आरआरक्यू की टीम जाएगी. बट मैं देखना चाहूंगा फोर्थ थ्राइव्स कहाँ पे उतर रही है. क्या वो लोग डीआरएस के साथ में ड्रॉप क्लैश करेंगे? एंड मेरे को लगता है बिल्कुल भी नहीं. ड्रॉप क्लैश के सिनेरियो शायद से फोर्थ थ्राइव्स किसी और टीम के साथ में ले सकती है, बट डीआरएस अब एक लिए टीम फ्लैश के अगेंस्ट, अलायंसेस के अगेंस्ट. तो देखिए वो जो टॉप थ्री टीम्स हैं वो एक साथ फाइट के अंदर आएंगी, बट ऑल्टर ईगोस टॉप फाइव के अंदर यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए. अच्छा यहाँ पर मैं बोलूंगा मैच इनके लिए जा रहा था, बट अभी भी यहाँ पर इनके लिए दिक्कतें आती हुई. 2K esports वर्सेस ऑल्टर ईगोस. आई गेस दिक्कतें ऑल्टर ईगोस के लिए नहीं है. इट्स गोना बी 2K esports. उनके पास ना ही गन है, शायद से गन से मिल चुकी है. लिली बॉय के पास में रहेगी यहाँ पर एक एसएमजी इन क्लोज रेंज, यहाँ पर अच्छा खासा डैमेज ले सकते हैं, बट अभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एस्ट्रल के रहेगी उस ऑल्टर ईगोस के खिलाड़ियों के हाथों में. सो हमको पता है ये जो एस्ट्रल के क्लोज रेंज के अंदर शॉटगन यहाँ पर कयामत बिखेर सकती है, बट 2K esports they got to be really careful. A very important matchup for all three areas. We were talking about them, and they kind of are on a decent position at the moment. They will get one more point. That'll be probably their first at the moment. They still have not, confirmed any of those finishes, so they're still holding on. Rosemary might just be able to get the first one, and there you have it. That's the first one dropped immediately. All three areas are looking good, jumping into the map, and they are already trying to secure as many points as possible. They're trying to level best to secure the points, but देखिए अभी यहाँ पर डीआरएस के साइक्लोन डाउन होते हुए 4 मैन स्टैंडिंग के अंदर यहाँ पर एक प्लेयर डाउन हो चुका है. साइक्लोन का यहाँ पर रिवाइवल आ पाएगा अपनी अलायंसेस. ये फाइट इन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है. अगर ये फाइट हारे तो मैं बोलूंगा शायद से इनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती है और खामियाजा आज के दिन के अंदर इनको भुगतना पड़ सकता है. अलायंसेस एक प्लेयर यहाँ पर डाउन है, शायद से अलायंसेस की पूरी टीम गई या फिर यहाँ पर एक प्लेयर जिंदा है. जी हाँ बिल्कुल, अलायंस का एक आखिरी प्लेयर जिंदा रहेगा जो रिकॉल कर सकता है. सो दैट्स सोलो मैन स्टैंडिंग. He got to survive till the end, or else the world is going to be ending for them and the journey is going to be getting really bad from here. SIT esports versus Glue esports. Spotted the player K2 यहाँ पर क्लोज रेंज के अंदर आते हुए. प्रीतम यहाँ पर डाउन हो चुके हैं. 3 मैन स्टैंडिंग के अंदर बहुत ज्यादा हो चुका है वो खिलाड़ी. Glue esports को नॉकआउट किया जाएगा, and there we have it. This is the typical SIT esports for you, and there we have it. It's going to be a great level of fight. SI8. They've just, just recently surpassed that 100-point marker, and things are looking decent for them as well. They started off with 2 eliminations coming into this one. Alliance as well with 2 here. 4 tries with 1. Flash with 1. They're looking to get more points as the recall comes in. Preetham now jumping in. They got to be a little careful, because as we know, in fact, 1 recall per person, 1 recall per player that is allowed. And stage 5, you probably are done with all the recalls there. You don't want to get taken down as well, regardless. Recall or no, you don't want to have all 4 players taken out. You need to make sure 1 stays alive. Otherwise, things might get scary. Yes, Glue. That fight is going to be inevitable between the players there, between A-side and Glue. As we now divert our attention towards Wine Esports, who are towards the Dungeon area, and they are really being cornered here by the players inside of Warguy and Xavier at the same time. जी हाँ बिल्कुल, वन ई स्पोर्ट्स यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए एंड इसी के साथ में अपने कदमों को यहाँ पे नहीं रोका जा रहा है. एंड अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 एलिमिनेशन यहाँ पे वन ई स्पोर्ट्स के खिताब में मिलती हुई. बट यहाँ पर ये जो टीम है द जेवियर्स की है कि वियतनामी जो टीम है इंडोनेशियन टीम्स के अगेंस्ट यहाँ पर फाइट के अंदर आ रही है, शायद से हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े. और देखते हैं इस मैच के अंदर यहाँ पर दूर दराज से कोई टीम
थर्ड पार्टी करनी आती है या फिर नहीं इस सेक्शन के अंदर, जहां पर ये जो फाइट है वो ईस्पोर्ट्स और ज़ेवियर्स के बीच में बहुत ही ज्यादा लंबी खिंचती हुई, ना ही कोई यहाँ पर प्लेयर फाइट लेना चाहता है। देखिए इनिशिएशन तो हुआ था, बट ज़ेवियर्स की टीम अब यहाँ से थोड़ी बहुत स्लो डाउन होती है। वो ईस्पोर्ट्स क्या अप्रोच रहेगी, क्या यहाँ पर पुश ऑन करेंगे, क्या यहाँ पर एग्रेशन दिखाया जाएगा या फिर नहीं? एक और एलिमिनेशन यहाँ पे, शायद टीम सीक्रेट को थोड़ा सेव करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। अभी एक प्लेयर डाउन हो गया, शायद दूसरा भी डाउन हो सकता है। 4th राइव्स लुकिंग रियली गुड वंस अगेन टुवर्ड्स दैट टेस्ट ट्रैक न्यूयॉर्क फैक्ट्री का एरिया। Already, Alliance on the other hand, they've gotten 3, Flash with 1, 2 for Boom, 4 for Alter Ego Ares. But unfortunately, 2 player down already Alter Ego Ares के साइड पे। Obviously, recall तो जरूर है, तो वो आ जाएगा, लेकिन they already used 1 recall if I'm not wrong. No, that was a different team. Yeah. I believe that was Wine? No, that was Team Secrets. Ah, makes sense. Team Secret. So they're up to 2 now, and Alter Ego with the 1 player standing. Unfortunately, they pretty much lost that duel wherever they're on the map right now, and they will go for the recall. So now they will start playing a bit more passive, is what I feel like. हाँ बिल्कुल, एंड द ज़ेवियर्स पे यहाँ पर होप डाउन होते हैं। देखिए होप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मैं बोलूंगा द ज़ेवियर्स की तरफ से। प्ले 25 भी यहाँ पर उनको पिक ऑफ किया जाएगा। द ज़ेवियर्स की टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करती हुई, और ट्रीगोस के स्नेप 27 यहाँ पर रहेंगे। सोलोमन स्टैंडिंग, यहाँ से क्या रिकॉल हो पाएगा या फिर नहीं रिकॉल पे, क्योंकि बूम स्पोर्ट्स की टीम भी आती हुई, और शायद से दिक्कतें यहाँ पर बहुत ज्यादा बन सकती है इनके लिए। देखिए यहाँ पर 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेने के बाद में क्या यहाँ पर ऑल्टर ईगोस के स्नेप 1v4 कर पाएंगे अपनी बूमी स्पोर्ट्स के अगेंस्ट, क्योंकि 1v4 करना इट्स इम्पॉसिबल येट पॉसिबल। देखिए क्या यहाँ पर सिनेरियोज रहते हैं, बट स्नेप 27, Solomon standing. What are your vibes up against this player, Edge? What do you think? Can he actually clutch it off against Boomy Sports? I think he can. I mean, he does have the potential, but I think it's not going to be possible right now. Because Boom are probably going to be searching every corner of the house, every nook and crack will probably be searched for the last player. Or maybe not. Maybe Keeper will actually let him live. Oh, Snape. Is he spotted? No, he's not. Oh, he's going to be so happy with this. This is unfortunate. I didn't really see that one coming. Yep. And the match is looking way too silent. लाइक ये राउंडो का मुकाबला है, एंड अभी भी यहाँ पर 18 टीम से मजीद प्लेयर्स यहाँ पर लॉबी के अंदर जिंदा। देखिए 69 प्लेयर्स अभी भी जिंदा है लॉबी के अंदर। फाइट्स यहाँ पर बनेंगी, बट आई साइड ई स्पोर्ट्स वो गए एंड ब्लू ई स्पोर्ट्स यहाँ पर थर्ड पार्टी के सिनेरियोस बहुत ही जल्द बन सकते हैं, एंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे शायद से T2 के ई स्पोर्ट्स वर्सेस टीम पैंडेमिक, नेपाली टीम और एक इंडोनेशियन टीम यहाँ पर फाइट के अंदर आती हुई, और इस फाइट के अंदर किस टीम को खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो देखने वाली चीज रहेगी। टीम पैंडेमिक स्कोर यहाँ पर क्लियर किया जाएगा, स्पेस यहाँ पे लिया जा रहा है T2 के ई स्पोर्ट्स, उन लोग यहाँ पे दिक्कत बन सकती है, और बेहतरीन से 14 हुआ रिटेलिएशन भी आएगा। टीम पैंडम का आखिरी प्लेयर यहाँ पे जिंदा रहेगा, एंड रिकॉल भी कर दिया जाएगा। दिस इज द नेशनल गेम प्ले ऑफ द मैप ऑफ रोंडो। अगर आपके 3 प्लेयर्स भी मर रहे हो, या फिर आपके 3 प्लेयर्स उनकी शायद से आई गेस रिवाइवल के स्टेज पे भी हो, रिकॉल बहुत ज्यादा इजीली होता है। पीछे से आएंगे SIT स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ग्लू ई स्पोर्ट्स के ऊपर करते हुए थर्ड पार्टी SIT स्पोर्ट्स, एक और पाकिस्तानी टीम जिसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी टॉप 18 के अंदर आके, बट टॉप 5 के अंदर आए थे एज, बट धीरे धीरे जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन ना करवाने की वजह से वो अभी के लिए यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए सेकंड पेज पे दे आर ऑन द 13th स्पॉट। सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग, बट RRQ फाइट के अंदर आती हुई, एंड इट्स गोइंग टू बी T2 के स्पोर्ट्स। यस एग्जैक्टली, ये भी फाइट यहाँ पे इनिशिएट होती हुई। RIQ, they've gotten themselves to a decent position here into day number 4 of the last of the grand finals, but they need more. They need a lot more at the moment. TDK feeling the heat. Those numbers, no, turning out to favor TDK. Unfortunately, as RIQ, they are dropping. It's just one. I thought there would have been a couple more cracks. So I will take that back. I think RQ might just be getting themselves a team wipe here, and TTK might be the first ones to get taken out of the picture. We're still here with 63 players and 18
teams. It feels like T2K Esports, and there you have it. Another unfortunate start, another unfortunate finish here for them in Rondo. I mean, with 2 eliminations, that is unfortunate. That is absolutely unacceptable. जी हाँ, एंड फोर्थ ट्राइब्स के खिलाड़ी 3 एलिमिनेशन थे जिन लोग के पास में जब हम लोगों ने इनको देखा था पिछली बार कैमरा के ऊपर, एंड स्टिल अब यहाँ पर 3 के बाद में 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेके गए थे। यहाँ पर एक ग्रेनेड जाता हुआ, बेहतरीन ग्रेनेड यहाँ पर फलक की तरफ से, एंड आई गेस यहाँ पर जाएगा एक और ग्रेनेड। द मैन विद गोल्डन आर्म, द मैन विद गोल्डन हैंड, आई गेस यहाँ पर आईक्यू भी डाउन होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर आईक्यू का भी नॉकआउट आता हुआ, रिवाइव करना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा। नहीं तो शायद से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बट 4 ट्राइब्स यहाँ पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी यहाँ पर नॉकआउट हुआ है, बट टीम 52 का वो आखिरी खिलाड़ी रहेगा एंड शायद से उनको डाउन किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, उसके बाद में टीम 52 को एलिमिनेट किया गया। टीम 4 ट्राइब्स की तरफ is getting spicier every second, every minute, every moment. Asia Battlers Chapter 3rd and Phase 2nd Grand Finals is burning out to be amazing. But Alliances 6 elimination देने के बाद में क्या strategy रहेगी, क्या थोड़ा बहुत pace को down करेंगे, slow करेंगे। देखिए जोन के अंदर भी जाना पड़ेगा। एज 650 मीटर जोन इनसे दूर बना है। डोमिनेशन यहाँ पर Alliances के प्लेयर्स लेते हुए, हुज़ैफा को भी यहाँ पर डोमिनेशन का खिताब मिला था। सो हर एक प्लेयर दे आर पैक्ड विद एक्शन और आज यहाँ पर आए हैं डोमिनेट करने के लिए और दिखाने के लिए, जताने के लिए कि क्यों दे आर द बेस्ट। I don't think I could have said that better. Well said. But yeah, we will still be waiting to see, who is going to be the one coming out on top towards the end. There are times where I feel like, teams that are like, that is somewhere in like 6th, 7th position, unexpected to make it to the top 1. Well, make it to the top 1. At the moment, the only unexpected appearance in the top 3 has to be Alliance. So we'll hold on to that thought and see how things turn out towards the end of the game, end of the day. 6 matches, 5 after this. All of them are going to be very important for all of these teams and all of these players, because you not just crown them champion if they're not in number 1, even if they're in number 1 spot, but it also gives them the momentum and the confidence that they need, not only for phase 3 but also for future tournaments, right? Now that is the most important thing, because you're not just playing around, playing around with the players of your region. You're playing with players all over the world, and at the moment, our Q are all over the place as the Xavier might just get taken down. Ragos will get stopped as well, but Hope is still surviving. And the Xavier, he's the last man standing. He needs to go for the revival, and I think One Young and player 25. Both of them will live thanks to Hope. He is the hope for the team indeed. जी हाँ, यहाँ से रिवाइव कर दिया जाएगा एंड द ज़ेवियर्स के होप, आई मीन अपने नाम को जिताते हैं। सीयूस, लुक एट हिम वेयर ही इज होल्डिंग राइट नाउ। ही इज होल्डिंग in that whatever it's called, but he's holding just there. He's just playing hide and seek with players. So देखते हैं अभी यहाँ पर क्या सिनेरियोस बनेंगे, बट अभी हम लोग देख सकते हैं RRQ, ये जो फाइट चल रही है इसके अंदर यहाँ पर इन मिडिल सेक्शन के अंदर हम लोग देख सकते हैं वो ई स्पोर्ट्स का भी एलिमिनेशन आता हुआ। बट ये जो फाइट है द ज़ेवियर्स के खिलाड़ियों के अगेंस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। आरआरक्यू वर्सेस द ज़ेवियर्स, कौन सी टीम यहाँ पर टॉप के अंदर आके देखने को मिलेगी? द ज़ेवियर्स के जेनफोर्स के हाथ में रहेगी, एक ऊजी शॉट से शॉट्स लिए जाएंगे, बेहतरीन ग्रेनेड वो माना जा, ट्रैजेक्टरी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट की, कोई भी प्लेयर उनके जो सामने नहीं। ऊजी अभी भी यहाँ पर जेनफोर्स चला रहे हैं, पता नहीं शायद नहीं है या फिर एस्ट्रल केस या फिर शॉटगन्स नहीं मिले, बट ऊजी इन द क्लोज रेंज आई से इट्स बेस्ड वेपन। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जेनफोर्स पढ़ेंगे ज़ेवियर्स को यहाँ पर देखते ही देखते एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टीम फ्लैश यहाँ पर टीम वॉरगे के अगेंस्ट फाइट के अंदर आती हुई एंड दे देखिए हमारे काश्तकार दोस्त का एक बहुत बड़ा मसला खेतों को पानी लगाना, क्योंकि बिजली के रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, डीजल का साथ में यहाँ पर एलिमिनेशन आता हुआ टीम वॉरगे का, एंड दिस इज द मोमेंट
13 टीम्स मजीद प्लेयर्स लॉबी के अंदर, और अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक केओटिक जोन, एक केओटिक रोंडो जिसकी स्टार्टिंग अभी से स्टार्ट होने जा रही है। These final circles, as we will be heading down to 6-7 in a bit. Now we're still towards stage 4 coming into play in the next 20 seconds. 4 eliminations for Flash. And 4-5 also looking very good to close out the distance. The distance is what's going to matter now here for the side of Flash. They need to make sure that they get a lead going on to the next matches. As Boom, they will lose one player thanks to the DRS, immediately confirming that finish as well. Killer YT and Cyclone is the only one standing right now. Boom, on the other hand, will have 2 players standing as well. So if both of these players get taken down, there's not going to be recalls anymore. DRS, there's a good chance, but I don't know if they can go for the recall anymore. Cyclone's very low, barely surviving. The smokes will be departed right now, and Boom, I think they want to go for the recall. Rhapsody and Yummy, is it? Yeah, both of these players are the only ones standing right now inside of Boom. They need to go for this. DRS needs to go for this. There's only, I believe, only one team go for the recall there, and looks like Alliance will be being farewell pretty early into the game. As Boom, they wanted to divert the, take a diversion there, but unfortunately they will be meeting their end. And guess what? Alter drops him, but it's actually a player on the side of 4 tribes that actually get the point. That's true. They are getting more and more points, and 4 tribes यहाँ पर नो एलिमिनेशन के बाद में अब लॉबी के अंदर शायद से बेहतरीन तरीके से एक कमबैक बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर टीम फ्लैश एक पैसिव मोड के अंदर आ चुकी है, फाइट्स यहाँ पे नहीं लेना चाह रहे हैं। उनके पास में सिर्फ 4 एलिमिनेशन है, बट 4 ट्राइब्स यहाँ पर उनके पास में रहेंगे 9 एलिमिनेशन। अलायंसेस के नॉक ऑफ के बाद में ये जो फाइट है इन 2 टीम्स के अंदर बन चुकी है, जो रहेगी टीम फ्लैश और टीम 4 ट्राइब्स, इन दोनों के बीच के अंदर यहाँ पे जो कंपटीशन है और भी ज्यादा बढ़ता हुआ। पॉइंट का गैप 10 से 11 पॉइंट्स का गैप यहाँ पर अभी भी दोनों टीम्स के अंदर बना हुआ है। यही एवरेज गैप हमको कल के दिन के अंदर भी मेंटेन देखने को मिला था। ये गैप उससे ज्यादा लंबा गया नहीं था, बट अभी के लिए टीम फ्लैश यहाँ पर ये जो फाइट लेंगे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। But let's just have a look कि Boom esports भी यहाँ से एलिमिनेट होते हुए, this marks an elimination for the whole team. But team 4 tribes no elimination लेने के बाद में क्या 10वां एलिमिनेशन ले पाएंगे? क्या यहाँ पर टीम फ्लैश को अपने ही हाथों से एलिमिनेट करने के बाद में अपना फेज सेकंड के अंदर ग्रैंड फाइनल्स जीत पाएंगे या फिर नहीं? देखिए फ्लैश यहाँ पर भले ही जीती है, बट इस फेज सेकंड के अंदर टीम 4 ट्राइब्स एंड अलायंसेस बेहतरीन टक्कर देते हुए टीम फ्लैश को डोमिनेशन लेके जाएंगे रोजमेरी। एंड रोजमेरी he is just like, I just don't want to win, man. I just want to be that MVP of this lobby and tournament. Yeah, that's what Rosemary is probably going to do as well. As DRS, they get taken out with 10 eliminations in 11th position. We're down here now to the top 10 teams. And as we were talking about Rosemary and Alter Ego, right? I mean, with the addition of Rosemary coming back into the squad, if I may. It has been phenomenal for phase 2 for the side of Alter Ego Errors. But at the moment, as we talk about them, they did lose a player in the meanwhile. So this is once again an unfortunate turn of events. But the timing is as sweet as ever. 4 tries. Zaifa, Falak, T24 and IQQ. 4 players now trying their best to secure that number 1 spot and then keep it there as well. They don't want to let it go to Flash or Alliance anymore. They don't want to let go of that lead once they get it. But the major task is to get the number 1 spot first from the hands of Flash. Yeah, बिल्कुल। एंड टीम फ्लैश यहाँ पर फाइट के अंदर आ चुके हैं ब्लू esports के अगेंस्ट। स्पॉट यहाँ पर प्लेयर को किया जाएगा, इसे डाउन भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, ब्लू esports होती हुई एलिमिनेट एंड टीम 4 ट्राइब्स 9 वे एलिमिनेशन के बाद में एक और एलिमिनेशन लेके जाएंगे। 10 एलिमिनेशन का खिताब उनके पास में यूज बनते हुए डोमिनेशन टीम 4 ट्राइब्स एंड टीम फ्लैश। इट इज जस्ट एब्सोल्यूट सिनेमा। जिस तरीके से यहाँ पे दोनों ही टीम्स अपना पूरा डाल रही है, अपनी पूरी जान झोंक दे रही है इस फेज को जीतने के लिए। इन लोगों को भी पता है कि ये मैच जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है आज के दिन के अंदर।
फोर्थ राइड्स यहाँ पे शायद से स्काउटिंग चल रही है, आसपास यहाँ पे प्लेयर्स को स्पॉट करने का पूरा ट्राई किया जा रहा है। एंड अभी प्ले टीम फोर्थ राइड्स इनके आगे यहाँ पर पूरा शायद से खाली है, पीछे से यहाँ पर टीम अल्ट्रा ईगोस आएगी, आगे से यहाँ पर आरआरक्यू की भी जिंदा रहेगी। सो सैंडविच सिचुएशंस हो सकते हैं अगर सेंटर लेने का ट्राई करें, दैट इज जस्ट वेरी टिपिकल। बट टीम फ्लैश नो, दे जस्ट गोना गेट एलिमिनेटेड। मे बी बोस यहाँ पे डाउन हो चुके, टॉप जी यहाँ पर बहुत ज्यादा लो हो चुके हैं। ज़्यूस एंड रेवन इज गोइंग टू द रूम स्टैंडिंग। टीम फ्लैश अगर यहाँ से एलिमिनेट हुए टीम सीक्रेट्स के अगेंस्ट, टीम सीक्रेट्स एक टीम जो सेकंड पेज पे स्ट्रगल कर रही है, तो फर्स्ट टीम को जो टीम यहाँ पर #1 है अभी के लिए, उसको शायद से एलिमिनेट कर पाएगी। आप नहीं देखते हुए चीज रहेगी। एएसआइड ई स्पोर्ट्स की भी टीम यहाँ से पीछे से आएगी, स्ट्राइकिंग करेंगे, शायद से थर्ड पार्टी करेंगे। यहाँ बिल्कुल एएसआइड ई स्पोर्ट्स, they gonna welcome them into the third party scenarios. They're like we are going to be the party spoilers, and बिल्कुल party spoil करी जाएगी। T24 OP दो और एलिमिनेशन अपने खाते में लेके जाएंगे। स्प्रेज यहाँ पे दागते हुए, गोलियां यहाँ पर चलती हुई, M416 यहाँ पर घूमती हुई, बॉन्डो के मुकाबले के ऊपर स्प्रेप को भी यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा, स्नेप को भी यहाँ पे लो किया जाएगा, डाउन भी शायद से कर दिया जाएगा, और जो एलिमिनेशन पॉइंट अपने नाम करके लेके जाएंगे 10 एलिमिनेशन के बाद में 3 और आप लोग अपने खाते में जोड़ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी उसको पूरी की पूरी स्क्वाड एलिमिनेट होती हुई आज हम लोग देख सकते हैं। जो AOG है, जो M416 है, और टीम फोर्थ है, इसके चारों प्लेयर गूंजते हुए और बताते हुए दे आर हियर टू विन द फर्स्ट मैच एंड मे बी विन द फेस सेकंड एज। We were talking about it, four tribes are one of the most dominant team here on the map of Rondo, and that's exactly what it's looking like at the moment. 15 elimination points going into this one. They're not done yet. They still have 4 players standing. Flash, on the other hand, they still have the lead with only 7 points now. And, 6 eliminations for them. Flash with 2 players standing as well. They are still in the match with Alliance. They're gone already along with Alter Ego and Boom. So, no real competition between any of these teams at the moment. It's just Flash and 4 tribes trying their best to, Flash holding on to their position and 4 tribes trying to dethrone them. Is ahead. Also is having a good time here with 9 eliminations. I mean, don't take anything less from them. They are stepping up. They are putting up some numbers. It's just that they are a little too far away from that number 1 spot at the moment. जी हाँ बिल्कुल, एंड टीम BTR होती हुई एलिमिनेट द डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रॉम एशिया बैटल वॉज चैप्टर 2 फेज 1 के अंदर अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाए। इस फेज 2 के अंदर इट्स लुकिंग वे टू इम्पॉसिबल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मोमेंट, क्योंकि अब ये जो 6 मैचेस हैं और आगे आने वाले 5 मैचेस जो बाकी रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 प्लेयर्स के लिए रहेंगे। वो टॉप 5 प्लेयर्स कंसिस्टेंसी के साथ में अपना यहाँ चिकन डिनर लें, विनर बने उन्हीं के लिए। और ये जो ग्रेनेड था फलक की तरफ से, कैन वी हैव सम द मैन विद द गोल्डन hand in the comment section, because he is just going insane right now. और भी ज्यादा ग्रेनेड्स दागे जा रहे हैं। शायद से टीम फ्लैश, ये जो फाइट है, this is going to be a legendary one, क्योंकि दोनों ही टीम्स यहाँ पर लड़ती हुई पहले स्पॉट के लिए। और क्या यहाँ पर टीम फ्लैश को एलिमिनेट किया जाएगा? ये एक और ग्रेनेड, ये बेहतरीन ग्रेनेड, और शायद से डाउन करेगा। जी हाँ बिल्कुल, डाउन करने से पहले ही टीम पैंडम यहाँ से उस आखिरी खिलाड़ी को डाउन करेंगे। एंड टीम फोर्थ ट्राइब्स, यही है मौका उन लोगों के लिए डोमिनेशन का खिताब कितनी बार इस लॉबी के अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि शायद से और भी ज्यादा एलिमिनेशन हर वक्त यहाँ पर फलक लेके जाएंगे। एंड टीम फोर्थ ट्राइब्स, दे आर बैक, एंड फलक स्पेशली ही इज बैक हियर। Four tribes argue. Team Secret, SIA, Pandem, the only one standing now in the server. Pandem with 4 eliminations and 3 players standing are definitely going to be someone to keep an eye out for, as well as 4 tribes. They've lost 1, 2. No 4-man squads here going into the one of the last few zones of the map of Rondo, which is kind of new. If you ask me, usually we do see teams coming up, saving those numbers, saving the 4th man there, but this time it's all about elimination. It's all about chaos. It's about getting that number 1 spot, and all of these teams and players, even though some of them know they actually can't get to the number 1 spot, they still try their best, which I think is absolutely lovely. But there are also some teams that just absolutely come in, swing in, and as I said, they just disrupt the game flow and also ruin the day for others. And I think that's something that this team needs to be careful of as well. जी हाँ बिल्कुल, इन 4 ट्राइब्स यहाँ से लेते हुए 16 एलिमिनेशन एंड IQQ होंगे डाउन, एंड इज सोलोमन स्टैंडिंग जो यहाँ पर अभी के लिए स्पेक्टेट कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों को।
एंड देखने वाली चीज रहेगी यहाँ पर क्या सिनेरियोस रहेंगे। जब भी के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं टीम फोर ट्राइब्स एंड नॉट आरक्यू यहाँ पे कुछ शॉट्स लेते हुए। नो एक्चुअली इट्स नॉट आरक्यू, इट्स टीम सीक्रेट्स, माय बैड। क्योंकि टीम सीक्रेट्स यहाँ पर एक सैंडविच सिचुएशन के अंदर आती हुई पीछे से ए साइड की स्पोर्ट्स के प्लेयर अप फ्रंट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाएगी टीम फोर ट्राइब्स जो कॉन्स्टेंटली फायर्स ले रहे हैं टीम सीक्रेट्स के ऊपर। टॉप 5 टीम्स 13 खिलाड़ी, ए साइड ई स्पोर्ट्स उनके पास में भी यहाँ पे रहेंगे 10 एलिमिनेशन। सो इन दो टीम्स, इन दो पाकिस्तानी टीम्स ने यहाँ पे सर दर्द कर रखा है अपनी दूसरी एनिमी टीम्स के लिए। बट देखना चाहता हूँ टीम पैंडम और आरक्यू टीम सीक्रेट्स इनके पास कितने ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स है। देखिए यहाँ पे ये जो टीम्स है ये स्ट्रगल कर रही है सेकंड पेज पर ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर। जो चिकन डिनर है वो इंपॉर्टेंट रहेगा सिर्फ और सिर्फ फोर ट्राइब्स के लिए क्योंकि उन लोगों को फर्स्ट स्पॉट मिल सकता है, वो डीथ्रोन कर सकते हैं यहाँ पर टीम फ्लैश को। देखने वाली चीज रहेगी वो चीज हम लोग को देखने को मिलेगी या फिर शॉट्स यहाँ पर आते हुए टीम सीक्रेट्स के ऊपर। टीम फोर ट्राइब्स, टीम ए साइड ई स्पोर्ट्स, टीम पैंडम यहाँ पर सबसे पहले शायद से एलिमिनेट करने का ट्राई करेगी। टीम सीक्रेट्स को धीरे धीरे अपने ऑब्स्टिकल्स को खत्म करेंगे, धीरे धीरे अपने एनिमीज को खत्म करेंगे। बट एज दिस इज गेटिंग मच इंटरेस्टिंग बिकॉज ये जो स्टोरी लाइन है इस पहले ही गेम की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती हुई टीम सीक्रेट्स में वही बोल रहा था। देखिए अभी टीम सीक्रेट्स यहाँ पे सबके रेडार के ऊपर और उन्हीं के ऊपर अभी ग्रेनेड्स जाएंगे, शॉट्स आएंगे। सो टीम सीक्रेट्स द थिंग इज नॉट लुकिंग गुड फॉर देम। Team Secret, the only Vietnamese team here in the top 5. We have 4 tribes there side, 2 Pakistani teams, 2 Indonesian teams, RQ and Pandam. So the only Vietnamese powerhouse right now is being targeted, as you said. But I believe now everyone are diverting attention towards the other possible players, other possible threats there too to take away the number 1 spot. And Pandam, got to be careful. The aerial advantage in the zone will be coming in play in the next few seconds. As Pandam does manage to get a knock here onto one of the players on the side of RQ. The 4 tribes on the verge of eliminating Team Secret. जी हाँ बिल्कुल, 4 ट्राइब्स 16 के बाद में 18 एलिमिनेशन पॉइंट्स और अपने हाथों में लेके जाएंगे T24 ओपी। और आज फलक यहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट पे आएंगे। एंड देखिए टीम पैंडम के प्लेयर को भी यहाँ पर स्पॉट किया जाएगा। उनको 63x का यूज यहाँ पर करते हुए हुज़ैफा बेहतरीन वॉकआउट में बोलूंगा यहाँ पर आता हुआ टीम पैंडम। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखिए, ओपनिंग देखिए कि उन लोगों को पता है कि एक शायद नॉकआउट आरआरक्यू के ऊपर भी आया था, बट शायद रिवाइवल भी हो जाएगा। बट आखिरी खिलाड़ी रिवाइव करता हुआ उस अपने दूसरे प्लेयर को रिवाइव यहाँ पर कर दिया गया है। पर ये जो फाइट है शायद से टीम फोर ट्राइब्स के अपने हाथों में 20 एलिमिनेशन यहाँ पर टीम फोर ट्राइब्स लेके जाएगी। टीम पैंडम को यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए जो ग्रेनेड जा रहा है ये भी बेहतरीन लगेगा, शायद से नॉकआउट करेगा। बिल्कुल टीम सीक्रेट्स को भी यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पेंगुइन का यहाँ पर नॉकआउट हुआ था, वो फलक यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। जेनफोर्स की तरफ से क्या यहाँ पर फोर ट्राइब्स के ऊपर एक स्लैमन आ सकता है, क्या पुशन आ सकता है? फलक को यहाँ पर धीरा फाइनल शॉट भी कर दिया क्या है। T24 OP and हुज़ैफा the deadly duo on the screens right now। क्या फोर ट्राइब्स इस मैच के अंदर इजाफा कर पाती है या फिर नहीं, और इस मैच को अपने हित में लेके जाएंगे या फिर नहीं, और उसके बाद में ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर अपना पहला किताब लेके जाएंगे या फिर नहीं। ये जो ग्रेनेड्स हैं ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लग रहे हैं। और आगे की तरफ यहाँ पे क्रिप्टो, पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस इंडोनेशिया, व्हिच टीम इज कमिंग ऑन टॉप। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे और सवाल इस गेम के अंदर पूरे हो जाएंगे। आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए हुज़ैफा थोड़ा क्राउच करेंगे, बट प्रीतम शायद से उनकी भी पोजीशनिंग रिवील हो चुकी है। स्पॉट यहाँ पे प्लेयर को किया जाएगा। ग्रेनेड्स यहाँ पर नहीं है, एग्जॉस्ट हो चुके ग्रेनेड्स के साथ में हुज़ैफा इस वर्क से बेहतरीन नॉकआउट और एक 1 वे 2 यहाँ पर हुज़ैफा करते हुए सोलो मैच स्टैंडिंग को भी खत्म करेंगे। वहां पर ए साइड ई स्पोर्ट्स को करते हुए एलिमिनेट आरआरक्यू वर्सेस फोर ट्राइब्स। इज इट इंडोनेशियन टीम और टीम पाकिस्तान व्हिच इज कमिंग ऑन टॉप। हुज़ैफा को यहाँ पर डाउन किया जाएगा। T24 ओपी 22 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेने के बाद में इस इंडोनेशियन टीम को अगर यहाँ पर नहीं बाहर निकाला तो मैं बोलूंगा मैच जो इनके हाथ में था, हित में था, वो नहीं आएगा। T24 ओपी को स्पॉट किया जाएगा। यहाँ पर इसके पीछे क्राउच करेंगे, प्रोन करेंगे, बट नहीं, शायद से मुश्किल बहुत ज्यादा। एंड देयर वी हैव इट, आरआरक्यू यहाँ पर डंका बचाएगी और थर्ड पार्टी करने के बाद में फोर ट्राइब्स को एलिमिनेट करती हुई। दिस वाज अ मैच टू विटनेस इट। And RIQ will be the ones coming out on top with the winner chicken dinner. I mean, sure, both tribes will probably be the one dominating the scoreboard when it actually comes, and they probably did surpass their, their counterparts fast here on the overall standing. But what a finish! What a finish by the side of both tribes with 20 plus eliminations. So we're looking at what, 24, 25 almost, to a 35 bomber. This has to be one of the best rounders we've witnessed in so far. Oh,
एक समय के लिए तो लग रहा था कि फोर्थ राइव्स जो टीम सीक्रेट्स ने एक थ्रेशोल्ड सेट किया था 29 एलिमिनेशन का, वो शायद से ब्रेक कर सकती थी, उस रिकॉर्ड को यहाँ पर तोड़ा जा सकता था, बट मैन इट वाज अ मैच, इट वाज अ मैच टू विटनेस। एंड अभी तक यहाँ पर मैं बोलूंगा, अगर जो भी जनता हमको अभी देख रही है उन्होंने अभी तक यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ में स्ट्रीम को शेयर नहीं किया, सो गो राइट नाउ एंड शेयर द स्ट्रीम, बिकॉज ये जो मैचेस हैं यहाँ पे और भी ज्यादा इंटेंस होते जाएंगे। टेल योर पबजी फेलो फ्रेंड्स दैट यहाँ पर हो रहा है ईशा बैटल ग्राउंड चैप्टर 3, इट्स नॉट जस्ट गेम, इट्स अ फेस्टिव of these insane matches. But Edge, what a great matchup it was. And अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है 141 esports के चैनल को, जाइए अभी जाके सब्सक्राइब करिए, सभी से सब्सक्राइब करिए, and there we have it. Go and subscribe right now. But Edge, we are done with the first match and we'll be having a look at the match highlights, because ये जो मैच था यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भयंकर, यहाँ पर टीम 4 ट्राइब्स ने इस पर्टिकुलर फाइट के अंदर टीम 52 को एलिमिनेट किया था। ग्रेनेड्स आप एक बार ही देखें फलक की साइड से, बट टीम 52 का वो आखिरी खिलाड़ी रहेगा एंड शायद से उनको डाउन I was expecting a bit more, a little more of elimination numbers coming in, but I'm pretty sure we can. I'm pretty sure we did get to see a decent number of numbers there coming up. IQ, losing a few players there. The Xavier getting taken down here as well. For the side of Falak, they need to make sure that they get. I still am a little. Only one team, skeptical about DRS's position. I do feel bad that their overall performance is not up to the mark, or at least not up to the expectations that the players and the audiences had, especially those fans that wanted for them to make them one of the fan favorite teams after fourth drive. This was unfortunate turn of events for the side of DRS, but on the contrary, fourth drives, they could not have asked for a better game than this. I mean, a chicken dinner would have been the cherry on top, but I still think the second best finish, they'll take the icing on the cake for now. That's true, man. I mean, one hell of a match, and here it was a great 22 from the side of Zypha. It was needed an ASIP esports. They just got eliminated and decimated. Then from the back end, we can see Team RQ started doing the third party, but Team 4 times harder, but insane match indeed. About them, and they kind of talking about the winner chicken dinner team. It is RIQ. Yes, decent number of eliminations. I genuinely didn't think they would have these many. I thought they were like looking at 4 or 5 eliminations. But 3 eliminations coming up from Gen 4's Farin on 6-2 for Pragos and 4 for Lapper. These are the numbers. And RQ, they're looking decent at the moment, but they were now going to be in contention for the number 1 spot, unfortunately. That's true. And I mean, टीम्स जो यहाँ पर सेकंड पेज पे हैं वही यहाँ पर सबसे बड़ी एनिमी होने जा रही है टॉप 5 टीम्स एंड टॉप 3 टीम्स के लिए, क्योंकि वही टीम्स यहाँ पर एक्चुअली गेम बिगाड़ेंगे इन टीम्स का जो टॉप 5 स्पॉट के अंदर है। RRQ भले यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर, बट यहाँ पर टीम फोर्थ ड्राइव्स के दिवाले से चिकन डिनर अपने हाथों में लेके गए हैं। सो अगर फोर्थ ड्राइव्स यहाँ पर चिकन डिनर लेती तो और भी अच्छे खासे मैं बोलता एलिमिनेशन पॉइंट्स एंड उसके बाद में पोजिशनिंग पॉइंट्स मिलती, बट इंसेन फाइट यहाँ पर दिखाई एंड टीम आ रहा है कि मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्ट्रैटेजी उनकी तरफ से आती हुई उन्होंने यहाँ पर एनालाइज अच्छे से किया एंड इंटेल पूरी गैदर करी फोर्थ ड्राइव्स के ऊपर, और उसके साथ में एकदम सही समय पे उन्होंने थर्ड पार्टी करी। That is true. They picked out the right fights at the right time, at the right places too. The rotations was so good coming in from everyone here, and the calls were on point too coming in. As you take a look at the MVP of the match, it is Falak Penguin, aka, of course, from the side of four tribes, and I'm pretty sure he's referring to the one penguin that walks away towards the mountains there, and well, but why? We don't know. Anyway, 8 eliminations, 1002 damage, 1 assist, 26 minutes and 47 seconds survival time, 4 knocks, and 262 heal. As we have the damage distribution, he was also aiming towards the body at the moment, and well, there you go. 73.33%, 20% headshot, and then 6.67 lower body percentage.
जी हाँ बिल्कुल एंड MVP फलक बनते हुए एंड as we were talking about that he is getting 8 elimination and 4 knockouts. It's one of the most insane one. बट इसके बाद में एज आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू सी कि यहाँ पर ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर क्या होगा. एंड एक बारी मैं जरा बता दूं हमारी ऑडियंस को कि अगर आप लोगों को नहीं पता है कि गिवअवेज भी चल रहे हैं चैट के अंदर एंड इस्टिमेशन मार्क गिवअवे जरूर लिखना एक बारी चैट सेक्शन के अंदर आप लोगों को लिंक मिलेगा राइट. एंड गिवअवे के अंदर जल्दी से जाकर पार्टिसिपेट करिए सो दैट आप लोगों को यहाँ पर एक elite रॉयल पास मिल सके. एक बार हम नजर डालते टॉप 4 प्लेयर्स के बारे में फिर आप लोगों को गिव अवे के बारे में भी बताएंगे क्योंकि आज के अंदर 6 मैचेस हैं. सो 6 गिव अवेज और 6 elite रॉयल पास के विनर्स भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे. लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन द टॉप 4 प्लेयर्स. पेंगुइन यानी एके फलक यहाँ पर बनते हुए MVP. उसके बाद में फायर एंड T24 ओपीएन हुजैफा लेके जाएंगे टॉप 4 प्लेयर का खिताब. एंड यहाँ पर 3 प्लेयर्स हम लोगों को पाकिस्तान या फिर फोर्थ ड्राइव से देखने को मिलेंगे. एंड इसके बाद में आप लोगों को बता रहा था कि गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करने के जो यहाँ पर रूल्स हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल है. आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वहां गिव अवे लिखना है, लिंक मिलेगा, टैप करना है उस लिंक के ऊपर, फिर उसके बाद में आप लोग रीडायरेक्ट करोगे अपने ब्राउजर के ऊपर, फिर उसके बाद में एक इमेज दिखेगी, उसी इमेज के ऊपर आप लोगों का क्वेश्चन होगा, फिर उस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना है. उस इमेज के ऊपर टैप करोगे आप लोग दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाओगे, फिर उसके बाद में आप लोगों को अपना रियल नेम, पबजी मोबाइल कैरेक्टर आईडी एंड उसके बाद में अपना आंसर लिख के वो कमेंट पोस्ट कर देना है. एंड दैट्स ऑल. आप लोगों ने इजीली पार्टिसिपेट किया एक elite रॉयल पास गिव अवे के अंदर. सो जल्दी से जाइए अभी भी यहाँ पर समय है आप लोग के पास में. हम लोग जिससे पहले गिव अवे का विजेता बताए सो जल्दी से आके अभी पार्टिसिपेट करिए while typing exclamation mark giveaway into the comment section. But let's just have a look the teams to watch out into the upcoming one because we can see 2 Indonesian teams and 2 Pakistani teams. That is true. I mean, Four Tribes has always been one of the teams that you need to keep an eye out for, especially now in a situation where they're on the verge of getting the number 1 spot and stealing that place from Flash. We'll see RQS side, all three go as well. Make sure to take a look at them later on as we had the match summary on our screens. 130 in total eliminations, 8 eliminations. 2 airdrops to it. No vehicle eliminations, 12,954. Anyway, 407 meters is the longest elimination. So Dar 2K is the one putting it out, and 400 plus meters. This was an amazing one. I don't really recall where it was. But 407 meters is a long distance. I'm talking about the match rankings. Both tribes are leading with 28 IQ, not that far away in terms of point. Thanks to that chicken dinner that on 23, ASI 8 on 16, DRS on 10, Team Secret, Flash, and Alter Ego Ares on 8 as well. Pandem on 7, 6 for 2K and Alliance, 5 for BTR, Boom, Wine, D Xavier, Blue on 3, T2K on 2, and 15 Sports and Warga, unfortunately, had to go out with no points. Exactly, they got eliminated way too early into the match, but overall standings यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि अलायंसेस यहाँ पर उनके पास में सिर्फ 6 पॉइंट्स, जहां पर टीम फ्लैश एंड टीम फोर ट्राइब्स उनके पास में रहेंगे 8 और 28 पॉइंट्स. सो पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर अलायंसेस के लिए बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ. क्या यहाँ पर एक रनर अप बनेगी अलायंसेस, क्या यहाँ पर विजेता बनेगी, इट्स गोना बी अ क्वेश्चन. बट यहाँ पर अलायंसेस बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लोगों ने खेलने का ट्राई किया, बट मैच रैंकिंग्स के अंदर अभी के लिए यहाँ पर टीम फोर ट्राइब्स टोटली डोमिनेट करती हुई. And what changes does it make to the overall? We will wait and watch. I mean, we know the changes at the top, but the changes between is going to be something to look out for. As Four Tribes, even though they had a monstrous of a performance, they're not that far ahead of Flash. Flash is only 4 points behind. Now, this could be scary for Four Tribes. It's still not over yet, but we still do have one more rounder to build up that lead. Alliance on 156, now pushed down to third. Alter Ego Ares on 135, 134 for Boom, RQ on 132, 123 for BTR, Pandem on 120, 118 points for ASI 8. Now, they started off really slow as well, but they are picking up the pace and they're keeping it. ASI 8. For the sides of up until RIQ, I think BTR, I think it's a little too much to ask for, but they can still be considered one of the teams to take that number 1 spot. But I think any team till RIQ really still has a good chance of taking it to the number 1 spot. But we'll see as we take a look at 10 to 18 position. 2K on 116, 112 for Team Secret. D Xavier on 111, 107 for 52 Esports. DRS on 99, 94 for the side of Wog at TDK on 90, 88 for Glooblug, and Wine at 81 points right now at the very bottom of the scoreboard, which
is unexpected coming in from Boyne. Didn't really think that was going to be the case, but it is what it is. And phase two is unfortunately not going well for them. Yeah, I mean, phase two right now, it's not looking good for these teams, but all Trigo Rosemary, he's just way too insane right now. ये यहाँ पर ओवरऑल एमवीपी ही बनने आए हैं, चाहे वो यहाँ पर प्लेऑफ्स क्वालिफायर्स हो, चाहे वो ग्रैंड फाइनल्स हो। ऑल ट्राइगोस रोजबेरी हमने बहुत समय से देखा है कि ओवरऑल एमवीपी बनते हैं, उन पहला खिताब लेके जाते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे बोलते ही आ रहे हैं कि यहाँ पे ये जो फाइट है टॉप 5 टीम्स के अंदर है ही तो है, बट उसके बाद में यहाँ पर ओवरऑल एमवीपीज के अंदर भी है। फ्लैश विन को यहाँ पर डिथ्रोन किया गया है एंड रोजमेरी यहाँ पर पहला स्पॉट लेके जाएंगे एंड ही इज best IGL in the world right now for a reason. PMGC, he has been titled that. So Rosemary, he's just winning right now in the overall MVP, but his team is struggling somewhere. His team, I think it's the fact that they're trying out different strategies and it's not exactly still working out for them. Rosemary, I mean, I believe it's very focused on a much more player centric rather than a strategical play that all three goals are known for. So I think it's okay. I think they're trying something new and probably might work. In terms of performance, I believe everyone is performing really good, and Rosemary, he's just performing a tad bit better when compared to other players. But individually, I think everyone here on the side of all three areas can. I mean, they do have the potential to be the number one here in the overall MVP, and we might be looking at more players. It's not over for the side of all three areas just yet. They still have a really good chance to make it to the top, a fighting chance indeed. But with 5 games left, they will need to make sure that they get decent points in the next few matches. Yes, exactly. I mean, they'll try their level best to get those decent points, but try to get those chicken dinners as well. But let's just have a look on the fan favorite team right now. And अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर टीम को वोट नहीं किया है तो कर सकते हैं। एंड मैं बोलूँ यहाँ पर ग्रैंड फाइनल्स के अंदर ये जो वोट से ज्यादा कारगर नहीं रहेंगे, बट फोर्थ ट्राइब्स एंड डीआरएस के फैंस यहाँ पर उन लोगों को पता है वो क्या कर रहे हैं, उन लोगों को वोट भी करना आता है। बट इसके बाद में शायद से एक बार हम लोग नजर डालेंगे गिव अवे के विनर के ऊपर, देखते हैं कौन सा ऐसा प्लेयर है जो गिव अवे का खिताब लेके गया और गिव अवे जीते हैं और एक एलीट रॉयल पास अपने लिए जीत के गए हैं। बट अभी तक यहाँ पर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, 141 esports के चैनल को। सो आप लोग वेट क्या कर रहे हो? जाइए जल्दी से आके सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड जाके अभी शेयर भी करिए अपने फेलो पबजी प्लेयर्स के साथ में। देखिए मैं देख रहा हूँ ऑडियंस जिस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट कर रही है टीम फोर्थ ट्राइब्स को और अपनी टीम को, वो बहुत ही ज्यादा देखने में मजा आ रहा है। एंड जस्ट कीप ऑन सपोर्टिंग योर फेवरेट टीम एंड कीप ऑन सपोर्टिंग 141 esports चैनल एज वेल, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम कर रही है एंड ह्यूज शाउट आउट फॉर देम टू गिविंग द अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज वेल टू बी हियर एज। बट राइट नाउ दिस वन रिक्वेस्ट टू यू ऑल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 50k का आज का हमारा 50k आज का गोल नहीं रहेगा, बट हमारा 50k गोल है। सो जाइए जल्दी से आके अपडेट कराइए। It's always fun to have a goal and then try to reach it. So hopefully you guys help us in doing that while we help you getting a better understanding of the game. At the moment, also once again, kudos to the fans for voting for your favorite teams. No real advantage these teams will have here in the grand finals. In the playoffs, I mean, the top 2 teams in terms of votes usually make it to the grand final without a fight. But here, it's nothing like that. Everything, the winner, the champion, the number 1, number 2, number 3, and any number will only be focusing on the point system and not on the votes at the moment. And congratulations to the winner of the giveaway. Well, the player with that PUBG Mobile character ID is going to be the one coming out on top here on the match number 1. Congratulations on winning yourself a free elite Raw Pass. And if anyone's wondering how can you stand a chance to get one for yourself, well, all you have to do is type in exclamation giveaway in the live chat to get the giveaway link, and then it's pretty simple. Follow the instructions on your screen and things. I mean, if you are a bit lucky, then everything will fall in place for you.
जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप लोगों को यहाँ पर थोड़े बहुत डाउट्स है कि गिव अवे के अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, सो एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे एक बारी चैट के अंदर लिखना, आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, नाइटबॉट आप लोगों को चैट के अंदर लिंक भेज देगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग उस लिंक के ऊपर टैप करोगे, सो आपका गूगल या फिर जो भी ब्राउजर है वो खुलेगा। उसके बाद में वहां पर आप लोगों के सामने एक इमेज होगी और उसी इमेज के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। ऑडियंस एक बारी ध्यान देना, उसी इमेज के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जब मैं पीछे पीछे से पार्टिसिपेट करने का ट्राई कर रहा था, सो आई वाज वंडरिंग कि क्वेश्चन कहाँ पे है। सो उसी इमेज के ऊपर क्वेश्चन है। उसके बाद में आप उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप उस इमेज के ऊपर टैप करना, वहां पे आप लोगों को टैप करने के बाद में एक नई स्क्रीन खुलेगी। देन यू हैव टू राइट योर रियल नेम, पबजी मोबाइल के कैरेक्टर आईडी और अपने आंसर्स के साथ में अपना जो कमेंट है उसको पोस्ट कर देना, एंड दैट्स ऑल। इट्स रियली इजी टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। So yeah, so make sure to not just done with one match. We're only left with 5 in the grand finals of phase 2. And as Inferno said, we still have phase 3 coming in next. So if anyone's unsubscribed, well, you need to make sure that you are subscribed and hit the bell icon so you guys can come online at the right time, at the right place, of course, so you don't miss out on any of the action from these teams. And the players, of course, your fan favorites, your favorites, someone you just like watching, all of them will be playing in. At the moment, it just feels like 4 tribes are everywhere in the chat, in the in the game, in the overall standings, in the fan favorite awards as well. जी हाँ, बिल्कुल। एंड अभी तक चलिए एक बार हम चैट से जरूर पूछना चाहेंगे, बताइए किन किन लोगों ने अभी तक गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट किया एंड किन्होंने नहीं किया। अगर नहीं किया तो देखिए आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर अभी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जल्दी से जाके गिव अवे के अंदर अभी पार्टिसिपेट करिए एंड आप लोग के पास में एक चांस रहेगा यहाँ पर एक लीड रॉयल पास गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करके। अगर आप लोग इतना लगी रहे तो जरूर वो रॉयल पास आप लोगों के कान से पहुंच जाएगा। बट एक बार मैप रोटेशन के ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मैप जो रहेगा वो रैंगल का रहेगा। देखिए मैच शुरू होने में भी अभी कुछ चंद मिनट्स और है, शायद से 2-3 मिनट्स के अंदर यहाँ पर जो हमारा मैच है रैंगल का वो स्टार्ट हो जाएगा। सो उससे पहले आप लोग जल्दी से जाइए, जल्दी से आके गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए, दोबारा से यहाँ पर अपना यूट्यूब को लिए स्ट्रीम के ऊपर ज्वाइन करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सो द नेक्स्ट मैच इज गोना बी रैंगल, इट्स गोना बी इनसेन एंड वी नो द टेक्स्टबुक प्लेस is going to be coming on the map of Wrangle. True indeed. And we were expecting Alliance to come out on top here on the map of Wrangle, but let's see if that's going to be the case, as we will be heading down. Textbook players are going to be expected for sure, but it's also going to be interesting to see if any of the teams will be looking to go really aggressive towards early stage of the game, because today is the last day of the grand finals in phase 2. From tomorrow it's a new day, a new phase, and new scoreboard too. So anyone at the bottom of the scoreboard at the moment might just be a situation where they can go and disrupt the flow of the game. They can go and just distract their opponents too, and absolutely make them pay by taking them out pretty early. That is the worst thing that they can do at the moment. We will be jumping in, ladies and gentlemen. This is PUBG Mobile Asia Battle Wars Chapter 3 Phase 2 Grand Finals Day number 4. Last year the Grand Finals, that's what you're wondering. As we have the flight path on our screen, we start off at Primorsk, ending towards Lipovka. A lot of these teams, a lot of these players, let's say they will drop towards Primorsk area here. War Guy Alliance drops in towards Ferry Pier. 4 tribes is here as well. So 3 teams, especially 4 tribes, are an alliance. Both of these teams, a really important game for them, and both these teams are going to be dropping in at the same location. So let's see how things turn out here. We'll see if Shelter, Prison, Milta Power, Yasnaya region will have any commotion. जी हाँ, बिल्कुल। एंड अभी ये जो साइड पाथ है हम लोगों ने देखा कि प्रिमॉस्क के रीजन से स्टार्ट होके लिपो के पास एंड होगा, which is looking really good. कुछ टीम्स यहाँ पर मिलिट्री बेस नोवरपनो, मिल्टा पावर, मेंशन, लिपो, प्रिजन, स्कूल एंड इन सारे रीजन के पास आसपास जा सकते हैं। बट देखिए
टीम्स लाइक एसाइट esports एंड T2K esports, इन लोगों को बहुत ज्यादा ग्लाइड करना पड़ेगा और हो सकता है मैं बोलूंगा कि अपना ड्रॉप लोकेशन भी चेंज करना पड़े, क्योंकि 70 में जाते हैं एंड वहां पर जाके हम लोग को ये जो 4v4 बैटल है तब देखने को मिलती है, राइट। एंड ये देखिए अभी यहाँ पर शायद से जोन बी बन चुका है। फाइट्स यहाँ पर बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगे। T2K esports के ऊपर हम लोग एक बार नजर डालेंगे, क्योंकि ये टीम जो है मोस्टली यहाँ पर फाइट्स लेती है एसाइट esports के अगेंस्ट। एंड मैं देखना चाहूंगा कि नोवर अपना कौन सी टीम जा रही है। नोवर अपना अभी यहाँ पर टीम सीखने जाएगी एंड मिल्टा के ऊपर भी फाइट देखने को मिलती है। बेहतरीन यहाँ पर नॉकआउट आएगा एंड शायद से फाइट मिल्टा के अंदर है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर मिल्टा के अंदर फाइट हो चुकी है। RQ वर्सेस टीम TRS गेमिंग। DRS के यहाँ पे 2 प्लेयर्स डाउन हुए तो यहाँ पे मुश्किलात के सिचुएशंस बनते हुए क्या यहाँ पर DRS की टीम दोबारा से उभर पाएगी या फिर नहीं, क्या यहाँ से एलिमिनेट हो पाएगी या फिर नहीं, बहुत सारे सवाल और इन सवालों के आंसर्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर RQ दे पाएगी। जिनफोस यहाँ पर डाउन है, रिवाइव शायद से जिनफोस का हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, बेहतरीन शॉट यहाँ पर आता हुआ फायरवर्स, बेहतरीन SKS से शॉट लिया जाएगा उस DMR विद होलोग्राफिक साइट के साथ में। एक बेहतरीन नॉकआउट एंड लैपर वेट कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करी जाएगी क्योंकि एडवांटेज उनके पास में पुश करेंगे। बेहतरीन नॉकआउट यहाँ पर निकाला जाएगा एंड KillerYT सोलो मैन स्टैंडिंग यहाँ पर रहेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या कर पाते हैं या फिर नहीं, एंड क्लैश ऑफ कर पाएंगे या फिर नहीं। शायद से KillerYT इनकी भी पोजीशनिंग रिवील हो चुकी है और जनता जो अभी यहाँ पर 141 esports के चैनल पे इस ब्रॉडकास्ट और लाइव स्ट्रीम को देख रही है, आप लोगों को क्या मजा आ रहा है हमारे एशिया बैटल चैप्टर 3 के अंदर, बताइएगा एक बारी कमेंट सेक्शन के अंदर। और इतने ज्यादा बेहतरीन मैचेस आप लोग कहीं और नहीं, सिर्फ यही देखने को मिलेंगे क्योंकि ये जो मैचेस हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे एंड स्पेशली फेज 3 बहुत ही ज्यादा इंसेन है, यहाँ पर फेज सेकंड से भी ज्यादा। एंड इसी के साथ में यहाँ पर हमारी पहली टीम एलिमिनेट होती हुई DRS की टीम यहाँ से हुई एलिमिनेट। टीम सीक्रेट्स वर्सेस टीम T2K esports, ये भी फाइट इनिशिएट हो जाएगी। बट एक बार हम लोग वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैं बात कर रहा था एशिया बैटल वर्स चैप्टर 2 किस किसने देखा था लाइव स्ट्रीम पर, आप लोगों को जरा बताइएगा। क्योंकि एशिया बैटल वर्स चैप्टर 3 इट्स बेटर, मेरे को लगता है यहाँ पर ये जो स्टोरी लाइन बिल्डअप हो रही है धीरे धीरे फेज 1 फेज 2 ये और भी ज्यादा बेहतरीन एशिया बैटल वर्स चैप्टर सेकंड से कंपैरिजन में। भले यहाँ पर बीटिया जीती थी बट उसके बाद में हम लोगों ने देखा टीम फ्लैश भी यहाँ पे लेके गई थी। टीम फ्लैश यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस भी दिखा रही है, बट टीम 4 ट्राइब्स अभी के लिए फैन फेवरेट टीम, वो टीम यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। देखिए 177 पॉइंट्स रहेंगे और उसके बाद में उन लोगों के यहाँ पर शायद से फ्लैश से ज्यादा पॉइंट्स है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के बाद में 177 पॉइंट्स लेंगे। बट यहाँ पर एसाइट esports का वो खिलाड़ी टीम फ्लैश वर्सेस एसाइट esports, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट है। शायद से इस खिलाड़ी को स्पॉट भी कर लिया जाएगा। बेहतरीन नॉकआउट यहाँ पर आता हुआ टीम फ्लैश यहाँ पर अपने पहले 2 एलिमिनेशंस अपने किताब में लेके जाएंगे। उसके बाद में टीम 4 ट्राइब्स, अभी तक उन लोगों के पास में कोई एलिमिनेशन नहीं आएगा। ये जो पॉइंट्स का गैप है सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स का गैप यहाँ पर बन के आएगा। ओह माय गॉड, दिस इज इनसेन। चलिए मैं ऑडियंस से एक सीरियस क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? आप बताइएगा आज यहाँ पर टिल द फाइनल 4 ट्राइब्स कितने ज्यादा पॉइंट्स आपको लगता है एक्यूमुलेट कर पाएगी आज के दिन के अंदर, राइट? मेरे को बताइएगा जरूर, राइट? एंड एक बार हम लोग सारा टीम फ्लैश की फाइट्स के ऊपर भी ध्यान डाल देते हैं, क्योंकि टीम फ्लैश यहाँ पर जो फाइट है इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। स्पॉट यहाँ पर भी किया जाएगा, दे फीलिंग गुड। टीम फ्लैश यहाँ पर इस 4v4 बैटल के अंदर एक अच्छा एडवांटेज लेके जाएंगे एंड आई गेस मुश्किल बनेगी। सोलमन स्टैंडिंग वहां पर वो बचा रहेगा। आखिरी प्लेयर जो रहेंगे प्रीतम, क्या यहाँ पर प्रीतम क्लच ऑफ कर पाएंगे या फिर उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चली जाएगी? कुछ जंप शॉट से देने का यहाँ पर ट्राई किया जा रहा है, but I don't think so यहाँ पर connections आएंगे। Zeus, I guess he's going to get down. Zeus can he actually pull it off? Shots आएंगे पीछे से बेहतरीन cover fires के साथ में यहाँ पर टीम फ्लैश को भी, टीम एसाइट esports को करते हुए एलिमिनेट। टीम फ्लैश ने किया एलिमिनेट टीम एसाइट esports को एंड देखिए that's bro that QR on that screen right now। ये जो आप QR देख रहे हो, आप इस QR को भी स्कैन कर सकते हैं। अपने फोन के कैमरा को अभी खोलिए और जाके जल्दी से QR को स्कैन करिए। द मैटर ऑफ फैक्ट मैं भी जल्दी से यहाँ पर इस QR को स्कैन कर लेता हूँ अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो। बट या मेक श्योर कि आप लोग इस QR को स्कैन करो और गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करो, क्योंकि गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, राइट? जैसे आप लोग इस QR को स्कैन करोगे, आप लोगों के सामने एक वेबसाइट ओपन होगी एंड वेबसाइट अगर खुलने में थोड़ा टाइम ले रही है, सो
मेक श्योर कि थोड़ा बहुत पेशेंटली आप लोग वेट करो वहाँ पे 3-4 सेकंड, उसके बाद में मे भी हो सकता है रिलोड करो, अगर ना दोबारा खुल रही हो, बट यहाँ पे खुल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि कभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है, सब लोग एक साथ गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करने का ट्राई करते हैं, तो थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है। बट उसके बाद में आप लोग को इमेज देखेगी, इमेज के ऊपर एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है अपने रियल नेम और फुटबॉल कैरेक्टर आईडी के साथ में, वहां पर उस कमेंट को पोस्ट कर देना, सो दैट आप लोग यहाँ पे गिव अवे के अंदर इजीली पार्टिसिपेट कर सको। बट यहाँ पर एक बार आते हैं हमारी मैचेस और फाइट्स के ऊपर। बी कंट्रोल्ड बाय वाइटैलिटी, अमेजिंग शॉट, फेडरलेस द डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रॉम एशिया बैटल विद चैप्टर सेकंड, दिक्कतें शायद से बूम 20% के ऊपर लेके आ सकते हैं, और टीम बीटीआर क्या यहाँ पे सिनेरियोज आएंगे, क्योंकि बीटीआर का एक खिलाड़ी यहाँ पर होता हुआ डाउन। अभी के लिए यहाँ पर रैप शॉरी बूम ई स्पोर्ट्स की तरफ से नॉकड आउट है। रिवाइव रैप शॉरी का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड आई डोंट थिंक सो यहाँ पर आसपास दूर दराज से कोई टीम इनके ऊपर शॉट्स लेगी, बट द जेवियर्स की टीम रैंगल के मैप पे यहाँ पर राउंड से ज्यादा जल्दी फाइट्स हो रही है। राउंड के मुकाबले के ऊपर हम लोगों ने देखा था कि पहले स्टेज के अंदर कोई भी फाइट नहीं हुई थी, बट उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि रैंगल के मुकाबले के ऊपर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर जो 4v4 बैटल्स है, जो 4v4 फाइट्स है, शुरुआत में ही स्टार्ट होती हुई, व्हिच इज रियली गुड, राइट। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइट्स बहुत ज्यादा इनिशिएट हो रही है, एंड अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जेवियर्स के खिलाड़ी रैंडम के अगेंस्ट फाइट लेते हुए, एंड शायद से उस प्लेयर को भी स्पॉट किया जाएगा, दिक्कतें यहाँ पर बनती हुई, एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड। द जेवियर्स प्लेयर 25 यहाँ पर नॉकआउट हो चुके हैं, रिवाइव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, दिक्कतें यहाँ पर बन सकती है द जेवियर्स के खिलाड़ियों के लिए। नबी के लिए शायद से प्लेयर को स्पॉट किया जाएगा ओपन दूर दराज के एरियाज के अंदर, शॉट्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, बट कनेक्शन इतना ज्यादा नहीं बन रहा है कैंट के ऊपर। देखिए द जेवियर्स के पास में हालांकि एक डिसएडवांटेज है, अगर उस प्लेयर को रिवाइव नहीं कर पाते हैं तो मेरे हिसाब से दिक्कतें उन लोगों के लिए बन सकती है, और मुश्किलात में वो लोग आ सकते हैं। सो जल्दी से रिवाइव किया जाए और इस गेम के अंदर अपनी दोबारा से वर्कआउट करी जाए, और नजरअंदाज नहीं करेंगे किसी भी प्लेयर या फिर टीम को, अलायंसेस के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि टॉप 3 के अंदर है और रनर अप्स बनेंगे। देखिए अगर अलायंसेस को यहाँ से कमबैक बनाना है, सो उन लोगों को चाहिए कि टीम फ्लैश और टीम फुल स्ट्राइक्स दोनों ही टीम्स का एक खराब मैच हो, और उस मैच के अंदर ये लोग चिकन डिनर लेके जाए। देखिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये चीज यहाँ पर बहुत मैं बोलूंगा अलायंसेस के लिए एडवांटेजेस तो हो सकती है, बट होगी या फिर नहीं शायद से हम फ्यूचर गेस नहीं कर सकते हैं, ये तो यहाँ पर अलायंसेस ही हम लोग को आंसर देख पाएगी। पर लेट्स सी यहाँ पर क्या सिनेरियोज देखने को मिलते हैं, एंड अलायंसेस अभी के लिए दे आर जस्ट होल्डिंग डाउन, एंड जेवियर्स के खिलाड़ी यहाँ पर फाइट के अंदर आएंगे, शायद से यहाँ पर अलायंसेस फाइट के अंदर आएगी। स्काउट यहाँ पे वोंग योंग करने आए थे, एंड शायद से स्काउट करके पीछे भी चले जाएंगे अपनी बगी के साथ में, which is good, right? अलायंसेस यहाँ पर कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट नहीं है, सो एलिमिनेशन लेने का पूरा ट्राई करेंगे। टीम पैंडम, टीम फ्लैश, सभी टीम्स यहाँ पर आज के दिन के अंदर पूरी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देने का ट्राई करेंगे। देखिए अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 टीम्स का एलिमिनेशन देखा है, टीम फोर स्ट्राइक्स यहाँ पर टीम अलायंसेस के अंदर फाइट आती हुई, टॉप की 3 टीम्स यहाँ पर फाइट के अंदर आती हुई, टीम फ्लैश यहाँ पर डिथ्रोन करती हुई टीम फोर स्ट्राइक्स को दोबारा से, और दोनों ही टीम्स के पास में यहाँ पर man oh man, they're having 177 points simultaneously. This is looking great. उन लोगों के पास में, दोनों ही टीम्स के पास में 177 points होंगे, सो देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियोस बन के आएंगे, क्या उड़ेगी फोर स्ट्राइक्स या फिर अलायंसेस पोटैटो हिल को यहाँ पर एक्वायर करेंगे पोचिंकी के आसपास, which is like really looking good. टीम फोर स्ट्राइक्स एलिमिनेशन पॉइंट लेने की बारी शायद से अब यहाँ पर आ चुकी है। It's been a while. Flash already putting their feet up, feet down, more like. In the game, in the soil, in the matchup already. Oh, Hugh looking decent too. Stage 2, Circle coming in, Phase 2 coming to an end. These 2 teams at the top struggling to save that number 1 spot for themselves. Once again, would be an amazing situation if Flash and Four Tribes are, in a good situation, but then Alliance once again, boom, comes up. Into the number 1 spot. It will be a great comeback here for the side of Alliance if that happens, if that is the case, but we're not yet done with the matches. We're not yet done with Team Flash and Four Tribes. Especially, surviving still in the map.
11-minute mark about to come in. Stage 2 circle coming to a close. So the teams and the players are definitely going to be looking out to get more points as soon as possible. As also Rigo is now putting the screws to the players inside of RIQ. As it is a war and RIQ feeling the heat already. Yeah, true. They are feeling the heat, and all he goes Rosemary. हाथ में रहेगी एक शॉटगन RRQ के प्लेस उस हवा कार को लेके आएंगे स्नेप यहाँ पे नॉकडाउन है तो दिक्कतें यहाँ पे शायद से बन सकती हैं एंड शायद से शिकायतें थोड़ी बहुत अल्ट्रा ईगो से क्योंकि एक प्लेयर नॉकआउट है क्या यहाँ पे रिवाइवल होगा या फिर नहीं वी कैन सी यहाँ पे शायद से वेट कर रहे हैं यहाँ पे रिवाइवल अभी भी नहीं होगा ये जो RRQ की फाइट है यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगी ग्रेनेड्स यहाँ पे रोजमेरी की तरफ से जाएंगे द MVP इन द लॉबी राइट नाउ ग्रेनेड्स यहाँ पे जाते हुए कनेक्शन अभी भी यहाँ पे ऑल थ्री गोस नहीं बना के जाएंगे एंड बिल्कुल पानी 5 का ग्रेनेड तो बिल्कुल जाके लगेगा एंड पैरोस इन दैट ओवरकार उसके ऊपर भी ग्रेनेड्स जाते हुए कनेक्शन यहाँ पे नहीं आएंगे and पूरे shots लेने का ट्राई कर रहे हैं but Fagros is just trolling right now he is just certainly trolling spot यहाँ पे प्लेयर को किया जाएगा RRQ versus Ultra Eagles तो फाइट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लंबी स्ट्रेच होती है Looking to find the last few players on the side of RIQ before they take him down out of the server too. Rosemary now bleeds. RIQ are just down to one player. The revival might not be allowed. It might not be coming in. There goes the MVP for the squad. Will be doing a bit of damage, but the best of all, this Alliance are gone. All three go. Might be the ones taking on RIQ as well. They're up to 5th position, but I think 5th is where they will end up here after this match too. That is going to be the case scenario maybe, but अब लोग यहाँ पे देख सकते हैं all three Eagles Rosemary को यहाँ पर जो नॉकआउट है he is just bleeding and RRQ को करेंगे यहाँ पर eliminate मेंशन के सेक्शन के आसपास एंड द जेवियर्स की टीम यहाँ पर फाइट के अंदर आती हुई स्कूल द पास के आसपास जी हाँ बिल्कुल स्कूल के रीजन के आसपास एंड पीटीआर को करेंगे यहाँ पर एलिमिनेट 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स एंड यहाँ पर पेंगुइन को स्पॉट किया जाएगा टीम 4 ट्राइब्स को रोटेशन के अंदर पकड़ा गया है टीम 4 ट्राइब्स यहाँ पर ये फाइट आप लोग बिल्कुल भी नहीं जा सकते दे कैन नॉट लूज दिस बिकॉज अगर यहाँ पर एक्सट्रीम पहले ही शुरुआती फेज के अंदर एलिमिनेट हुई तो टीम फ्लैश के पास में एक चांस रहेगा टीम फ्लैश उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी खाली नहीं जाने देंगे एंड दे विल बी स्ट्राइकिंग इन दैट राइट अपॉर्चुनिटी The top 3, all the players between top 2, same points at the moment. So this game is going to be very important for both these teams as we head down to Miramar, and then later on the Rondo will come into play too. So looking at the way things are going, 4 Tribes will once again have a really good opportunity to take their position back from Flash. But in the meanwhile, all 3 Guerreros are also picking up the pace. They're up to 6 eliminations now, and they're not done yet. They're picking up the players inside of T2K like they're nothing. Long range fights, and they're taking it. And now Snape on the hunt for the last surviving player. Ajaya on the run. And well, Snape immediately going for the hunt and the tire. Oh no, the puncher now drifts him away. Can't really do anything too. He's out in the open, and there is another squad right there in the vicinity. It's Pandem, so he can get taken down. And well, Snape never let go of his prey. Will not let them live. Will not let them slip. Alter egos took down another squad. Now focus immediately towards the players on the side of Void. जी हाँ बिल्कुल एक बारी जोन के एक दफा हम लोग नजर डाले थे कि ये जो जोन है शायद से किसी टीम के लिए खामियाजा लेके आ सकता है किन्हीं टीम्स को यहाँ पर मुश्किल में डाल सकता है एंड अभी के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यसनाया रिवर है यहाँ पर ये भी आती हुई है उसी के साथ में ये जो जोन है यसनाया के आसपास भी बनता हुआ ये जो सिनेरियोज है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टीम स्प्लैश के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बन के आ रहे हैं क्योंकि जोन rotations they are looking on point edge यहाँ पर टीम बिल्कुल डेड सेंटर लेके जाएगी जोन को अच्छे खासे कंपाउंड्स पर लोग पास में रहेंगे तो शुरुआती फेज के अंदर यहाँ पर शुरुआती जोन स्टार्टिंग के अंदर उनके पास में एक बेहतरीन मैं बोलूंगा एडवांटेज आएगा एंड उस एडवांटेज को यहाँ पर अपनी ताकत बिल्कुल बनाने का ट्राई करेंगे टीम फ्लैश बट देखिए और भी टीम्स आएंगी टीम फ्लैश के बोल्स यहाँ पर एक बेहतरीन नॉकआउट करते हुए एंगल के मैच के ऊपर है ये जो मुकाबला है और भी
ज्यादा बेहतरीन, क्योंकि रोजॉक ब्रिज के पास हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 टीम्स, टीम 52, टीम ब्लू स्पोर्ट्स, टीम 2K esports एंड टीम बूम esports फाइट के अंदर आते हुए। दिस इज लुकिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि रोजॉक के पास या फिर रोजॉक के आसपास से कोई भी टीम गुजरने का ट्राई करेगी, सो इट्स दे हैव टू फाइट टीम 2K esports एंड बूम esports and blue esports as well. Yeah, Boom Esports now are going to be one of the contenders too, for sure. As RQ just got taken down, Boom will have that opportunity to once again get the 5th place back and maybe push those numbers up a little closer to players inside of 4 Tribes and Flash too. Alliance 156, Flash 177, along with 4 Tribes, all three 144, 33 points away from the number 1 spot, and the number 2, number 1 pretty much the same at the moment. But the way things are looking right now, Flash and 4 Tribes, I think this battle will keep on going till the end. But the other teams, I think it's a perfect opportunity for them to capitalize and maybe steal the number 1 spot from both these teams, because at the moment, Flash and 4 Tribes, that is, both of them are a little too focused on each other. जी हाँ बिल्कुल, एंड टीम ब्लू esports, देखिए हम वही बात कर रहे थे कि रोजॉक के आसपास यहाँ पर मजीद प्लेयर जिंदा तो थे, एंड ये जो क्लस्टर बन के आया था यहाँ पर ब्लू esports के आसपास, उसके अंदर यहाँ पर शायद से बरकत नहीं कर पाएंगे। और उसी के साथ में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम पैनम को खामियाजा भुगतना पड़ा, और टीम पैनम होती हुई एलिमिनेट इस मैच से, और लॉबी तक का रास्ता उनको दिखाया गया। टीम गोल्डन और टीम पैनम दे आर गॉन, एंड डोमिनेशन का शायद से टाइटल दोबारा से यहाँ पर लेके जाएंगे रोजमेरी। बिल्कुल डोमिनेशन यहाँ पर ऑल्टर ईगोस के रोजमेरी दिखाते हुए। ऑलराइट, टीम 4 Tribes, this is looking good for team 4 Tribes, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एज द रोटेशन इज लुकिंग गुड फॉर देयर टीम। एंड देखिए दोबारा से एक बारी गिव अवे के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे, एंड जो भी बोल रहा है कि गिव अवे का लिंक यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, आप लोग को वहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करना है, राइट? क्योंकि सभी लोग गिव अवे के अंदर एक साथ पार्टिसिपेट करने का ट्राई करते हैं, तो गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एंड जो भी यहाँ पर लिंक इंसर्ट नहीं करना चाहता, वो एक बार इस QR को यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, जल्दी से जाके उस क्वेश्चन का आंसर करिए एंड गिव अवे के अंदर जाके अब भी पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि इस मैच के बाद हम इंस्टेंटली गिव अवे का विनर भी अनाउंस करेंगे। पिछले मैच का तो हमने गिव अवे का विजेता अनाउंस कर दिया था एच, बट इस मैच का हम यहाँ पर इस के बाद हम लोग अनाउंस करेंगे। सो आप लोग के पास में समय है तो जल्दी से आके अभी पार्टिसिपेट करिए। बट टीम 4 Tribes एंड टीम वॉर के यहाँ पर फाइट के अंदर आते हैं 4 Tribes, they got eliminated. Oh no, this is not good, because यहाँ पर टीम फ्लैश के पास में एक अपॉर्चुनिटी, एंड टीम वॉर के शायद से रीजन है टीम 4 Tribes के एलिमिनेशन का। Unfortunate situation. The Xavier 2K Team Secret War Guy Glue Blue Wine. He's just one player on the words of elimination. He's still holding on. Let's see how long is the question. As the players inside of Flash are feeling the heat, they're not eliminated just yet, but a lot of these players are bleeding. Seven and Zeus, both of them. And Bows and Tops, they'll be looking to go for that revival immediately, but it's not looking good now. But they will be securing more and more finishes, so now the numbers are going to be added up. The lead is going to be coming in strong. Even if it's a couple point lead, they will still take it going into the next few matches. It is still going to be Flash, a little favorite here on the map of Miramar, if you ask me. But for now, they will lose Zeus, and it looks like Zyvin might also get taken down. As War Guy now will put the Zeus to players instead of Xavier. They will lose one young. जी हाँ बिल्कुल, एंड टीम फ्लैश यहाँ पर 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स लिए जाएंगे, एंड पोज अपने उस नॉकआउट खिलाड़ी को अपने व्हीकल में डालने के बाद में कंपाउंड के अंदर होल्ड करने का ट्राई करेंगे, शायद से वहां पर रिवाइवल इनिशिएट करने का पूरा ट्राई किया जाएगा। बट अभी के लिए यहाँ पर टीम फ्लैश एडवांटेज रहेगा, एंड रिवाइवल भी करना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। टीम फ्लैश दे आर स्टिल इन द डेथ सेंटर, देखिए सेंटर के अंदर है। अगर नेक्स्ट जोन यहाँ पर हार्ड शिफ्ट भी लेके जाएगा तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, वो तब भी सेंटर के अंदर रहेंगे। बट द ज़ेवियर्स की टीम यहाँ से होती हुई एलिमिनेट, एंड डोमिनेशन आता हुआ अब डाकू की तरफ से। तो टीम वॉर गए, देखिए हालांकि यहाँ पर टीम 4 Tribes बड़े एलिमिनेट हो गई, टीम वॉर गई यहाँ पर पूरा रिवेंज लेने का ट्राई करेंगे, शायद से ट्राई करेंगे चिकन डिनर लेने के लिए पाकिस्तान रीजन की तरफ से। टीम 52 भी होती हुई बाहर, 8 टीम्स 23 प्लेयर्स लॉबी में अभी भी मौजूद।
21-minute mark about to hit. Stage 5 circle coming to close. Let's see if anyone else here at the bottom of the overall standings, can they come up? Blue wine, just probably at this point, just trying to try their strategies out, maybe something new, because not just going in their favor at all. Wine tried so many different things, and at the moment, they're just all of these. I mean, most of these teams are just food for the players on the side of Alter Ego Ares, who are just dropping them like flies. They're up to 12 eliminations here now, Inferno. That's right. And यहाँ पर देखिए 23 प्लेयर्स थे, उसके बाद में 22 प्लेयर्स यहाँ पर अभी भी जिंदा, कुछ यहाँ पे प्लेयर्स नॉकआउट होते हुए, एंड टीम वॉर गई, टीम सीक्रेट्स का अगेंस्ट फाइट यहाँ पर लेती हुई ये टीम यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रही है, एंड अभी के लिए टीम वॉर के पास में रहेंगे 7 एलिमिनेशन. देखिए अगर उन लोगों को टॉप 5 के अंदर भी आना है, सो उन लोगों को एक अच्छा मैच चाहिए. मैं बोलूंगा अगर टीम वॉर के इस मैच के अंदर चिकन डिनर ले लेती है 20 प्लस पॉइंट्स के साथ में एच, we can welcome them in top 5 at least. But Team War यहाँ पर Team Secrets के against fight लेती हुई Lolgu and Juke रहेंगे 2 women standing, and Team War यहाँ big they're standing tall with 4 players, और 4 players यहाँ पर आगे तरफ बढ़ेंगे. बेहतरीन ग्रेनेड यहाँ पर Juke के ऊपर, शाखा के ऊपर भी रिटालिएशन का ग्रेनेड यहाँ पे जाएगा. Juke बहुत ज्यादा लो हो चुके हैं. Team War के this is not looking good for them. Blind Esports यहाँ से होती हुई eliminate, and Juke बहुत ज्यादा लो, he's barely surviving right now. Team Secret, those grenades will be sounding scary, and Lol takes a bit more damage as the retaliation now from the side of Juke will come in. He will drop one immediately. War Guy will be losing one player in the midst of all this. Unfortunately, they will also lose Shaka. He's going to get taken down, and Team Secret, Juke is not done yet. He's trying to see if he can get more flashy on the players on the side of War Guy. He's already done enough damage. Took down 2 players and confirmed them too. They're at the edge of the circle, so they also have to worry about that, but they do have a little bit of time to work with it. At the moment now closing in the distance. He wants to make sure that he goes for more fights here, but he's not taking the fight against War Guy. He's been spotted, but the player on the side of Blue Blook is Leon, and he will take him down. Last surviving player is now compromised his position as well, so he will also be going down here, but in top 6 at least. So 1 extra point in terms of elimination, 1 extra point in terms of position is probably what he's looking for, unless he survives a little longer than he is right now. It's exactly यहाँ पर टीम फ्लैश बिगड़े 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स के बाद में एक भी एलिमिनेशन पॉइंट नहीं ले पाई है. रीजन क्या है? इट्स गोना बी टीम वॉर के अभी के लिए यहाँ पर, एंड यहाँ से टीम वॉर के बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर करती हुई है, एंड इसके साथ में टीम फ्लैश यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टॉप सी यहाँ पर एलिमिनेट तो नहीं हुए बट नॉकआउट हो चुके हैं. साथ ही एलिमिनेशन पॉइंट्स रहेंगे. इजाफे यहाँ पर एलिमिनेशन पॉइंट्स के अंदर एक भी नहीं आया, सो ध्यान देना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी के लिए टीम वॉर के दे आर हंटिंग एंड दे वी हैव इट. ब्लू स्पोर्ट्स हैव टू एलिमिनेट टीम वॉर के. हालांकि हम लोगों ने देखा पास में यहाँ पर 4 प्लेयर्स जिंदा थे, बट यहाँ पर एक फाइट के अगेंस्ट जब टीम सीक्रेट्स के अगेंस्ट फाइट ले रहे थे, दे लॉस्ट 2 ऑफ द प्लेयर्स. 2 के स्पोर्ट्स सर्वाइविंग विद 4th प्लेयर स्टैंडिंग. 2 स्पोर्ट्स के पास में रहेंगे 3, एंड टीम अल्टर ईगोस के पास में रहेंगे 3, एंड टीम फ्लैश एंड वॉर के दे सर्वाइविंग विद 2 प्लेयर्स स्टैंडिंग. War Guy, those 2 players are going to be very important, but Flash surviving up until the top 5 yet again is proof that their consistency is just unstoppable, and they will lose a player though. But Zyvin now the only one standing here on the side of Flash. I get taken down too. It all comes down to him taking down the players on the side of Alter Ego Ares. The P90 in the hands, and I think the P90 is doing a lot of damage right now. Rosemary hits the deck too. Alter Ego Ares might just get taken down. Zyvin is on the words of pulling off a 1v3. Rin's the only one standing now on the side of Alter Ego Ares, as he will be going for the revival. He will be successful in doing so, but Zyvin is not done yet. In the midst, while Rin was going for that revival, he did go and heal himself, and he will come back stronger than ever as he peeks and takes him down. That's a 1 versus 3, and Zyvin on the side of Flash is not letting the squad down. Alter Ego Ares from being a team contending for that chicken dinner to being taken down by a single player on the side of Flash.
That's true, Team Flash. He is the solo man standing, and still he's trying his level best to make that chicken dinner happen. Having 10 elimination in total and 5 solo elimination यहाँ पर ये player लेके जाएगा. बहुत ज़्यादा low हो चुका है यहाँ पर HP के ऊपर. And Team Flash अभी के लिए यहाँ पर काफी याद शॉट से भुगतना पड़ सकता है. जो grenades आ रहे हैं इन लोगों के ऊपर, बेहतरीन grenades यहाँ पर शायद से Team Flash वो जो आखिरी player है, he is surviving. I don't know how. यहाँ पर उस कंपाउंड के अंदर यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए, अगर ऐसे ही ग्रेनेड्स यहाँ पर Team Flash के ऊपर आते हुए शायद से उनको कभी भी इस मैच से बाहर किया जा सकता है और खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस मैच के अंदर. और भी ज्यादा ग्रेनेड्स जाते हुए, एंड देखिए जो आखिरी प्लेयर है Team Flash का, शायद से पीछे जा रहे हैं जी. बिल्कुल रिपोजिशन किया जाएगा. टीम वॉर्गे के मोरा को यहाँ पर डाउन कर जाते हैं. Team Flash का जो आखिरी खिलाड़ी है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ज्यादा हुआ. जो आखिरी प्लेयर है भाई ने इक्वेशन के अंदर आखिरी हो, he is just getting interesting, and there we have it. यहाँ पर एक 1v2 करते हुए वॉर्गे के अगेंस्ट. Flash. What is happening? Simon, who are you, buddy? He is popping off right now, and no one can stop him. Is it a 1v? Is it going to be a 1v7 chicken? Do you think there's a chance? There could be a chance anytime sooner. It's a game of PUBG, and that's the beauty of this game. यही तो इस गेम की खूबसूरती है. स्पॉट यहाँ पर उस प्लेयर को किया जाएगा. Team Flash का आखिरी खिलाड़ी अपनी पूरी सांसों का जवाब देता हुआ आखिरी तक वहां पर वो जो खिलाड़ी है जिंदा रहेगा. ग्रेनेड यहाँ पर हाथ में पिन किया जाएगा. 2K Sports और Team Bany Sports यहाँ पर इस आखिरी खिलाड़ी को नॉकआउट करने का ट्राई करेंगे. वो जो ग्रेनेड है क्या यहाँ पे नॉकआउट लेके जाएगा, बट Team Flash होती है एलिमिनेट, एंड वो जो ग्रेनेड है अपना कारीगर काम पूरा करके गया. 2K Sports यही है मौका. अगर अभी यहाँ पर पुशिंग नहीं किया, अभी यहाँ पर रशिंग नहीं किया, तो शायद से 2K Sports जो चिकन डिनर है उनके हाथों से फिसल के जा सकता है. 2K रोज नए ऑर्डर्स और डिलीवरीज के बीच पर्सनल काम तो रह ही जाते थे, बट देन मैंने उस आखिरी प्लेयर को यहाँ पर खत्म करने का, बट यमी अपने उस खिलाड़ी को रिवाइव करेंगे. एंड टीम बनी स्पोर्ट्स अब यहाँ से 4v2 की ये जो जंग है लड़ने का ट्राई करेंगे. एंड आई गेस 2K Sports they are not leaving this chicken dinner. 2K Esports on the verge of getting it right now, but with a stealth knock there, unfortunately. A missed grenade. A miscalculated timing on that one. Yummy now closing in the distance on to another player, but Sundar is going to get taken down as well. Now, all of a sudden, from a 2v4 to a 2v2, boom, now we have a really good chance to actually capitalize and get those 2 finishes pretty early here, so they can actually go more. And Yummy is doing exactly that. He gets Hulk, 2K, down to a 3v2 situation, but 2 players. I mean, the 2 players were the only ones standing on their feet, and now 2 players are the only ones standing on their feet too, because the other 2 players who were bleeding, they are gone. 1 missed grenade and 1 beautiful grenade coming in from Maul. Beautiful start, beautiful end as well for the game. 2K Esports now with that advantage taken away. Boom, are looking confident to close things off. And just as I say that, Yummy, he gets taken down. The AUG reigns supreme once again. They are reigning supreme indeed. Boom Esports, the solo man standing, उस 4v2 की फाइट को यहाँ पर अब एक 1v2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है. Let's just see what's gonna be happening, and इसी के साथ में आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए I guess ये जो फाइट है, जो दरकार है, वो आखिरी के अंदर यहाँ पर बन के आएगी. एंड अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मॉल यहाँ पर लोअर रेंज के डिसएडवांटेज के ऊपर, and I guess इस डिसएडवांटेज को बिल्कुल भी अपने एडवांटेज के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. There you go, he's gone. और इसके साथ में यहाँ पर 2K Esports लेते हुए इस चिकन डिनर को. It felt like things were looking weird. It felt like things were looking, unfortunate. But then they finally pick up the pace and they got themselves chicken dinner. Although giving away 2 points to the side of Boom, they will pick it up towards the end of the game. 2K Esports with the winner chicken dinner here in the second match of the last day of the Grand Finals Phase 2. This is looking decent now for them, but once again, Phase 1 Grand Finals, they were doing well. Phase 2, they're still doing well. It's just not enough. We still need to see those huge improvements coming in. Maybe Phase 3 is when we'll see
a lot more of 2K sports. जी हाँ बिल्कुल है, एक बारी नजर डाल देते हैं हमारी मैच हाइलाइट्स के ऊपर भी। एंड मैच हाइलाइट्स पे हम लोग यहाँ पे पहले पढ़े ऑडियंस, यहाँ पर हम लोग आप लोग को एक छोटी सी अलर्ट या फिर मैं बोलूंगा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। अगर आप लोग गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, सो आप लोगों को वो लिंक के ऊपर टैप करने के बाद में थोड़ा सा वेट करना है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो जो लिंक है रिस्पॉन्ड करेगी एंड द लिंक विल ओपन द पेज इटसेल्फ। सो जाइए थोड़ा सा जाके थोड़ा वेट करना है एंड अपने आप वो जो लिंक है काम करेगी। लिंक गलत नहीं है, जो भी आप जाके अंदर लिख रहे थे द लिंक इज रॉन्ग एंड द लिंक इज इनवैलिड, द लिंक इज वर्किंग, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट वेट फॉर अ लिटिल लॉन्गर एंड वो जो लिंक है काम करेंगे। जाइए जल्दी से आके गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समय और रहेगा। हाइलाइट्स के बाद में हम लोग यहाँ पे कुछ और भी ज्यादा स्क्रीन्स देखेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे गिव अवे का विजेता दिखाएंगे। सो जाइए जल्दी से आके अभी गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए, बिकॉज़ यू गाइस आर हैविंग टाइम। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फॉर वन स्पोर्ट्स के, तो जल्दी से आके सब्सक्राइब करिए। बट लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन द मैच हाइलाइट्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखा कि फ्लैश का वो जो आखिरी खिलाड़ी था आखिर तक यहाँ पे जिंदा रहे थे, और जिस तरीके से यहाँ पर आखिर तक अपनी टीम को पोजीशनिंग पॉइंट दिलाया, वो तारीफ का तारीफ के काबिल थे। एंड उसके साथ में बेहतरीन यहाँ पर मैच हम लोगों ने देखे। एंड लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन द टीम स्टैट्स एज, क्योंकि टीम 2K esports इस चिकन डिनर को अपना बना के जाएंगे। 4 फिनिशेस या फिर एलिमिनेशंस अपने हाथों में लेके गए। Winner, chicken dinner 2K are going to be happy with this. But with only 5 eliminations, right, it's not going to be giving them a major boost in that overall standings, but just enough to keep the momentum going. Yep, the momentum, right? The momentum right now, the flow, the game flow, it's in the hands of Team Flash and Team Four Thrives. देखिए ये गेम जो था स्पेशली मुझे तो कभी पता ही नहीं लगा कि Four Thrives कब एलिमिनेट हो गई। एंड उस फाइट के अंदर यहाँ पर कौन सा डिसएडवांटेज था उन लोगों के पास में। टीम वॉर के अगेंस्ट किस तरीके से यहाँ पर फाइट ली, कैसे उन लोगों ने यहाँ पर क्या गलतियां करी, वो हम एनालाइज नहीं कर पाए थे पिछले गेम के अंदर। बट अभी के लिए हम लोग एक बार रिकैप भी देखा, उसके अंदर भी नहीं समझ आया। बट टीम फोर थ्राइव्स कहीं ना कहीं यहाँ पर गलतियां तो हुई होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गेम था वो शायद से रोंडो के मुकाबले जैसा अच्छा नहीं गया। एंड टीम फोर थ्राइव्स टीम फ्लैश को अगर थ्रो करना है अभी के लिए, यहाँ पर उन लोगों को ध्यान देना पड़ेगा आगे आने वाले मैच के अंदर। मेरा मार के मुकाबले पे यहाँ पर कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। बट लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन द MVP edge, because I mean Team Flash, they played amazing, and that single player, he just took 7 elimination and 7 knockouts, and the top 4 players on the screen. And Rosemary, he is just so consistent. He's just so consistent with everything, man. He is just like sun rising every day. And Rosemary, he is the MVP, or we can say top 4 players rising every time in the matches. I mean, Rosemary has to be there. There is no top 4 players and no MVP if Rosemary is not there. But Zevin, I'm going to remember that play for a really long time. Bany found the side of Ultra Ego 2, and Zuke with the beautiful double there towards the end on the 2 players inside of Warguy. These 4 players have put up some amazing players going into this one, so definitely someone to keep an eye out for. And they're talking about teams to look out for too. I mean, Team Flash, they will definitely be someone, especially thanks to Zyvan after this one. Also, Guerrero's 15 eliminations, they were looking strong and they were looking scary up until one point. Warguy with 9 eliminations. That didn't, I mean, Warguy, the kind of team that didn't really perform well on the map of Rondo, but Wrangler and Miramar, they do play well. 2K on the other hand, they do get the chicken dinner, but just 5 eliminations, not really a good score. But they'll take it. They'll take it. Anything, above 12, 13 points every game is a great, great score if you ask me. जी हाँ बिल्कुल। एंड एक बार नजर डाल लेते हैं हमारी मैच समरी के ऊपर, क्योंकि 70 एलिमिनेशन यहाँ पर हम लोगों ने देखे और 5 ग्रेनेड एलिमिनेशन आते हुए लॉन्गेस्ट एलिमिनेशन यहाँ पर लेके जाएंगे Ultra Ego Series के रोजमेरी। एंड व्हीकल एलिमिनेशन हम लोगों ने एक ही देखा था। एंड बहुत मैं बोलूँगा 4 एयर ड्रॉप्स यहाँ पर जो थे they got looted. So the teams, they were going for those level 3 gears and got drop weapons like P90 and LMGs. So right now it's looking good. It's good. It's just a second match, do not get me wrong. We do have Miramar, and Miramar के ऊपर हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि क्या सिनेरियोस बिल्ड अप करेंगे, राइट? क्योंकि मिरामार का मुकाबला वहां पर
it's a mix of everything. Close range encounter battles, mid range fights, long range fights, rotation clashes. और एक बार नजर डालते हैं हम लोग यहाँ पर मैच रैंकिंग्स के ऊपर, एक दफा डालते हैं नजर यहाँ पर टीम अल्टर ईगोस के ऊपर भी, क्योंकि 18 पॉइंट्स यहाँ पर लोग पास में रहेंगे 2K। हालांकि यहाँ पर चिकन लिया था बट पॉइंट्स बहुत ज्यादा कम। टीम फ्लैश लेके जाएगी 17 पॉइंट्स एंड टीम 2K स्पोर्ट्स लेके जाएगी 15, टीम बॉर्गे लेके जाएगी 13 पॉइंट्स। और उसके साथ में हम लोग यहाँ पर नजर डाल रहे थे टीम फोर ट्राइब्स के ऊपर। ये जो गैप है टीम फ्लैश और टीम फोर ट्राइब्स के बीच में अब 17 पॉइंट्स का बरकरार, बहुत ज्यादा ये जो गैप है उसके अंदर गैप आ चुका है। True. The difference is gonna be a lot. I don't think it's gonna be four. Wait, I don't think it's gonna be 17. I think it's gonna be 13 maybe, because I believe Flash did have a 4-point lead. So if you take that away, that's 12 points. 13 points of lead. No point difference. So coming in. So we'll be. We were looking at that in the second. There you go, 13 points is the difference there between Flash and Four Tribes. Alliance, on the other hand, unfortunate game again, and the first game too. They didn't really have any chances coming into this today. It just feels like an unfortunate turn of events for them, but we'll see. 156 points for Alliance, all three go 153. A great game by them, to be honest. So they are also on the verge of getting that number 2, number 3 spot as well for now. A boom, 144, 136 for RIQ. 2K Esport with that chicken dinner comes up to 7th position now, 131 points. BDR on 128. Pandem on 122. Look at those Indonesian flags up there. 4th to 9th position, all Indo teams. हाँ बिल्कुल। एंड ओवरऑल रैंकिंग्स के अंदर वो जो गैप था वो और भी ज्यादा लंबा बनता हुआ टीम फ्लैश और टीम फोर ट्राइब्स के बीच में, राइट। सो टीम फ्लैश में बोलूंगा ये जो लास्ट मैच था, वो जो आखिरी खिलाड़ी था टीम फ्लैश का लास्ट तक जिंदा, उसने पूरा काया पलट कर दी इस ओवरऑल रैंकिंग्स के अंदर, राइट। और मैं बोलूंगा यहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग्स के अंदर जो टीम्स यहाँ पर स्ट्रगल कर रही हैं अभी के लिए, आई गेस द डे इज ओवर फॉर देम। एसाइड ई-स्पोर्ट्स, हालांकि यहाँ पर इन लोग का अभी बेहतरीन गेम था एंड एसाइड ई-स्पोर्ट्स शायद से वी आर आस्किंग अ लॉट, बट 2 कंटेंडर्स ले तो शायद से ये भी टॉप 5 के अंदर आ सकते हैं। Top 5? Big ask if you ask me, but I'll take your word for it. If you think they can, maybe they can. I'll give them the benefit of the doubt there. But we are done. The first 2 matches here on the last day of the grand finals. We have 4 more left. Miramar, Rondo, Erangel, and then Miramar again before we crown our champion. Will it be a repeated one? Well, at the moment it does look so. But we will have to wait and watch to see how things unfold. Because do not take a Fortress out of the equation just yet. They still have another Rondo to go with. And it's not just about Rondo. The other maps as well. There will be some changes there for sure. And talking about changes, Rosemary actually gets dropped now down to 2nd position as Flash win. Well, he'll be going for that throne here in the overall MVP. He regains his position. Rosemary down to 2. Fire in 3rd position. Huzaifa on the side of 4 Tribes on 4th position. And Zeus on the side of Flash in 5th position. Now, top 5 players, 2 of them are from Team Flash. जी हाँ, ओवरऑल एमवीपी के अंदर भी यहाँ पर हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर टीम फ्लैश के विन ने यहाँ पर आगे की तरफ बढ़े एंड 48 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ में 43 नॉकआउट्स लेके गए। ही इज जस्ट इनसेन राइट नाउ एंड विन यहाँ पर दोबारा से अपने स्पॉट को स्टिक अप करेंगे पहले पायदान के ऊपर यहाँ पर आते हुए। बट Alter Egos, Rosemary, Fire and Huzaifa, Team Flash has used everyone. They are actually playing really good. And ऐसी performance रहा तो शायद से आगे आने वाले मैचेस के अंदर चिकन डिनर जरूर उनकी किताब में आ सकता है। बट अभी के लिए हम लोग एक बार नजर डालते हैं यहाँ पर हमारी फैन फेवरेट टीम्स के ऊपर। देखिए आखिरी दिन है तो अपनी टीम को यहाँ पर सपोर्ट तो बिल्कुल कर ही सकते हो, बट यहाँ पर ध्यान देना ग्रैंड फाइनल्स का आखिरी दिन है, ये वोटिंग यहाँ पर कुछ काम नहीं आएगी, राइट। इट्स जस्ट कि आप लोग यहाँ पर अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हो, अपने प्लेयर्स को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दिखा रहे हो। द फैंस आर जस्ट गिविंग ब्लेसिंग्स टू द टीम्स एंड द प्लेयर्स एंड टीम फोर स्ट्राइप्स एंड टीम TRS, they are the blessed teams right now, the most blessed teams I'd say in the fan favorite team section. और after this एक बार नजर डालेंगे हमारे giveaway winner के ऊपर एंड देखते हैं यहाँ पर giveaway के विजेता कौन बने हैं। यहाँ पर हमारे दूसरे
मैच के अंदर जो है मेरा सॉरी रैंगल का, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू सी मिरामार, आई एम जस्ट सेइंग मिरामार, बट यहाँ पे जो रैंगल की मैप के ऊपर गिव अवे था हमारा, देखते हैं यहाँ पर गिव अवे के विजेता कौन बनेंगे, एंड आई गेस congratulations to the player, the PUBG fellow player on winning yourself an elite royal pass. और अब अगर आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कैसे करना है, सो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे एक बारी लाइव चैट के अंदर लिखना, वहां पर आपको गिव अवे का लिंक देगा, गिव अवे लिंक के ऊपर टैप करने के बाद में एक इमेज रहेगी, उस इमेज के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, इमेज के ऊपर टैप करना, वहां पर अपना रियल नेम पबजी मोबाइल कैरेक्टर आईडी के साथ में यहाँ पर अपने गिव अवे का आंसर, आई मीन जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है, एक बारी बस वो कमेंट बिल्कुल सिंपल तरीके से यू हैव टू जस्ट पोस्ट इट देयर सिंपली। यहाँ पर इतने इजी और सिंपल स्टेप्स के साथ में आप लोगों ने यहाँ पर गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया। आई फील गाइस वंडरिंग यहाँ पर आगे आने वाले गिव अवेज के अंदर क्या प्राइस रहेगा, इट्स गोना बी ओनली द रिलीज ट्रायल पास। तो जल्दी से जाइए यहाँ पर गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए, इनिशिएटिव है 141 ई-स्पोर्ट्स की चैनल की तरफ से, सो ह्यूज शाउट आउट एंड थैंक्स to 141 esports, क्योंकि if you guys are giving to us, so why not to give in return as well. So the giveaways are there, so audience you guys should go and participate in the giveaway, क्योंकि मैच यहाँ पे स्टार्ट होने में शायद से थोड़ा वक्त और है। एक बार मैप रोटेशन के ऊपर नजर डालेंगे, उसके बाद में यहाँ पर सीधा यहाँ पर चढ़ेंगे यहाँ पर मिरामार की वादियों में, और देखते हैं यहाँ पर मिरामार के इस मैप पे या मुकाबले में कौन सी टीम आएगी ऊपर और लेके जाएगी उस टिकट को। Yeah, we definitely have a minute or two before the match begins. So this does give enough time for the audience to go, take part in the giveaway and try their luck out. In the meanwhile, you can also just subscribe and hit that bell icon so you don't miss out on any of the action there coming in for the rest of the tournament as well. We have Phase 3 starting in from tomorrow, and you definitely don't want to miss it, especially after how Phase 1 and Phase 2 went off. Phase 3, it's gonna be a banger for sure. And yeah, if you want to stay updated, or just in case you miss out on the streams, make sure to follow 141 Esports here on Instagram, and the links down in the description. You'll find all of the links there, so you can keep yourself updated with this tournament and upcoming tournaments as well. Anyway, we're done. We're done with Rondo, Wrangle, gone. 2K Esports, they stole that chicken dinner, if you ask me. It was the end. Boom. It felt like they had it in the bag, especially after getting those two. A bit of luck, yes, and indeed, how getting taken down by his own grenade there. But okay, with 4 players standing, they did have a really good chance. They were the favorite ones coming in. It just felt like Boom, with the way how things usually go out for them. It felt like Boom might actually have a really good chance, but RIQ did steal, and that is an actual steal coming in from the side of 4 Tribes, who were ridiculous on the map of Rondo. We'll take a look at Rondo later on as well, but for now, it's going to be Miramar. The two teams that are really consistent and have been consistent on the map of Miramar, apart from like maybe 2 games where I've seen Flash and DRS not perform well, are Flash and DRS. So, the side of Flash, they're not going to be really confident going into this one. The consistency, once again, will be helping them for sure. DRS, on the overall, their position is kind of bad. Disappointing, some might say. So coming in, I don't really think the next 4 matches, even if they get a chicken dinner in each one, it's still going to be enough to help them surpass Flash or 4 Tribes even. As a matter of fact, even Alliance. So I don't think it's enough for the side of DRS. But it is what it is. We will see how they perform. But 4 Tribes, it's going to be an important matchup for them, along with Alliance. And all 3 areas, if the consistency is still there in terms of elimination and position placement, I think they might close out that distance between the top 2. Looking at the flight path, La Cabrera is where we start off. Heading towards down south, right in the center too. Just offshore of Patona. Where we did see a lot of these teams sometimes do go towards that situation. Towards that part of the map in certain situations there.
War guy dropping down pretty early. Are they going towards Trailer Park? Looks like it. La Cabrera might be, under the control of Voin at the moment. But Picado, we all know, man, that's where a lot of these Hello everyone, stream teams को and like Four and Tribes going in subscribe there करो. too. And a lot Stream of को these like guys and are subscribe definitely going to करो be on guys. Flash and Four Tribes at the moment. And I feel like Alter Ego Eris might want to take a fight against Four Tribes pretty early because I do see them drop Picado too. Jihad, I mean, Four Tribes and Team Alter Egos, ये जो fight है, ये जो full for battle है, बहुत समय से पिकाडो पर चलती हुई और ये जो फाइट है यहाँ पर दोबारा से इनिशिएट हो जाएगी. गन्स एंड वेपन्स यहाँ पर फोर ट्राइब्स के खिलाड़ी और अल्टर ईगोस के खिलाड़ियों की मैप मिल जाएगी. और देखिए ऐसा नहीं कि ये प्लेयर्स यहाँ पे कहीं और कर रहे, कसीनो कर रहे या फिर कहीं और यहाँ पे पिकाडो के सेक्शन के ऊपर कर रहे. ये सीधा यहाँ पर एक सिंगल बिल्डिंग के ऊपर उतरेंगे और यहाँ पे फाइट लेना स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर फलक डाउन किया जाएगा. दिस इज आफ्टर 44 ट्राइब्स यहाँ पर पहला कामयाब भुगतना पड़ेगा. एंड यहाँ पर आई यूथ के ऊपर पहला एक यहाँ पर डायरेक्शन नॉकआउट, दूसरा नॉकआउट यहाँ पर निकालने की तरफ T24 पे यहाँ पर रेडी रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा. मुश्किल यहाँ पर बनती हुई इसके यहाँ पर हुसैफा इस दोनों में स्टार्टिंग टीम और दिस इज नॉट द कंफर्टिंग फोर टाइम्स. अगर ये थोड़ी फोर पार्टी हारे तो शायद से यहाँ पर जो पहला स्पॉट है देना पड़ जाएगा टीम फ्लैश को. एंड टीम फोर टाइम्स, दिस वाज not the thing we were expecting. Were you not? Because Oh I my- expected this. I absolutely expected this. Not in terms of elimination, but in terms of the fight. Because Alter Ego, we knew man. they were going to do that. They Yeah. know exactly who to target. Because one thing for sure, Miramar, you can't really take down Flash that early. You definitely don't want to be facing Flash because they are really good on the map. Four Tribes, they struggled, and the pattern was observed. Rosemary is a genius at this point. Man, Rosemary, he is the man right now. And Alter Egos, this ये opportunity है अभी के लिए यहाँ पर टीम फ्लैश के लिए. ये जो गैप है और भी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा. एंड यहाँ पर शुरुआती फेज के अंदर ये जो फाइट ली टीम फोर ट्राइब्स ने, it was just insane, man. But I did not see it coming down, man. The ball, but every DRS and T2K esports, both of them the college teams are coming into the fight. Team 52 को यहाँ पर कामयाब भुगतना पड़ेगा और यहाँ से मैच से बाहर होती हुई मजीद प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर लॉबी के अंदर जिंदा. बट Team 52 they are gone. But DRS and T2K esports यहाँ पर फाइट के अंदर आते हैं. बट एक और टीम यहाँ पर फाइट के अंदर आ चुकी. ये देखिए अलायंसेस अब करते हुए थर्ड पार्टी. And surviving now, this is going to give them a great opportunity to close out the distance, close in on those number of points the four tribes have. 177 is what we're looking at right now. And at the moment, 50 esports are also gone. Team Secret, well, there you go. Another squad gone. And we once again, we know how good the RS are on the map too. And they are performing as well pretty decently. 3 eliminations to start things off. This is turning out to be one hell of a Miramar. Right off the bat, we have DRS performing. We have 4 tribes getting taken down. And it's not just any other squad taking them down. It's Alter Ego Eris, the squad that is now on a hunt to get that number 2, number 1 spot. They're in top 3. Jumble and they're in top 3 and they're performing really good. T2K esports की यहाँ पर 2 players अभी भी यहाँ पर जिंदा है. खामियाज शायद से इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है. लेकिन यहाँ पर T2K esports के लिए बन सकती है. But they are not going to fall back. And शायद से Venom बिल्कुल इस साथ में यहाँ पर fearless mindset से push करेंगे. And यहाँ पर पहले बंदे को down किया गया है. And Team 2K esports, they are gone. DRS giving the lost cyclone in this fight, but they did try their level best though. Edge. Find their level best, but sometimes it's just not enough. Sometimes it's too little too late. But for now, we'll see if Alliance can capitalize on any of the eliminations, as a matter of fact. Taking down DRS, towards has their control on the map Miramar this early. Will it come into fruition is what we'll have to wait and watch in the next MPL. He's the only one in this compound, and I don't think they realize that. They're making sure that they're safe at the moment, and well, as soon as they get the confirmation, XMPL is gone. At DRS, they will lose 1, and Alliance, they're now going to be closing in the distance.
फिर DRS and Alliances, ये जो फाइट है यहाँ पर दोबारा से इनिशिएट हो चुकी है नेशनल लेवल पे थ्रोन के रीजन के अंदर। ये जो फाइट है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो रही है। इसके साथ में केला वाइट स्पॉट यहाँ पर प्लेयर को किया जाएगा Alliances, यही है मौका इन लोगों के लिए यहाँ पर एक बेहतरीन मैच को लेने के लिए। आई गेस यहाँ पर बिल्कुल इसी के साथ में एलिमिनेट किया जाएगा, प्लेयर्स को डाउन भी यहाँ पर किया जाएगा। इनसेन लेवल ऑफ फाइट्स दे आर कमिंग अप। द थिंग आई वाज स्पेकुलेटिंग कि अगर 4 टाइम्स एंड टीम फ्लैश का अगर यहाँ पर गेम खराब होता है तो टीम अलायंस उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी रहेगी इस गेम को अपने नाम करने की, और यहाँ पर आएंगे शायद से टॉप 2 के अंदर या फिर टॉप फर्स्ट का स्पॉट लेके जा सकते हैं। सो अलायंसेस, दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। लेट्स सी कैन दे एक्चुअली कैपिटलाइज ऑन दिस। Let's see if they can impand them. Seacom 1, Frankie with 1. Fireboy did have one for himself, but unfortunately he's gone now out of the picture. And Team Flash is holding on to their position towards number 1 right now. They're going to be really happy with the elimination of 4 tribes. But they will also try to get as many points as possible going into this one, right? Once again, 3 more matches left after this. So every point is going to count. Every elimination counts. Every chicken dinner counts. So the priority is definitely going to be a chicken dinner going into this one. Those 10 points coming in. Yes, but surviving till the end. That's kind of the game plan for Boom. Most usually, I mean, more often than not. Team Flash are also good at consistently surviving towards top 3, top 4 at times, maybe even more if luck's in their favor. But if they also can have 4 players surviving towards the last few circles. The case scenario, but giveaway एक बार स्क्रीन के आपके ऊपर दोबारा से। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे गिवअवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाइए जल्दी से आके अभी यहाँ पे गिवअवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए। इस क्यूआर को आप लोग स्कैन कर सकते हो या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क गिवअवे आप लोग चैट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। लिंक आप लोग के स्क्रीन के ऊपर रहेगा। एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड इजी स्टेप्स रहेंगे, इमेज रहेगी, क्वेश्चन रहेगा। उस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है। उस इमेज के ऊपर आप लोग एक बार जरूर टैप करना है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे अपने रियल नेम, उसके बाद में पबजी मोबाइल कैरेक्टर आईडी और आंसर्स के साथ में आप लोग यहाँ पर गिवअवे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ऑडियंस, आप लोग यहाँ पर क्या इंतजार कर रहे थे कि अभी मैच के अंदर यहाँ पर सेकंड फेज ही है। सो आप लोग के पास में बहुत ही ज्यादा समय रहेगा। एंड मैं देख रहा हूँ एवरीवन इज जस्ट लविंग 1for1 esports एंड स्पेशली एशिया बैटल्स चैप्टर 3। और अगर आप लोगों को इसका चैप्टर 4 भी देखना है तो आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से जाइए गिवअवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए एंड 1for1 esports के चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। Because if you guys subscribe, maybe we can see Asia Battles Chapter 4, and I mean, it gives motivation to the organization as well. So go right now and subscribe. And thanks for the initiative coming in from the side of 1for1 esports कि ये giveaway लेके आए हमारी audience के लिए। And हर मैच में हम लोग एक elite trial pass का giveaway देखेंगे। बस वही 550 गाड़ी वही देवाची बस दका 500 दिन दका। Congratulations to all winners already of the giveaway, but we will still have a few more winners. And imagine just getting yourself a free Elite Royal Pass. The skins that you can get from those, that is what it all. I mean, that's all I can think of usually. These amazing skins of these players, and I'm like, oh no, why do I not have? Oh, I would probably have to. Immediately get myself a Elite Royal Pass there too. Hopefully I win. Wait, I have 4 more games. Hopefully my luck's decent today. I mean, I've been trying to participate ever since 1for1 esports have taken the initiative of giving away some free Royal Passes. We'll see. We'll see if I'm lucky enough to get some skins here. Thanks to that Royal Pass, if that comes into play at the moment. We'll see if Blue are lucky enough to get some frags here. They're already at 4 eliminations here. Kalbu is the only one who's gone. And Warga, you gotta be careful. BTR on the other hand,
closing in the distance. Now we'll go for that revival onto 2 easy foreman. They will have that player back up. 2K Esports. Can they capitalize? This is the time for them. I mean, with only 2 players standing, they have now brought it back to the 2 players. I mean, 3 players. But unfortunately, BTR will be going for that. They'll be getting that revival done. And Federals. I thought he was going to get that, but unfortunately, he's going to get taken down. But the assist comes in, and Lele Boy will get taken down. So now 2K, the winners of the previous matchup, well, hit by the chicken scuzz. No, टीम वॉर के यहाँ पर उनके भी प्लेयर्स कुछ शायद से डाउन होते हैं हालांकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फीड के अंदर रेज को डाउन किया गया था एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी हैपनिंग अभी के लिए यहाँ पर टीम बीटीआर इन लोगों का सिचुएशन जो मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा खराब लग रहा था एंड खामियाजा से शायद से इन लोगों को भी यहाँ पे भुगतना पड़ सकता था बट मजीद प्लेयर्स अभी भी लॉबी के अंदर एंड देखते हैं किस नजाकत से यहाँ पर टीम बीटीआर अपने नाम को इस चिकन डिनर को करते हैं एंड लियोन बनेंगे यहाँ पर डोमिनेटर अभी के लिए इस लॉबी के एंड बीटीआर एज 3 एलिमिनेशन लेने के बाद में शायद से ओह नो टीम वॉर के दे आर एलिमिनेटेड पिछले मैच में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा खेलने के बाद टीम वॉर के यहाँ से होती हुई बाहर बट अभी के लिए यहाँ पर टीम बीटीआर 3 एलिमिनेशन लेने के बाद में यहाँ पर उस मैच में वर्कर करेंगे देखते हैं कौन सी टीम ऐसी रहेगी जो चिकन डिनर लेके जाएगी बट टीम फ्लैश यहाँ पर फाइट के अंदर आ चुकी है टीम फ्लैश दिस इज गोइंग टू बी अ रियल कॉशियस फाइट एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट रहेगी At the moment. All 4 players, no elimination whatsoever. As Pandem, they are gonna get taken down. What are you doing, punk? He just stood there casually and took down the players. I mean, with the help of Matic there coming in too, but regardless, that is a very quick play there and very quick elimination of Pandem as Flash and ASI8 now in a deadlock. Flash, they would love to increase that, the gap that they have, make that lead grow more. But we'll see. ASI8, can they help their fellow region? That is 4 tribes. Because now if ASI8 can take Team Flash down, then 4 tribes can still breathe easy. Because the lead is not going to increase. But if Flash gets ASI8, 4 tribes, they will be in trouble. Because once again, ASI8, I mean, they will have a decent position in the overall if they do get Flash and if they get more from there on forward. But there's no real chance that they can actually come out on top. With only 4 games left, including this one. That's true. And इसके साथ में टीम ब्लू कि यहाँ पर 2 खिलाड़ी लीड करते हुए 10 एलिमिनेशन लेने के बाद में यहाँ पर इस मैच में आगे तो बढ़ रहे हैं बट शायद से थर्ड पार्टी के सिनेरियोज यहाँ पर बीटीआर एंड ब्लू ई-स्पोर्ट्स के ऊपर कभी भी आ सकते हैं आई डोंट नो मैन आई हैव अ वाइब कि आसपास से शायद से कोई टीम रोटेट करके यहाँ पर फाइट के अंदर आ सकती है बट टीम ब्लू अभी के लिए 10 एलिमिनेशन लेने के बाद में इस मैच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी कमांडर पकड़ बना के जरूर चलेंगे बट लियोन जो डोमिनेशन का खिताब लेके गए थे डोमिनेशन का टाइटल लेके गए थे क्योंकि यहाँ पे शायद से 2 प्लेस डाउन हो चुके लियोन पीक किया बट सामने से कैंट की तरफ से बेहतरीन स्प्रेज आते हुए 10 eliminations for Glue as they will be left alone with the last man standing. Matic is on the run. He's trying to survive for as long as possible. Now they've already done their part in terms of elimination. Now the only part left is go for those position placement points, and he will get taken down. Unfortunate. That is, I mean, decent position for Glue. They'll take those 10 eliminations, but they would have loved a couple more position placement points. Unfortunately, that won't be coming in. Then BTR, they will lose Federals right now. They're taking the heat. Is that secret? No, it feels like it's Alter Ego Ares that are actually here. BTR Alter Ego, gotta be careful. They gotta be careful, that's true, but एक बारी आप positioning देखिए टीम फ्लैश की बोस he's in the center of the map एक छोटा सा कंपाउंड एंड शायद से होल्ड करके बैठे हुए ओपन रीजन के अंदर मैप पे टीम एसाइड ई-स्पोर्ट्स यहाँ पे बैकएंड से आ रहे हैं शायद से टीम एसाइड ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट भी फाइट हो सकती है और एंड ऑन द अदर हैंड वी कैन सी आरक्यू बूम ई-स्पोर्ट्स इनका क्लस्टर यहाँ पे बन रहा है और से ईगोस यहाँ पे गेट कीप करती हुई बूम बीटीआर को एक्चुअली
सो इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि गेट कीपिंग सिनेरियोज भी हैं. फ्लैश यहाँ पे सेंटर लेके जाएगी. अलायंसेस बिल्कुल चुप बैठी हुई है. दे लाइक हम लोग यहाँ पे फाइट नहीं लेंगे, आप लोग फाइट ले लो. वी आर हियर टू फोकस ऑन द पोजीशनिंग फाइट्स एंड द चिकन डिनर. बट व्हेन esports एंड अलायंसेस ये फाइट कभी भी नहीं शुरू हो सकती है. बट the one thing I'm super duper excited and interested to see it's team A side versus team Flash. यहाँ पर ये फाइट टीम फ्लैश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि अगर ए साइड esports के अगेंस्ट वो फाइट हारे सो दे आर गॉन. बट इस साइड टीम बीटीआर के अगेंस्ट टीम बहुत यूज कर रही थी. एडवांटेज यहाँ पे लेके जाएगा बट स्नेप के ऊपर बेहतरीन स्प्रे यहाँ पर आता हुआ F16 with 3x के साथ में नॉकआउट वहां पर लेके जाएंगे. स्नेप के ऊपर रिवाइव करना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. बूम के रैप शॉरी एंड सोनारा यहाँ पर फाइट लेते हुए 2K स्पोर्ट्स को वो आखिरी खिलाड़ी देखते क्या करता है. फेडलेस स्टैंडिंग यहाँ पर 2K स्पोर्ट्स को भी करते हुए बाहर लॉबी तक रास्ता को दिखाया गया. And now Boom Esports यहाँ पर रैप शॉरी is gone and यहाँ पर इनकी जो इक्वेशन है 4 मैन से 3 मैन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है. कुछ मोलोटॉव्स यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ से वहां से मोलोटॉव्स भी आएंगे. बट टीम RRQ एंड टीम बूम Esports इस फाइट के अंदर एडवांटेज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टीम फ्लैश एंड टीम अलायंसेस लेके जाएगी. उन लोग पास में एक बिटर एडवांटेज यहाँ पर रह सकता है क्योंकि इन फाइट्स के अंदर एलिमिनेशंस बहुत ही जल्दी आएंगे. देखिए आरआरक्यू के एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा. ज़्यूस यहाँ पर फाइट्स के अंदर आते हुए एंड खामियाजा शायद से टीम आरआरक्यू को भुगतना पड़ सकता है. बट टीम फ्लैश यहाँ पर हर एक सेकंड हर एक मिनट यहाँ पर टीम फ्लैश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर मजीद प्लेयर्स अभी भी लॉबी के अंदर. इन टीम्स एक बार देखिए 8 टीम्स यहाँ पर जिंदा लॉबी के अंदर एंड टीम फ्लैश कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट नहीं एंड अवॉइड किया है ड्रॉप फाइट्स को, अवॉइड किया है अर्ली एंगेजमेंट्स को एंड यहाँ पर आए हैं टिल द एंड ऑफ द लॉबी. 5वें जोन के अंदर यहाँ पर कर चुकी है टीम फ्लैश. या Team Flash, I mean, still holding on to their position. They did lose a player though. I don't really understand this game plan coming in from them. They're holding on to their area for so long. They tried something with bows there towards the end, towards the center of the circle, and it feels like now the question arises: is this a perfect time for you to? Is this a good time for you to even try something new? As RIQ, they will drop Boom and Federals is gone. All 3 areas are not done with the game yet. They're up to 8 eliminations now with 2 players standing, 1 bleeding. Boom might be the next in line as RIQ are putting the screws to them. Fire takes on Yemi and Boom. They will get taken down too. Last surviving player, where are you? That is a question that RIQ will be asking, and Mo has given away a position and Fire will be going down, but RIQ now with the man advantage clearly the one that should be coming out on top and will be the one coming out on top. Yeah, Boom getting taken down in 7th position. 1 elimination is all they get. They will stick to that position on 5th. Exactly, and now Team Flash यहाँ पर टॉप C कोई शायद से बाहर हो जाएंगे. एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अलायंसेस का कुछ खिलाड़ी यहाँ पर चिकन डिनर लेने का पूरा ट्राई करेंगे. एंड इसी के साथ में हम लोग यहाँ पे देख कोरिस क्राइस को सपोर्ट किया जाएगा. K2 यहाँ पे कुछ स्प्रेज लेते हुए कनेक्शंस पर बच्चे जरूर आएंगे बट इट्स नॉट इनफ टू गैदर द नॉकआउट राइट. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं साइड esports को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा. ये साइड esports के पास में कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट नहीं है. हालांकि यहाँ पर लोगों के पास में एक पॉइंट तो जरूर रहेगा. बट K2 इसी एफ के हाँ बिल्कुल बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे. बढ़िया है किसी ने स्प्रे नहीं लिया, ओपन के अंदर थे, वैसे नॉकआउट हो सकते थे वहां पे. SI8 4 players holding on. With just 1 elimination, I believe they're also just focusing on the position placement points, getting, waiting for those, playing for that circle fights as well towards the end. Flash already in the top 6, so they will get at least 1-2 points. So a lead is definitely going to increase between them and 4 tribes. Now, what is going to be the exact amount? We will have to wait and watch.
As of now, 3 players surviving, no eliminations, unfortunately, for the side of Team Flash. They're holding on to that positions at the moment. Tops is still the only one who went down. Why now, with 4 players coming in to the vicinity, they got to be careful. And Flash, they're also regrouping here. They will have to reload, recharge, get ready for this. As Alter Ego Airways feeling the heat as RQ, ones that are looking really dominant right now. As they took down Boom, are now taking down the players inside of Alter Ego Airways. One hits the deck, one gone out of the picture already. Alter Ego now only down to 1 player. With 8 eliminations into this, we thought they could get more, they could do more, but looks like the answer is going to be RRQ, as they are going to be stopped by them at the moment. And RRQ, they will lose 1, but in the midst of all that, they will eliminate Alter Ego Areas with 9 eliminations in position number 6, which means Flash are still alive here in top 5. That's the top 5 finish for them. जी हाँ बिल्कुल एंड ट्राई की कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स जरूर ले बट पोजीशन हिसाब से यहाँ पर ज्यादा खेलते हुए टीम फ्लैश टीम स्ट्रैटेजी पर इन लोगों के लिए एंड ये टाइप की स्ट्रैटेजी मेरी तरफ से नहीं देख एंड अभी देख सकते हैं टीम पर लोगों ने अब स्टेटमेंट पूरा चेंज कर दिया है राइट टीम फ्लैश बिल्कुल पैसिव देखिए फाइट लेने का बिल्कुल ट्राई नहीं किया है एंड ये लोग ट्राई करेंगे कंसिस्टेंसी दिखता है लास्ट तक यहाँ पर जिंदा रहे होल्ड करके रखे अपने सभी प्लेयर्स के साथ में और लास्ट में थर्ड पार्टी करके चिकन डिनर निकालने का ट्राई करेंगे अब स्ट्रीम को लाइक एंड सब्सक्राइब करो गाइस but let's see what's going to be happening is because we are witnessing 5 teams in the lobby SIT Sports के ट्रिप को कुछ अच्छा स्पॉट किया जाएगा टीम फ्लैश कब तक ये पैसिव अप्रोच रहेगी कब तक यहाँ पर फाइट नहीं लेंगे That is true. I kind of am waiting to see this too. I mean, is it going to be one of those games where Flash just just stays alive towards the end with 0 eliminations and then probably just get the chicken dinner with 1 or 2 towards the end? I mean, they will take it. That is still a major lead that they will build against the players on the side of 4 tries. So they will take it. But this grand finals is turning out to be one hell of a show here. I mean, we have so many teams showing up. It has not been like phase 1 grand finals, where we did see some of the teams just absolutely fall off. This one, not really. All of the teams are performing, and there's a really good chance the teams in the middle order could actually come out on top. Up until today, they had to do it in the first few matches. Now they didn't, and now we probably are looking at 5 to 6 teams still battling it out for the number 1 spot. Yeah, बिल्कुल and Wine Esports 3 पॉइंट्स लेने के बाद में यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाएगी टॉप 5 के अंदर वन ईस्पोर्ट्स एसआईडी ईस्पोर्ट्स आरक्यू एंड अलायंसेस यहाँ पे कुछ ऐसी टीम रहेंगी जो अभी भी जिंदा बट अभी के लिए हम लोग को पता है कि अलायंसेस एंड टीम फ्लैश 2 ही ऐसी टीम है जो पहले पेज पर है एंड मैं बोलूंगा यहाँ पर ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर टॉप 5 के अंदर यहाँ पर अपना स्पॉट बरकरार रखे रखेंगी बट क्या सिनेरियोस यहाँ पर रहेंगे वन ईस्पोर्ट्स के लिए क्या यहाँ पर किसी भी और टीम या फिर प्लेयर का यहाँ पर खेल खराब कर सकते हैं या फिर नहीं क्योंकि एच वी हैव सीन दीज टीम्स फ्रॉम द सेकंड पेज राइट they always ruin the game of the teams on the first page, right? And RK and SIT Esports यहाँ पे फाइट के अंदर आते हुए कुछ यहाँ पे ग्रेनेड्स दागे जा रहे हैं अगर अभी तक स्ट्रीम को लाइक और बिल्कुल बखूबी सब्सक्राइब तरीके से नहीं किया किया जा तो रहा है जल्दी से जाइए और लाइक और सब्सक्राइब करें Utilities are definitely being used in a good way, and a lot of these utilities also coming into play. As Crypto is going to get taken down, SIA, they will need to have the player up. Wine, RQ, Flash, Alliance, SI8 of course, and another beautiful grenade comes in, deals a bit of damage, but also Preetham gets taken down, and it's Flash who actually gets that, both with the QBZ, gets 1, so Flash now finally entering the fight. It was a long range finish. SI8 all of a sudden now on the verge of getting eliminated, 2 players surviving as RQ, then to the building, 3 players on their side. But Genforce might get dropped there, and beautiful grenade coming in from Myron. He's one of the key players for the side of SI8 along with K2, and both of them are still alive. So there's still hope for SI8, but RQ, they might overwhelm them with the numbers. But not at the moment, as Flash are still putting the screws. The third party is working out for them. Third party is working out for them. That is true. SIT Esports, they
K2 के साथ इस बार करेंगे स्पॉट यहाँ पे किया जाएगा बेहतरीन स्प्रे एंड K2 AUG की एक सिंगल मैगजीन के साथ में 1v3 और उसके साथ में मैं बोलूंगा जो प्लेयर्स थे सामने एकदम लाइन ऑफ साइड के अंदर आएंगे कोलैटरल्स हुए और AUG के साथ में बेहतरीन स्प्रे यहाँ पे एयर साइड ई स्पोर्ट्स आगे की तरफ है बढ़ती हुई ये जो ग्रेनेड है बेहतरीन है शायद से नॉकआउट लेकर जाएगा या फिर नहीं बट नहीं Jen Procedures barely surviving pieces से पे यहाँ पे शॉट्स आएंगे RRQ के प्लेयर्स यहाँ पर 3 लोगों के साथ में जिंदा टीम फ्लैश in local strategies it's working edge this is the thing I was talking about team flash यहाँ पर देखिए kills चुरा रहे kills steal कर रहे but close and aggressive fights नहीं लेना चाह रहे it's really genius it's really nice and देखिए from the back end Zeus कितना ज़्यादा लंबा नॉकआउट लेके गए and finish off किया जाएगा team flash this is totally genius right now and जिस तरीके से यहाँ पे पेस को चेंज किया गया है top notch अगर अभी तक स्ट्रीम को लाइक और All सब्सक्राइब of a नहीं किया तो sudden, जल्दी से that जाइए switch in लाइक और gas सब्सक्राइब is करें working out for Flash, and we were talking about it. Miramar is one of the best maps for Flash, if you ask me. And well, now there's only one more team. The last obstacle, the last hurdle here for the side of Team Flash are going to be Voin. But here's the thing that makes it a little harder is a Voin have 4 players. 4 players against 3 on the side of Flash, but Flash, they do have the momentum, they do have the confidence, they definitely do have the potential to take down 4 here. We've seen a 2v6, 2v7, so a 3v4 is nothing for a team like Flash, especially against Point at the moment, who's unfortunately having a very bad grand finals. That's Jace. He gets dropped down immediately, pulls it back to a 3v3 here now, Flash. Zyman's used really tagged up to avoid the perfect opportunity for them to close in the distance, but defense going to be caught. Man's down, Bo's out in the open, will be dropping him immediately. So he's down to a 2v3. Now Flash has the advantage. Potato 5, and I believe Foxy, is it? Is it Foxy? No, is it? No, it's Foxy. What? ये बिल्कुल इन वन esports के यहाँ पर शायद से आखिरी प्लेयर रहेंगे and Pereira 5 is the Solomon standing is gone the grenades the grenade is good No way, man. the grenade is good सीधा यहाँ पर वो grenade मुंह पर जाकर फटेगा और इसी के साथ में यहाँ पर टीम फ्लैश एक और चिकन डिनर लेते हुए and the gap man the gap team 4 tribes it's gonna stink man because जो अगर अभी तक गैप है स्ट्रीम को और लाइक टीम और फोर्स एंड सब्सक्राइब टीम नहीं फ्लैश के किया बीच तो में जल्दी बहुत से ही जाइए ज्यादा लाइक लंबा और हो जाएगा सब्सक्राइब करें गाइस That is true. I mean, it was 0 for a really long time, and then Flash did survive this game. But 4 tribes did get taken down. Flash not just survived; they thrived. They came out the ones victorious towards the end, and with plenty of eliminations there too. I believe 11 was the end. The 3v4 they didn't lose a single player, which was absolutely bonkers. Yep. I mean, insane level of performance, man. The consistency today, Team Flash is showing is just really great. DRS right now. Team Secrets के against यहाँ पे fight ले रही थी असल में दिन पे तो उन पे alliances के यहाँ पर एक बेहतरीन मैं बोलूँगा third party T2 के esports के ऊपर यहाँ पर acquire किया गया था and DRS को भी eliminate किया गया था and alliances it was a really great third party in my opinion and I guess alliances ऐसे ही खेलेंगे तो शायद से runner up का spot अपना बिल्कुल लेके जा सकते हैं शायद से top 3 के अंदर भी है अभी but alliances एक चिकन डिनर तो आज के दिन के अंदर बनता है Probably. I mean, I'm hoping to see some amazing gameplay coming in from Alliance too, but we'll have to wait and watch if that is going to be the case. At the moment, Flash is going to be the talk of the town, and how is 4 Tribes going to be performing in the last circle of the 3 maps? That is going to be the most important question we'll be asking. And as you said, the next one definitely is going to be seeing, witnessing Alliance. If they can get some chicken dinners here, those chicken dinners yesterday were ridiculous. They kind of need something similar to that to get that number 1 spot right now. It's not about number 2, number 3, number 4, or 5 anymore. It's not about top 5. It's about the top position. That's it. This is the grand final. This is the day number 4, last day before we crown 3 more maps before we crown the champion. 3 more chances for the teams. 3 more games Flash has to defend. But if they keep playing like this, well, this defense is going to be flawless.
Absolutely, this defense will be flawless. But let's just have a look on the team stats, on the winning team stats, because we can see Team Flash will be taking this winner chicken dinner. And Bose, he all did was taking those duels from the backends, right? All he did was those third party, and still he capitalized it insanely, man. I mean, this is really good. My Team Flash, kudos to the team, man. They are consistent, and these matches are yet another some matches for them. They're playing really well. They're having 10 elimination with a chicken dinner, 20 points now. Ridiculous performance coming in. And we'll wait and see the distance and the gap that they have now attained after getting that. But the top four players, Bose now is going to be the MVP of the match with 6 eliminations and 1051 damage dealt. Matic on the side of Glue with 4 eliminations, 765 damage dealt. BTR Kent with 4 eliminations and 684 damage dealt there. Bany on the side of Alter Ares, well, he was also unstoppable. Alter Ares, they were so dominant. Well, a couple of these matches, they were the ones who took down the squad of 4 Tribes Guys, 2, and अगर that अभी was तक the लाइक और key. सब्सक्राइब नहीं That was किए a तो very जल्द चाहिए लाइक और important सब्सक्राइब करें elimination that they needed for themselves and for Flash as well, as a matter of fact. And Tribes, 4 Tribes, they're definitely not going to be happy with that. But teams to watch for Team Flash getting taken down with 10 eliminations. Glue Blue going down with 10. Actually, Flash didn't get taken down. My apologies there. Flash surviving with 10 eliminations. They're going to be a team to watch for sure. Glue getting taken down by 10 eliminations. RIQ with 8. Alter with 9. All of these teams are someone you need to check out in the next few matches, as we will head down to Rondo, Erangel, and Miramar again. Let's see how these teams perform in the last cycle here in the Grand Finals. Yeah, that's exactly the thing we are talking of, and how they are going to perform in the, next upcoming match of Rondo. It's going to be a thing to witness. But Edge, let's just have a look on the match summary, because 69 total elimination, 2 printed eliminations, and longest elimination is coming in from the side of Wine Esports. So this was a typical match summary, but the match rankings, the changes there will be immense. गाइस लाइक और सब्सक्राइब करें लाजिमी That is true. It is going to be some good changes coming through. We'll have to wait and watch how big of a difference are we making. We're talking about. Here we have the match rankings: 10 elimination for Flash, 20 total points. IQ on 13, 11 for Alter Ego Ares, Wine on 10, Glue Blug on 10 points, 2 ASI 8 on 7, 6 for Alliance, 6 for BTR, 5 for DRS, Pandem on 4, T2K on 3, 2 for Boom, 1 for 52 Esports, T Secret, the Xavier, 2K Esports, and unfortunately, I don't think I remember when was the last time I saw 4 Tribes with no points, but they are here with 0 points, and Warguy with 0 points into this match as well. Yes, exactly. The match rankings, it is just typically like that. And let's just have a look on the overall rankings. And यहाँ पर overall rankings के अंदर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम फ्लैश लेके जाएगी बेहतरीन तरीके से, एंड पहला थ्रेशोल्ड वो लोग क्रॉस करते हुए 200 पॉइंटर्स का 210 पॉइंट्स यहाँ पर अभी के लिए 30 से ज्यादा ये जो डिफरेंस यहाँ पर बन चुका है एज, एंड ये जो डिफरेंस यहाँ पर लेके जा रही है टीम फ्लैशेस. हालांकि अगर ऐसे ही खेलते रहे सो मैं बोल सकता हूँ नेक्स्ट मैच के अंदर यहाँ पर नेक्स्ट मैच ही क्या इस फेज के अंदर यहाँ पर शायद से दोबारा से विजेता बन सकते हैं एज. द थिंग इज दैट टीम 4 Tribes, they they need to make sure eliminate Team Flash in the next match, then take that chicken dinner. It's going to be really hard, but It's not going to be easy for sure. 33 points difference now coming in between that spot. But look at all three guys; they're on 164 points, and all of them are well attained without a chicken dinner. That is incredible performance coming in from the side of all three Guerreros. You got to give credit to that. Consistency with what these players are playing is amazing, and I really love. I would love to see them contest for that number 1, number 2 spot more and more. As there's 8 and 10th position, D Xavier on 11, Team Secret on 12, 13 position for 52 Esports, Warguy on 14, DRS on 15, Glue Blue on 16, along with T2K on 17, and Wine. Nothing's going in their favor this time. Unfortunately, in 18th position, the last fight against Flash, even though they did have the man advantage, they kind of
played it wrong, I guess. Yeah, that's true. And the teams on the second page, यहाँ से शायद से एक comeback दिखाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है. And I don't think so. It's gonna be easy, man. Like यहाँ से comeback करना, it's next to impossible kind of thing, Edge. That is true. I mean, it's close to impossible, but it's definitely gonna be something to rejoice and something to look out for. Maybe, I guess, if it happens. It's going to be amazing if it does, though. But yeah, win is going to be the overall MVP still, leading the charts with the 10,000 plus damage and 49 eliminations, 44 knockouts. Rosemary also crossing that 10,000 damage dealt with 46 eliminations, 52 knockouts. Bose, on the other hand, 33 eliminations, 34 for Zeus and 34 for IQ Fire. And now Zeus stepping up towards the fourth position. Bose in third. IQ Firen is the only one whose F has been knocked out from the overall MVP. It's all about Flash at the moment, and they are living up to the expectations coming in from phase one. They are living up to the expectations in the mark, that is for sure. And FL win and Rosemary, it's just insane, man. Insane level of performance. But let's just have a look at the head-to-head as well, because FL win and Rosemary, it is insane. Look how close it is. Average survival and that to the damage as well. And headshots, just a difference of 3, and throwable use from side of win is just 168. He is a war machine right now. The head-to-head is always going to be fun. Looking forward to see more of that as the day progresses. We do have the votes coming in from you guys watching us on YouTube. Both Drive DRS, the fans just insane. Both these teams, they always get that love. But here's the thing. आज का पाकिस्तान सब कुछ घर बैठे ही ऑर्डर करता है, तो सिम क्यों नहीं? Onyx SIM आती है. Just coming in, it is going to be. It's going to be just the support and love that you guys will be, giving forward to these players and these teams. So I guess the fans are going to be taking it a little easy this time in the chat section, but we still see you, boys. We still see you, talking about every team, talking about all the moves that they play, and your love and support. Well, they don't go unnoticed by us or by the teams. That's true. So keep on supporting the teams. Keep on supporting your favorite players out there. And एक बारी नजर हम लोग यहाँ पे डालेंगे giveaway winner के ऊपर, and देखते हैं यहाँ पर कौन लेके जाएगा giveaway नेक्स्ट इस वाले मैच का. देखिए मेरा मार्का. इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 और गिवअवेज भी बाकी हैं. अगर आप लोगों ने गिवअवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, सो जल्दी से आके गिवअवे में पार्टिसिपेट करिए. एंड कांग्रेचुलेशंस टू दैट प्लेयर जो गिवअवे जीते हैं. आपको मिला है एक एलीट रॉयल पास. तो जल्दी से जाके एक बारी इस का यहाँ पर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए जो भी गिवअवे का विजेता है, एंड एक बारी 141 esports के ऑफिशियल इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करिए एंड क्लेम योर गिवअवे नाउ. एंड द ऑडियंस वंडरिंग कि आप लोग भी कैसे गिवअवे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गिवअवे के अंदर एलीट रॉयल पास जीत सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टाइप एक्सक्लेमेशन मार्क गिवअवे इनटू द कमेंट सेक्शन, या फिर आप लोग को एक पिन कमेंट मिल जाएगा नाइटबॉट की तरफ से. नाइटबॉट का एक जो पिन है वहां पर कमेंट में पिन किया गया है यहाँ पर. सो उसके ऊपर जाएं, टैप करें, टैप ऑन द लिंक. आप लोगों के ऊपर एक वेबसाइट ओपन होगी. वेबसाइट के ऊपर एक इमेज होगी. इमेज पर ही एक क्वेश्चन होगा. फिर इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है. देन टैप ऑन दैट इमेज. फिर एक नई स्क्रीन आप लोगों के जो सामने ओपन होगी. उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने आंसर के साथ में रियल नेम विद पबजी मोबाइल कैरेक्टर आईडी टाइप करके एक बार वो कमेंट पोस्ट कर दोगे. सो दैट्स ऑल. आप लोग यहाँ पर इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो गिवअवेज के अंदर. सो इट्स रियली इजी. सो अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे गिवअवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, गो राइट नाउ एंड पार्टिसिपेट इन ऑल दीज गिवअवेज, क्योंकि फ्री है, कोई भी यहाँ पर फीस नहीं लग रही है. सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? यहाँ पर अभी जाइए और गिवअवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए मैच स्टार्ट होने से पहले ही. Be more winners, so you guys still have a chance. 3 more tries, hopefully, and you will be lucky winner. I mean, there's only one way to find out, and for that way is for you to take part in the giveaway. So, well, the instructions Inferno already told you, so it's pretty easy. Hopefully you will be coming in.
and getting that chance for the towards the Royal Pass, the elite Royal Pass. Now with 3 games done, 3 more winners, 3 more chicken dinners. What do you think? Which That's team? true. I mean, man, please do not ask. I just don't want to give any sort of causes Fine. because I've been supporting. Let me flip the Go question on. then. What about a repeated winner? Yeah, that could be the case, but I just don't want to see the repeated winner. I just want more and more. What we can say? Masala, spices. I just want that competition going in. So I just don't want to see that repetitive winners. I mean, no hard feelings for Team Flash, but I want to see some different team just jumping in and winning it. Well, let's see if that is going to be the case. Let's see if any of the teams that have already gotten themselves a chicken dinner in the previous match, so will they be performing well? There's only one way to find out, and we will be jumping in once again. The last cycle here in the map rotation. Rondo again. Let's see if Fortress can pull off another incredible game, and then Wrangle. All eyes are definitely going to be on Forthright to see how many points they can accumulate in that one. And then Flash on the map of Miramar. They will have one more opportunity. But in the midst of all this, make sure to keep an eye on Alliance and all 3 Guerreras. Both of these, I feel like, might give us a surprise. They might give us a surprise. That is for sure. 8. Alter Ego Aries. Anytime sooner they can actually make that chicken dinner happen. But now, it's gonna be the thing to have a look on the map rotation. And map rotation is gonna be important. Because we do know कि अगले मैचेस यहाँ पर कौन से होने जा रहे हैं. It's gonna be Rondo. उसके बाद हम लोग यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा रैंगल का मुकाबला दोबारा से, और जो आखिरी मुकाबला रहेगा वो रहेगा यहाँ पर हमारा मेरा मार का. बट यहाँ पर एज वी आर डन विद दीज मैचेस, एंड आज के भी मैचेस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन. एंड लेट्स जस्ट कम टू दिस प्रीटी डेस्क, राइट. बट द नेक्स्ट मैच ये जो रहेगा राउंडो का मुकाबला, देखते हैं यहाँ पर कौन सी टीम लेके जाएगी चिकन डिनर. And एक बारी audience से मैं पूछना चाहूँगा, how you guys are feeling today? How's the Josh in the comment section? Please do let us know and keep on spamming those hearts and fire emojis if you guys want to show how energetic you are today. And बताना आप लोगों को क्या लगता है कि इस phase second के अंदर Team Flash एक repetitive chicken dinner ले पाती है या फिर नहीं. Chicken dinner भी क्या मैं बोलूँगा आज, can they actually claim the title again phase second के अंदर? So जल्दी से आके हम लोगों को comment section के अंदर बताइए and show your energy while spamming those hearts and I mean I'd say fire emojis. But अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर गिव अवे के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्दी से आके जाइए, गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए, एंड यू गाइस हैव चांस टू विन अ रॉयल पास एंड दैट टू एन एलीट रॉयल पास. तो चाहिए जल्दी से आके यहाँ पर अभी जाके पार्टिसिपेट करिए. एंड उसके बाद में यहाँ पर हम रोंडो का मुकाबला बहुत ही जल्द देखेंगे. सॉरी फॉर द स्मॉल डिले इन कमिंग, बट I mean, if you guys are excited, I'm excited as well. देखते हैं आज कौन सी टीम यहाँ पर चिकन डिनर लेके जाएगी नेक्स्ट मैच के अंदर. बट टीम फ्लैश, दैट गैप, it is getting extended even more and more, right? Because previous मैच के अंदर चिकन डिनर लेना, उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने एक कंसिस्टेंसी के साथ में यहाँ पर अच्छे तरीके से एलिमिनेशन पॉइंट्स भी लिए. सो it's just insane कि यहाँ पर टीम फ्लैश इस कंसिस्टेंसी के साथ खेल रही है, and टीम 4 thrives. The things are not looking good for them. Yeah, I mean, we were talking about, you know, how this might not have been a decent time for them like and subscribe to try out a new strategy, but I feel like it worked out towards the end, coming in on the map of Miramar here. DRS, on the other hand, they started off really strong, but unfortunately this wasn't enough. Now teams like Alliance, all 3 goes there, going down towards the end as well, of course. I mean, they've already gotten their fair share of eliminations is what I felt like. But Alliance getting taken down pretty early into these games is not what I was expecting, especially after the performance coming in yesterday, right? I mean, all of these 3 games,
they didn't really do that much. So hopefully, the last three maps here into the map rotation, hopefully we get to see more of Alliance, and hopefully they will also be one of the contenders. They were a contender. Do not get me wrong. They were a contender up until 3 matches ago, and then these 3 matches it changed the fate of 2 and 3. Now the only thing that matters is the 1 on the top, and the 1 is Flash. Yeah, that one, it's gonna be Flash, maybe not, but Team 4 Thrives, they're lurking into the shadows, and they will try to eliminate Team Flash. And next match for Team 4 Thrives and Team Flash, ये दोनों ही टीम्स के लिए यहाँ पर आगे आने वाला मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, एंड डिसाइड करेगा यहाँ पर कौन विजेता बनेगा इस फेज सेकंड का, एंड कौन यहाँ पर इस टाइटल को अपने नाम करेगा, एंड which team it's going to claim the worst, right? क्योंकि फेज फर्स्ट यहाँ पर और भी ज्यादा बेहतरीन था, बट फेज सेकंड में बोलूंगा यहाँ पर और भी ज्यादा मैं बेटर बोल सकता हूँ, क्योंकि टीम फ्लैश एंड टीम 4 थ्राइव से जो राइवलरी देखने को मिल रही है, इट इज एक्चुअली एडिंग मच मोर स्पाइस into the fights, and especially यहाँ पर alliances, right? They are also putting up a great show for us and the audience as well. And alliances, I mean, it's hell of a fight, man. Alliances, they are fighting through all the odds now. Yeah, that is true. I mean, Alliance are trying their best. But one more team, you gotta feel bad for. Apart from DRS, I mean, DRS definitely feels like disappointing performance coming in overall. I mean, especially since they are one of the fan favorite teams. But the other team that I was going to talk about is BTR, the champions of Chapter 2. Did not make it to the grand finals in Phase 1. Now going into Phase 2, so close, but feels like they're still so very far. Yeah, so close, but yet too far. It's gonna be the case scenario for some of the teams. So let's see, next match it's gonna be Rondo, and Rondo के मुकाबले के ऊपर देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पर चिकन डिनर लेके जाएगी. देखिए, रोंडो का मुकाबला यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है टीम फ्लैश और हालांकि टीम 4 थ्राइव्स के लिए भी. हम लोग यहाँ पर बार-बार इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही टीम्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन खेल रही है, राइट? बट द थिंग इज कंसिस्टेंसी. टीम फ्लैश, they are putting up a great show, but टीम 4 थ्राइव्स कहीं ना कहीं यहाँ पर वो थोड़ा बहुत पिछले 2 मैचेस में ज्यादा ही जोक किए थे. रैंगल के ऊपर भी मैं बोलूंगा डिसेंटली यहाँ पर अच्छे तरीके से रोटेट किया था, बट टीम वॉरगे के अगेंस्ट जब हम लोगों की फाइट इनिशिएट हुई थी तब वो मैं बोलूंगा कैपिटलाइजेशन नहीं आ पाया था. फिर उसके बाद में यहाँ पर रोंडो का मुकाबला तो शुरू हो ही चुका है. मेरा मार के मुकाबले में वो जो फुल फाइट्स थी, वो जो फुल बैटल्स थी, उसके ऊपर वहाँ पर कैपिटलाइजेशन नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से ऑलरेडी उसके अगेंस्ट वहाँ पर पहली ही फाइट के अंदर डाउन हुए. एंड मैं बोलूँगा जिस तरीके से यहाँ पर टीम फ्लैश ने अपना पेस चेंज किया था, टीम 4 थ्राइव्स को भी शायद से हो सकते थे अपना पेस चेंज करते हैं थोड़ा बहुत वेल प्रिपेयर्ड, मैं बोलता हूँ वहाँ पर वो लग सकते थे. बट टीम 4 थ्राइव्स लेट्स सी यहाँ पर अभी के लिए क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उन लोगों का जो ड्रॉप लोकेशन है टेस्ट ट्रैक और न्यूयॉर्क फैक्ट्री, वो इस फ्लाइट रूट में आता हुआ, और कभी भी यहाँ पे जो फाइट इनिशिएट हो सकती है. एंड ड्रॉप लोकेशंस के ऊपर यहाँ पर फाइट जो है बहुत ही जल्द यहाँ पर हो सकती है. बट अभी के लिए मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर टीम 4 थ्राइव्स व्हाट दे आर पैक्ड, क्या यहाँ पर एक्शन दिखा सकते हैं एंड 4v4 बैटल्स के अंदर न्यूयॉर्क फैक्ट्री के ऊपर यहाँ पर जीत पाएंगे या फिर देखिए, क्योंकि न्यूयॉर्क फैक्ट्री में इस तरीके से फाइट्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा इंसेन होती हैं एंड स्पेशली ट्राई करते हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स लेने का. एंड जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर टीम 4 थ्राइव्स फाइट लेगी. अलायंसेस भी यहाँ पर आसपास में ही आ चुकी है, उन लोगों की फाइट्स यहाँ पर कभी भी स्टार्ट हो सकती हैं. Just have a look what's going to be happening. हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं टीम 4 थ्राइव्स उतरते हुए IQQ, that is a really cute looking parachute skin. मेरे को एक बार नाम बताना इस पैराशूट की स्किन का नाम क्या था, बट दैट इज अ वेरी क्यूट लुकिंग पैराशूट स्किन. IQQ, nice choice, brother. But let's just have a look on Team 4 Thrives edge, because Team 4 Thrives is coming up in the fight, and it's going to be BTR versus Team 4 Thrives in a 4v4 battle. Towards New York Factory too. Now this is the region that 4 Thrives are known for, and if 4 Thrives get taken down pretty early once again into the game, things are going to be very, very hard for them, because the next maps are going to be Wrangler and Miramar to end things off. At the moment, 4 Thrives, Huzaifa bleeding. IQQ will be cooking up a grenade, holding on.
But now, as RQ, they'll be getting some more points. Yeah, and Team 4 Thrives यहाँ पर elimination points नहीं है, and Huzaifa, he is just bleeding off. Revival यहाँ पर आना चाहिए, and इसी के साथ में Team 4 Thrives 0 elimination points उन लोग के पास में रहेंगे, but Team Secrets अभी के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जेरस एंड जू के बहुत ज़्यादा गंदे सिनेरियोज के अंदर देखने को मिलेंगे. टीम सीक्रेट्स के पास में कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट नहीं है. दे आर स्ट्रगलिंग ऑन द सेकंड spot and Juki, he is the solo man standing, and I guess ये Indonesian team, ये जो Vietnamese team है especially, they are on the verge of getting eliminated. Juki, he's really low with the HP, हाथ में रहेगी सिर्फ और सिर्फ कुछ bandages to work with, and Lapper को यहाँ पर डाउन किया जाएगा. Team Secrets Bany sports के against two Indonesian teams और एक यहाँ पर हम लोग देखने को मिल रही Vietnamese team. This is looking good for them. Let's see यहाँ पर कौन इस फाइट को कैपिटलाइज करता है. 3 elimination points यहाँ पर टीम आ रहा है क्योंकि हाथ में one player bleeding, and that's Lapper, and he is on the verge of getting a revival, if I'm not wrong. But what a grenade! They're now coming in. Wine. They will get the player back up, but regardless, that is another point for the side of RIQ. And look at Falak there. Ferrell's just casually dropped him down. And now 4 Tribe with no elimination. They are giving away the positions though, and they're giving away points like it's candy at the moment. PTR are putting the screws to the players on the side of 4 Tribe. Now T24 the only one standing. Wait a second. This might turn out to be another disastrous of a map. But it's not over yet. But BTR will be happy with this start. Even though one player is bleeding, they will be looking forward to 3 elimination points pretty early. As RQ now closes the distance between them and Point. Jace gets one, but immediately the overwhelming numbers comes into play as RQ. They look good for 6 eliminations. This is looking good, but Team 4 Tribes वहाँ पर वो जो आखिरी player है क्या यहाँ पे scenarios लेके आएंगे देखने वाली चीज रहेगी क्योंकि Team 4 Tribes this is not a great and decent start. शुरुआत में ही यहाँ पर उन्होंने 3 players को खोया और शायद से खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा. अभी भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बहुत सारी टीम्स मौजूद प्लेयर्स यहाँ पर लॉबी के अंदर जिंदा 65 यहाँ पर प्लेयर्स जिंदा रहेंगे एंड यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए एजेंट 47 ही इज वन ऑफ अ ग्रेट मैन बट वो जो स्टन ग्रेनेड था प्रीतम की तरफ से बहुत ही परफेक्ट डाउन यहाँ पे किया जाएगा एसाइड ई-स्पोर्ट्स वर्सेस टीम 52 ई-स्पोर्ट्स. इसी के साथ में यहाँ पर उनके पास में रहेंगे 3 players and 2 eliminations. But what's going to be the case scenario is because Team 52 they lost Agent 47. क्या यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं अपने प्लेयर को? Recall is going to be important. I'm still looking forward for T24's recall. 4 Tribes, they're still not really up for players. And Team Secret, Zera's disconnected, but they will also need to wait for that recall. These recalls are going to be coming in, and they need to come in quick too. Esports, on the other hand, yeah, I mean, their positioning on the overall is decent, but against ASI8, you got to be a little careful in that, fellas. There you go, Crypto. He does nothing. He just stood there and waited for the perfect opportunity, and now cooking up a grenade. This is going to be amazing. Can he cook it up right to perfection? He can. Oh my lord, the timing is perfect, and it's a beautiful play coming in from Crypto and ASI8. They'll be happy with too. But 52 Esports, on the other hand, they will lose too, but they can still go for the recall, so nothing to worry about. But ASI8, 3 eliminations now. Slowly, they're also picking up the pace towards the 150 mark at the moment. 128 is what they're standing on, thanks to the 3 points that they got. But on the overall, when we compare them to the number 1 spot, they're a little too far away, unfortunately. Yes, and Team 4 Tribes यहाँ पर T24 OP सोलोमन स्टैंडिंग यहाँ पर रहेंगे रिकॉल टावर के यहाँ पर पास जाते हुए T2 के ई-स्पोर्ट्स की भी टीम यहाँ पर शायद इनका पीछा करेंगे. दिक्कत यहाँ पर बहुत ज्यादा बन सकती है. देखो रियली केयरफुल स्पॉट यहाँ पर क्लियर किया जाएगा. शॉट्स यहाँ पर T24 OP के ऊपर आते हुए नो ही नीड्स टू रिकॉल और इस यहाँ पर Team 4 Tribes the game is going to get finished anytime soon. And Team Auto Egos dethrone करेंगे यहाँ पर alliances को and यहाँ पर आएंगे तीसरे स्पॉट के ऊपर alliances. This is not looking good. And Team 4 Tribes सोलोमन स्टैंडिंग के साथ में यहाँ पर उन लोग शायद से जो गेम है वो फिनिश ऑफ कभी भी हो सकता है. T2K, on the other hand, a team
that usually does manage to get themselves few chicken dinners here and there, but right now, if it just doesn't feel like both the Nepali teams are struggling. Right, it feels like DRS is unfortunately not having a good phase two grand. In the phase one, it was Hora, who only had one decent game, one great game, to be honest. That was the last map of the grand finals. Unfortunately, this time we don't have Hora Esports, but we do have T2K coming in. And T2K, not a great playoff phase one and grand finals. And talking about phase two, playoffs, they were very good. They were very, very good. They were giving us more hope going into the grand finals, but unfortunately, they will not be performing as well as they would have expected to. Well, live stream, I'm pretty sure the fans are not going to be happy with this performance, but it is what it is. The same thing could be said about ERS, but I'm not really sure what's going on with them. As they will be able to take down one of the players inside of Alliance at the moment. 3 elimination points for themselves. Alliance, they don't have any points going into this, but for now, they're holding on to their position. Flash with 4 players alive, no eliminations. 4 Tribes with 1 player alive and no eliminations. All 3 go with 2 eliminations, 4 players alive. Alliance with no elimination, but 4 players alive too. The 1 player that went down will be immediately gotten back up to his feet. So everyone is probably just gonna be looking to see if they can accumulate as many points as possible. Getting the chicken dinner is the easiest way to get the 10 points for sure. Yes, but since it's Rondo, I think going a little aggressive towards the start is probably ideal and usually advantageous to the team that actually does succeed in doing so. So we'll have to wait and watch if Flash will be adapting to that tactic they usually do towards the mid of the game, stage 3, stage 4 circle maybe. But 4 Tribes on the other hand, they usually are the ones going really aggressive, and usually 99% of the times it does work out. But 1% that it doesn't work out is a 1% right now. T24, the only one standing, no real recall still. As we take a look at Flash right now, still holding on to their ground. BTR, the one team that was the culprit to take down the players on the side of 4 Tribes towards New York's factory. Now, might be looking to take down Flash, but they will just be passing in the vicinity. They will not be holding on to their ground. Flash. We'll talk about that in a second, but Wine, they will be getting themselves another point there thanks to Poxy 5 getting taken down. Getting the fry, onto Kent who got taken down there. And Federals will be immediately going for that recall towards New York's factory too, which is kind of surprising because I did think I never thought the T24 would actually leave that area. I thought it was just waiting for the perfect opportunity, but it looks like 4 Tribes will also be back with 4 players, so this game is still on. But Flash in the meanwhile, looks like it's time for them to get on too. They have 1 elimination pretty early. For them it's pretty early. Yes, it's 10.5 minutes, but it's still pretty early for them if you ask me. Also, Garish on the other hand, they will lose Snape leading right now with 3 eliminations for his name. They probably would want him to survive a little longer, but the elimination immediately comes in too, so Gore will be able to capitalize, get 1 immediately for themselves. He's coming up with a fight, and man, oh man, इनको भी अपना किया जाएगा. Duo man standing up, all 3 goals. ये 3 एलिमिनेशन लेने के बाद में यहाँ पर बानी 5 जिंदा तो है, पर यहाँ पर है ये एक्स्ट्रा के हाथ में, एंड शायद से रिकॉल भी कर दिया जाएगा प्लेयर्स को. ऑल 3 गोल्स अपने यहाँ पर पैरों पर दोबारा से खिलाड़ी यहाँ पर खड़े हो जाएंगे. प्लेयर्स यहाँ पर आ जाएंगे. 4 प्लेयर्स को रिकॉल तो जरूर कर दिया गया है, पर एसाइड ही स्पोर्ट्स दे आर गॉन एंड एलिमिनेशन यहाँ पर उनका भी आएगा. बट all 3 goes ध्यान देता है, पर पीछे आते हुए रिटेलिएशंस आ रहे हैं. अलायंसेस के प्लेयर्स को देखिए, ये फाइट यहाँ पे दोनों ही टीम्स के बीच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पॉट के लिए यहाँ पे फाइट चलती हुई. अलायंसेस का वो आखिरी प्लेयर कैसे डाउन हो सकता है, एंड अलायंसेस दिस इज नॉट गुड फॉर देम. द रिटेलिएशन टीम ऑल 3 goes दिखाते हुए एज. There you go. They will be the ones taking down Alliance in position number 17, and Alliance is just
not picking up the pace. They have never found the groove. That's all I'm gonna say. They have never found the groove today. They've done very well yesterday to come up to the top 3 situation, but today it has just been a disaster for them. Alliance is not going to be happy with this. Yeah, I mean, Alliances. It's been a massacre of a day, if you ask me. Team 52 यहाँ पर 7 एलिमिनेशन इन लोग के पास में है एंड 2 मैं बोलूँगा प्लेयर्स इन लोग जा चुके हैं खामियाजा शायद से थोड़ा बहुत भुगतना पड़ सकता है बट टीम फ्लैश वॉर गे के अगेंस्ट यहाँ पर फाइट के अंदर आते हुए स्पॉट यहाँ पे प्लेयर्स को कर लिया तो गया है एंड रोटेशन क्लैश के अंदर यहाँ पे जो फाइट स्टार्ट हो चुकी है इनिशियली आप देखने को मिल जाएगी टीम बूम ई स्पोर्ट्स टीम फ्लैश अभी के लिए यहाँ पर सैंडविच सिचुएशन के अंदर आ सकती है अगर टीम वॉर गए ट्राई करें आएंगे बिल्कुल जी हाँ या टीम वॉर गए आएंगे फाइट लेने का बिल्कुल ट्राई करेंगे आएंगे मौला उन्होंने हो चुके डाउन यहाँ पर कर दिया सेकंड टीम फ्लैश इज लाइक थैंक यू टू कम अप एंड स्लैम इट डायरेक्टली ऑन अस क्योंकि शायद से कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स बनेंगे जी हाँ बिल्कुल सोलोमन स्टार्टिंग टीम वॉर के जिंदा रहेंगे 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर इन लोगों के पास में आते हुए Great opportunity that was for Flash, and they will take it. They will not deny free eliminations when handed. And this just builds up the lead and the momentum that they already have going in their favor, right? I mean, it's not going to be something unexpected coming in from them for sure. We all know how good they are. We all have seen how they are performing in the last few matches as well. But the side of Boom right now, as we divert her attention. Might be looking to take down the player on the side of Pandem first before we head down to fight against Flash if it actually comes into play. Like और subscribe करो. In the vicinity, they're holding on to their position. Pandem, I believe they will lose a player there. And it's not going to be because of Boom, it's going to be because of Flash. The Flash, that's another point for them. And they'll be happy with this start. जी हाँ बिल्कुल एंड टीम फ्लैश के Zeus डोमिनेशन का खिताब लेते हुए टाइटल इस मैच के अंदर लेके जाएंगे टीम 4 थ्रेड्स 2 एलिमिनेशन लेने के बाद में हुज़ैफा डाउन हो चुका उनका रिकॉल हालांकि हो सकता है T24 ओपी को भी यहाँ पर नॉकआउट किया जाएगा एंड इसको तो टीम RQ वर्सेस टीम 4 थ्रेड्स एंड यहाँ पर रिटेलिएशन आएगा पेंगुइन यानी एके फलक को भी डाउन यहाँ पे किया जाएगा टीम 4 थ्रेड्स आगे की तरफ बढ़ते हुए IQ की तो सोलमन स्टैंडिंग एंड he is gone team 4 threads is gone from the match and alter egos के लिए पे एक अपॉर्चुनिटी but team 4 threads अभी के लिए it was blender of a match and team Flash they also have an opening to maybe take this second phase into their hands. How is this happening? Why is this happening? For 4 tries, things were looking so good. And now everything's just going wrong. RQ, on the other hand, catches a player off guard. Pandem, I'm pretty sure they had, a little bit of hope there to maybe go for the revival and go for the recall and immediately get the player back up. But unfortunately, that hope has been snatched away by the player on the side of RQ. They will eliminate Pandem and RQ will be up to 11 eliminations now. A 60-minute mark will be coming in. We're down to 13 teams and 42 players. That's 2K. We'll be losing 1 player. That's Hulk actually hitting the deck and getting taken down immediately. I believe there is still some time for the recall to come in. So there is still hope for these players to actually come alive on the side of Team Secret, 52, Glue, Blue, DRS, T2K, as well as BTR and 2K. But we'll have to wait and watch if that recall will be coming in. Will it be allowed? Will the other teams let them go for it? That is the question. Because now the circle's small, which means limited areas where you have the recall available. जी हाँ बिल्कुल ग्रेनेड्स यहाँ पर आते हुए एंड वन ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी BTR के अगेंस्ट यहाँ पर फाइट लेंगे एंड BTR दे आर गोइंग टू डायरेक्टली स्लैम द वन ई स्पोर्ट्स परेरो यहाँ पर है तो सही शायद से प्लेयर्स को स्पॉट किया जाएगा एक लो टॉस करने के बाद डाली गई परेरो को नॉकआउट यहाँ पर एंड वन ई स्पोर्ट्स विल बी बाहर इस गेम से बट BTR वे कॉट इन द ओपन सिनेरियो जोन के अंदर जाने का बिल्कुल ट्राई तो करें अपनी क्लास के साथ US के साथ में बट देखते शायद से बंदे 2 के ई स्पोर्ट्स के इग्निस को यहाँ पर डाउन किया जाएगा जया एंड वेनम जॉर्ड एट द 2-man stand
starting and now BTR 2 और Indonesian teams जैसे बाहर आते हुए इस गेम से and this is looking insane. ये जो जोन है, ये जो पूरा का पूरा मैप है और भी ज्यादा chaotic बनता हुआ चौथा जोन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एंड टीम 52 यहाँ पे जस्ट हम लोग स्क्रीन के आगे टीम फ्लैश देखिए हालांकि यहाँ पर अब यहाँ पे थोड़ी साइज कम हो जाएगी सो ऑडियंस से एक दरख्वास्त रहेगी अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से आके सब्सक्राइब करिए ई स्पोर्ट्स के चैनल को और देखिए एक और आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन या फिर अलर्ट कि नेक्स्ट जो गिव अवे का विजेता है वो कुछ समय बाद ही हम लोग पिक करेंगे अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे लिख के लिंक पे टैप करने के बाद में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है तो जल्दी से जाइए एंड थैंक प्रोडक्शन फॉर टीम राइट देयर आप लोगों को यहाँ पर एक गिव अवे का क्यूआर कोड all the audience watching on your computer PCs अपना फोन निकालिए जल्दी से इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट अभी करिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर जल्दी एलीट रॉयल पास का गिव अवे इनिशिएट करेंगे इस मैच का एंड कभी भी हम लोग यहाँ पे विनर ड्रॉ कर सकते हैं रैंडमली ड्रॉ होगा तो जल्दी से जाइए अभी यहाँ पे गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए एंड अपनी PUBG मोबाइल कैरेक्टर आईडी विद योर रियल नेम एंड आंसर बिल्कुल सही तरीके से टाइप करना हो सकता है कोई भी गलती करे तो आप लोग को एलीट रॉयल पास गिव अवे ना मिले एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड लेट्स जस्ट कम बैक टू द मैचेस Let's just have a look at DRS Gaming यहाँ पे The Xaviers के बीच में यहाँ पर होती हुई एक सैंडविच सिचुएशन क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं DRS Gaming ने surviving with 5 elimination लेते बाद next appearance of the young lad from Nepal he's the sole man standing यहाँ पे UAP use कर रहे हैं I guess he's gone. He is gone. Team DRS भी होती हुई eliminated and The Xaviers MT2K Esports they are coming in a 4v2 battle I guess as now. Gotta be careful though. Also, we go areas at the moment. The 3 players still standing, but Xavier will be putting the screws to players inside of 2K Esports. Lele Boy will get taken down immediately as Alter Ego Ares might also join the fight third party. And this is going to be pretty easy for them. And player 25, they will immediately go for the Esports as Rosemary trying to take down Russell. And there you go, the third party will be inevitable as they will immediately go for this. And they, the only thing that they need to worry about right now is Hope. There's a side on the side of Xavier. And well, he might also get taken down because Snape just spotted him as Boom. We'll be losing players with players inside of Flash. You gotta be careful. Those grenades are gonna be raining in. Kibo will not be revived anytime soon as Yami and Keru are very far away. The 2-to-1 split working out pretty well. And I think, you know, is that? I keep forgetting his name. Down Caro with the trade. Now Yummy actually was the one who took down Tops. He's still alive. He's probably going to be the last one standing, and they will have to go for that finish. But Flash, they will have their eliminations stolen, at least one of them, by the side of Glue Blue. But they will also be helping him confirm those finishes and also the squad vibe. Now Leon, is he the only one standing on the side of Glue? That is a question I have in my mind. Oh, he's gone. They are gone and Boom Esports भी यहाँ से जा चुकी है 2 और Indonesian teams यहाँ से बाहर होती हुई but ये वियतनामी टीम फ्लैश ऑन द स्क्रीन देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि हम लोगों को पता है ये जो टीम है यहाँ पर फ्लैश भले यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन खेलती है भले यहाँ पर आज के दिन के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतरीन ग्रैंड फाइनल्स के अंदर बेहतरीन प्लेऑफ्स के अंदर बेहतरीन बट द थिंग इज दैट लक फैक्टर यहाँ पर Boom Esports के अगेंस्ट वो जो फाइट ले रहे थे उसमें से यहाँ पर Blue Esports ने थर्ड पार्टी करी Boom Esports को एलिमिनेट किया एंड Blue Esports को भी एलिमिनेशन आ गया सो यहाँ पर टीम फ्लैश देयर हैविंग दैट लक फैक्टर एज वेल कहीं ना कहीं एंड टीम फ्लैश अब शायद से मैं बोलूंगा शायद से कायनात भी नहीं रोक सकती इस ग्रैंड फाइनल्स को जीतने के लिए आई गेस हम लोग यहाँ पे क्राउन कर सकते हैं हमारे विनर्स को देखिए इट्स वे टू अर्ली टू से बट टीम फ्लैश जिस तरीके से यहाँ पर खेल रहे हैं और हर एक स्ट्रैटेजी हर एक चीज को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं शायद से हो सकता है ग्रैंड फाइनल्स के फेज सेकंड के अंदर टीम फ्लैश दोबारा से जीत के जाए बट ऑलरेडी गोज एंड हम लोग देख सकते हैं टीम द सेवियर्स यहाँ पे ये लोग भी ऑलरेडी शायद से एलिमिनेट हो चुकी है द सेवियर्स के पास यहाँ पर हालांकि 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स आ जाएंगे बट टीम फ्लैश के राइवल यहाँ पर होप को डाउन किया जाएगा ड्रेसिल एंड वॉकयोंग द डू एंड स्टार्टिंग कैन दे एक्चुअली पुल इट ऑफ कैन दे गेट दैट चिकन डिनर एंड यहाँ पर 2K Esports को एलिमिनेट तो कर दिया गया है बट टीम सीक्रेट C2K एंड द Xaviers क्या यहाँ पर टीम फ्लैश के ऊपर एक विराम लगाया जाएगा क्या टीम फ्लैश को यहाँ पर लॉबी तक का रास्ता दिखाया जाएगा और उन लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है या फिर नहीं बट देखिए इतने ज्यादा प्लेयर्स नहीं है मजीद
Zeus यहाँ पर कहर मचाते हुए अपनी AUG के साथ में, एंड यहाँ पर वोंग द सोलो एंड स्टैंडिंग ड्रेसिल बहुत ज्यादा दूर, और रिवाइवल की प्रक्रिया, और मैं बोलूंगा रिवाइवल की जो दरकार या फिर आगाज है नहीं हो पाएगा अभी के लिए. Flash, as you said, it's too early to say anything, but I feel like it's almost time. It's still a while. It's still gonna take a while to get the confirmation officially, but it feels like they're heading towards another beautiful championship win. Will they get the second one? Well, we'll have to wait and watch. And I also wanted to ask if they get the third one or not. But once again, it's a little too early for that one for sure. Okay, as soon as they're gone, we're now focused on T2K from the side of Flash. They'll have to be careful. D Xavier, on the other hand, with only one player standing, Team Secret with one. So T2K are the only real problems that the side of Flash will actually have, as Juke will take down one young, which means D Xavier are gone in full position. We're down to 8 players, 3 teams. 23rd minute about to come into play. Static Circle comes in the next two minutes. Team Flash are closing in the distance between them and T2K. So Team Secret, they'll be counting their lucky stars right now because they might survive one more team fight. Zeus बेहतरीन ग्रेनेड, एंड AUG के साथ में भी एक बेहतरीन नॉकआउट यहाँ पर आता हुआ. इग्निस को स्पॉट करेंगे एंड उनको भी डाउन किया जाएगा. टीम सीक्रेट्स एंड I guess Team Secrets is going to be the solo one starting. Juke, can he actually pull it off? And उनकी भी पोजीशनिंग यहाँ पर आ चुकी है आज के दिन के अंदर मेरा मार के बाद, और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं राउंडों के मुकाबले के ऊपर दूसरा चिकन डिनर, और हो सकता है दूसरा ग्रैंड फाइनल्स यहाँ पर जीत के जाएंगे. And they're doing okay. Alright, they're doing the pan fight now. Sure guys, let's see यहाँ पर इस pan fight में कौन जीतता है. देखिए ये चीज देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने जा रहा है. एंड आई डोंट वांट देम कि एक करके जाए एंड एक साथ फाइट ना करें. जुके इज गोना बी रियली कॉशियस, केयरफुल रहना पड़ेगा. टॉप्स के पास साथ में सबसे पहला 1v1, एंड जुके पहली बहुत ज्यादा लो हो चुके पैन फाइट के अंदर. क्या नॉकआउट ऊपर, बिल्कुल पहला नॉकआउट यहाँ पर टॉप्स के ऊपर आता हुआ. क्या यहाँ पर हील कर सकते हैं जुके? इट्स गोना बी द थिंग. कैन ही हील? ऑलराइट, किल कंफर्मेशन भी यहाँ पर टीम की तरफ से भी आता हुआ. Heal करना चाहिए. Yes. One, yeah. This is good. This is good, Team Flash. You're letting him heal. This is great sportsmanship. Let me tell you, this is unbelievable sportsmanship coming in from both of these teams. As a matter of fact, and the mutual respect that they have for each other, and the fun that they're having. I mean, it's unbeatable. I mean, this is exactly why Let's go. I usually. Yeah. Ooh, that's another one. Now things are getting heated up. We'll have to wait and watch. Zyven will go for that heal. Is it a 1v1 now? I believe it's a 1v2 still. What if Juke takes this chicken dinner? I think Flash. I don't think Flash is going to be really concerned about that because they've already done their part in terms of in terms of eliminations and position as well. The second place finish, they'll still be miles away, miles ahead of 4th Tribes. Okay. The next 1v1 Juke versus Zyven के बीच में, and okay, I guess Juke can win this one. Yes, he did. He took 3 of the players, and then we have यहाँ पर रहेगा आखिरी Zeus के against pan fight. और देखते हैं इस pan fight में कौन जीतता है. This is interesting, and this is a great sportsmanship level coming. और अगर यहाँ पे टीम सीक्रेट ऐसे चिकन डिनर लेके गई, it's going to be really fun to see. But इस pan fight के अंदर शायद से Juke एक शॉट यहाँ पर इनको पड़ा हुआ. Zeus, I guess Juke, he can take this chicken dinner. He's really close. No way. एक और shot. No एक way. और pan. Can he? Come on, Juke, he can do it. I'm pretty sure the nerves are high. And Juke will get it. Those 4 eliminations. It's gonna help Team Secret, yes, but it's not gonna do a lot of harm to the side of Team Flash. They would have loved those extra 5 points that they would have gotten for the chicken dinner and the elimination. But regardless, technically speaking, it was a free game for Flash. That towards the end, they should have gotten it, but the sportsmanship and the fun they were having is unmatched, and you can see it. Juke though, regardless, the pan fights 1v1, it feels like he's the king of it. It feels like he is the king of fan fights. And what a way, what a chicken dinner this is. Team Secret, congratulations. That's 4 points. Along with Hamza. coming in, that's 14 extra points that the teammate just cost you there. Juke Hamza. probably has to be the MVP, no?
I mean, this shows that Team Flash, they're having fun, right? They're playing and they're having fun. So it's good. The mental stress they're having is really less, and they do know कि उन लोग का performance यहाँ पर grand finals playoffs हर दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा Bakla बेहतरीन بدي and edge يا دقال ये بسلام कहीं شو ना بيسيوان एक्सपेक्ट किया था سوق कि टीम زي फ्लैश अगर यहाँ पर أخوي पहला نزي ग्रैंड फाइनल्स जीत के زي गई है तो शायद से हो सकता है कि दूसरा ग्रैंड फाइनल्स भी जीत के जाए because yet it's just yet another some matches for them and they're dominating the lobby itself, right? So Team Flash تاسو and زي especially بازار UK تا a huge round of موبايل applause. وسر And ولا can we كنا have some دوال راشن Team Secrets and Team Flash will be in chat because the sportsmanship 500 is just insane, man. 550 غواړي او زمانو Sure. مرته And وای I وای think دی I وای چې think بس دغه 500 I غواړي think نو they do هغه څه deserve کوي. some Flash OP ما ته definitely وې کنه Team و Secret OP and 550 2K غواړي OP more like. But yeah, Team Flash and Team Secret. لا No wonder 100 دکان درته معلوم these دی teams are so علي good سټو because کې دی they always play to علي سټو have some کې fun as well, and that's something you need to keep in mind. دا Having fun while performing is important. If you're a little too stressed, you might not really perform give it your all every single time. There will be stress, there will be pressure, and if you can have fun under both of those situations, well then there's no one better than you at this point. Yeah, that's true. And تو سر دی the 500 रुपए match بولا highlights, کسې وی I mean, وای especially this مزار fan والا لا fight, کوي چې بس it's دغه going in 500 غواړي highlights for او د امجد دکان ته sure. بلاړ شي کور دی And راوړي JK, کنه he is insane with the fan fights, to be honest. As a fan fight, though, so I'd say, I mean, I don't know, man. Even I can't do that. He is just insane with the fights and Team Secrets, taking that winner in the chicken dinner. And JK, he did a 1v4 with that ban. Oh God. Can we have some Team Secrets and Team Flash OP in the chat? And especially audience watching right now. अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है 141 esports के चैनल को, तो जाइए जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. ऐसे ही आप लोग को फन मैचेस देखने को मिलेंगे एशिया बैटल बुश चैप्टर 3 के फेज 3 के अंदर. And FLCUs, he is going to be the MVP of the previous match with 8 elimination and 7 knockouts. देखिए 2 और मैचेस बाकी हैं. I don't think so कि टीम फ्लैश यहाँ पे कुछ भी mess up करेगी. And Team 4 Thrives, उन लोगों के शायद से 3 मैचेस उसके बाद में बहुत ही ज्यादा खराब रहे. But I don't think so कि टीम फ्लैश यहाँ पे बिल्कुल भी mess up करना चाहती है. And हो सकता है कि टीम फ्लैश यहाँ से दोबारा से इस ग्रैंड फाइनल्स को लेके जाए, क्योंकि उनके पास में मैं बोलूंगा let's just give benefit of doubts to the other teams as well, क्योंकि टीम फ्लैश they're having at least 90% या फिर more than 90% of the chances to make this happen. But let's just have a look on the top 4 players, because FLZeus, RQ, Pargros, Team Secrets, UK, and Bany Esports going to be joining the spot. But 4 of these players, they are the most dangerous into the lobby. But UK is dangerous with his span. एंड सभी लोग आप लोगों को एक और यहाँ पर रिक्वेस्ट रहेगी, दरखास्त रहेगी, अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से जाइए गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए. व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर? क्योंकि एलीट रॉयल पास का गिव अवे हम लोग इस मैच का कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं. एंड आप लोगों की स्क्रीन के सामने रहेगा हमारा विजेता. देखिए आप लोगों के पास में अभी भी समय है, 2-3 मिनट के अंदर वो जो प्रोसेस है पूरा हो जाता है. यू स्टिल गाइस हैव 5 मिनट्स, तो जल्दी से जाइए अभी जाके गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए. यू गाइस हैव प्लेंटी ऑफ टाइम्स, राइट? हम लोग अभी ओवरऑल स्टैंडिंग्स देखेंगे, मैच रैंकिंग्स देखेंगे, ओवरऑल एमवीपीज देखेंगे, फिर फैन फेवरेट टीम्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग गिव अवे निकालेंगे रैंडमली. सो जाइए जल्दी से आके गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए. आप लोगों को एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 141 esports ने पहले से एक पिन कमेंट जो है पिन कर रखा है. एंड उस लिंक के ऊपर टैप करना है, इमेज होगी आप लोगों के सामने, उस इमेज पे ही क्वेश्चन होगा. उस इमेज के ऊपर टैप करने के बाद में आप लोगों को अपना रियल नेम, पबजी मोबाइल कैरेक्टर आईडी बिल्कुल सही से लिखना, कोई भी मैसअप मत करना. उसके बाद में यहाँ पर अपना आंसर्स के साथ में वो कमेंट पोस्ट कर देना, एंड दैट्स ऑल. सो जल्दी से जाइए गिव अवे के अंदर जाके अभी पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि हमारे पास अभी भी 2 और गिव अवेज बाकी हैं. ये रोंडो का गिव अवे हम बहुत ही जल्द निकालने वाले हैं. Let's just have a look on the teams to watch out into the upcoming one. And Team Secrets, absolutely they gotta be here, man. ये टीम होगी हमारी टीम to watch out. The Xaviers के साथ में, T2K Esports के साथ में और RRQ के साथ में. Oh, keep an eye out for definitely, and Team Flash, they're going to be really happy with this performance coming in, and they'll also be happy to know that 4th didn't really get anything done going into this one, so the lead is definitely going to be a lot now. And 4th things are getting a little out of hand now, looking at the situation
of Flash and the other teams. In the meanwhile, they're running over the championship. Mass summary: 110 total eliminations, 5 grand eliminations. My apologies there. 4 airdrops looted and 0 vehicle eliminations. 12,457 healing done. And XMPL on the side of Stream को DRS. like और Well, subscribe करें it's been a guys. while since I've seen him anywhere, and 384 is the longest elimination. As Flash with the highest number of points into this game, 21, did not get the chicken dinner, but they'll not be worried about it. Team Secret, they were up to 1 elimination and the top 2, and then at the end, those 4 pans coming in from Juke, 15 total points for them, 15 for D Xavier as well, 14 for Alter Ego Ares, 12 of which were elimination points, and T2K in the next position. They're coming in with 11 points as well. So a lot of these teams towards the end did pick up some pace, but talking about the overall, Flash, I mean, they're in 6th gear. Everyone else are still stuck in 2nd. That's true. And Team Flash, they are in the 6th gear indeed. Right now, they're having a lot of points. Look at the gap. Because Team 4 Thrives and Team Flash के बीच में जो gap है, वो बहुत ही ज़्यादा एक लंबा gap बन चुका है. 231 points यहाँ पे रहेंगे Team Flash पे, 179 points रहेंगे यहाँ पर Team 4 Thrives के बीच में. 50 points, 50 से ज़्यादा, actually 52 points का ये जो gap है यहाँ पर बन चुका है. And Alter Ego Ares यहाँ पर लेके जाएगी 3rd spot with 178 edge. We can just even say it right now. It's just a universal fact that Team Flash is just winning the grand finals phase number 2nd. It's happening. We just cannot stop it now. I mean, the next 2 games, if the opposite happens, let's say Team Flash get eliminated early and then 4 Thrives, they get 2 chicken dinners in a ridiculous way, then there's chance. So there's still hope. 4 Thrives, they're not that far away. It is going to hurt for sure. But 4 Thrives, if there's anyone that can do it, it's them. They have the potential. And well, it's time for Falak, IQQ, T24, and Uzaifa to step in hard. Yep. And let's have a look on the overall MVP. And FL Win totally deserves it, man. He just totally owned it. He is having 53 elimination points and 47 knockouts. Alter Ego Ares Rosemary going to be joining the 2nd spot with 48 elimination points and 56 knockouts. FL Zeus, FL Bose, 3 of the players of Team Flash. It is insane, man. Team Flash is everywhere right now. And Rosemary, he's still holding on to his position. I mean, look at the damage he's been dealing. He's the only one with 11,000 damage. That is important, and that's exactly what you would want from him, and from the entirety of the squad. Little more effort, and I think all 3 goals might also be a contender. In the last 2 games, it's not going to be possible. I think 4 Thrives is the only one who has a chance right now. So it's going to be a very important matchup for the side of 4 Thrives. But unfortunately, it's not Rondov. It's Erangel and Miramar for them. Yep, last 2 matches and I guess Edge ये जो fight है अब 2nd और 3rd spot के लिए सबसे ज़्यादा बन के आएगी, right? Because Team Flash, they are the defending champions. They will defend their title from phase number 1, and still they are coming on top. So they are here. It's inevitable right now. So the teams will be fighting for that 2nd and 3rd spot, the runner-up podium stage, right? They're fighting there. Let's just have a look at the fan favorite team and 4 Thrives and DRS. I mean, it's just inevitable here as well that 4 Thrives and DRS will be the fan favorite teams. But after this, we'll be having a look on the giveaway. And देखते हैं यहाँ पर giveaway का winner कौन बनेगा. And giveaway के अंदर कौन सा ऐसा player है जो लेके जाएगा Royal Fast Girl. I'm just super excited to see the giveaway winners as well, Edge, because the audience, they are also claiming their Royal passes and enjoying the matches as well. I mean, it's only fair, right? I mean, the audience needs to have some fun. The players are having some fun. We are having some fun, and I'm pretty sure the player with the character ID will have some fun there as well. As congratulations, you got yourself a free Elite Royal Pass. And well, we have 2 more games, which means 2 more winners. And if you want to be one of them, well, all you need to do is type in exclamation giveaway in the live chat, or as Inferno said, just look at the pinned comment there in the chat section. I mean, you'll get yourself the link, click on it,
and then all you need to do is follow the steps. They're pretty easy. Click on the image, answer the question correctly. Answer the question. If it's correct or not, depending on that, you will be chosen if you're a winner or not. And then you make sure to enter your real name and your correct PUBG Mobile character ID. Do not make any mistakes in these last, especially because if not, someone else will get the character ID. But regardless, we're done with the 4 matches. 4 giveaway winners have been announced. 2 more matches, so you guys still have 2 more chances to test out your luck here in the giveaway. Yep, exactly. And the giveaway winner. And अगर आप लोग वंडर कर रहे हैं तो आप लोग गिवअवे के अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो और कितने ज्यादा विनर्स हम लोग के पास में रहेंगे एंड कितने ज्यादा और मैं बोलूंगा गिव अवेज हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज के दिन के अंदर। देखिए यहाँ पर जितने ज्यादा मैचेस रहते हैं उतने ही यहाँ पर गिव अवेज रहते हैं। तो 6 मैचेस तो 6 गिव अवे विनर्स एंड 6 गिव अवेज, राइट। सो अभी हमारे पास में 2 मैचेस और बाकी है, रैगल एंड मिरामार। सो हम लोग यहाँ पे 2 गिव अवे विनर्स को विटनेस करेंगे। आप लोग जल्दी से जाइए गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए। बहुत ही ज्यादा सिंपल रूल्स है, कोई भी ज्यादा यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट एंड कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए नहीं किया गया है। एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे लिख सकते हो चैट सेक्शन के अंदर। आप लोग को पिन कमेंट के अंदर भी यहाँ पर एक गिव अवे लिंक मिल जाएगा, टैप करिए उस लिंक के ऊपर, फिर जाइए। आप लोगों को वहां पर एक थोड़ा सा वेट करना है, राइट। जब आप लोग लिंक के ऊपर टैप करो, सो जस्ट वेट फॉर अ लिटिल लॉन्गर, 3-4 सेकंड आप लोग रुकिए या फिर थोड़ा सा ज्यादा रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि सब लोग यहाँ पर एक साथ गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो कभी कभार जो है सर्वर स्लो हो जाता है, लिंक थोड़ा स्लो हो जाता है। सो थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को जस्ट एक इमेज दिखेगा, राइट। उस इमेज के ऊपर एक क्वेश्चन होगा एंड उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। उस क्वेश्चन को जैसे आप पढ़ लो, उस इमेज के ऊपर टैप करना, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपना रियल नेम, पबजी मोबाइल कैरेक्टर आईडी और उसी के साथ में अपना आंसर बिल्कुल करेक्टली लिखना है। एंड स्पेशली पबजी मोबाइल कैरेक्टर आईडी, ये मान के चलिए आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है उसके साथ में, राइट। जस्ट इमेजिन दैट यू गाइस आर गिविंग एन एग्जाम, सो पबजी मोबाइल कैरेक्टर आईडी बिल्कुल सही तरीके से लिखना एंड दैट्स इट। अपना कमेंट वहां पर एक बारी पोस्ट कर देना एंड इजी तरीके से आप लोग यहाँ पर गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर लोगे। अभी भी यहाँ पर आप लोग के पास में चांसेस है 2 गिव अवेज जीतने के लिए एंड हम गारंटी नहीं कर सकते आप लोग जीतोगे या फिर नहीं, क्योंकि रैंडमाइज होता है सब कुछ एंड रैंडमली यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो गिव अवे का विजेता है, जो गिव अवे का विनर है, उसको यहाँ पर पिक करेंगे। सो गो राइट नाउ एंड पार्टिसिपेट योरसेल्व्स इनटू द गिवअवे बिकॉज़ elite royal pass are getting giveaway freely right now and we still have 2 more giveaways left and 2 more matches. But Edge, man oh man, what one of a hell of a grand final it was, and especially Team Flash, kudos for that team. And जिस तरीके से यहाँ पर टीम सीक्रेट्स एंड टीम फ्लैश की हम लोगों ने वो फैन फाइट देखी, it made my day man. It was 100% a sportsmanship incoming. It was a great moment to witness indeed. And now we will see if it's going to be another moment to be remembered if Flash can actually secure this Phase 2 championship as well. We're done with Rondo, RQ, and Team Flash. Sorry, Team Secret. They will get themselves 1 each, and a Wrangle did go in the favor of 2K. We will head to the other Wrangle right now. Miramar did go in the hands of Flash, so that was the game that turned it all around. 4 tribes did get taken on with 0, and Flash picked up a chicken dinner. And then Rondo, once again, Flash with good numbers, great numbers, as a matter of fact. But unfortunately, 4 tribes, yet again, with only 2 eliminations, they did go out pretty early. A Wrangle now coming in, Miramar later. So Flash will be looking out for decent points, even if they get at least 5 to 10. That I think that's enough to keep 4 tribes at bay. But if not, then 4 tribes would probably need a couple 25-point games, and it's not going to be easy, but it's not impossible either. Yeah, and the next match, it's going to be a wrangle, and let's see which team it's going to be hitting that spot and letting that chicken dinner into their pockets. But ladies and gentlemen, it's going to be Asia Battles Chapter 3rd, and it's going to be Grand Finals final day and match number 23rd. And देखते हैं इस वाले मैच के अंदर कौन सी टीम आएगी जो चिकन डिनर लेकर जाएगी। क्या वो टीम रहेगी सेकंड पेज के ऊपर, क्या वो रहेगी टीम 4 ट्राइब्स, क्या रहेगी वो टीम अलायंसेस, या फिर टीम फ्लैश दोबारा से आज के दिन के अंदर एक हैट्रिक करके दिखाएगी और लेके जाएगी 3 विनर चिकन डिनर। मिलिट्री बेस से स्टार्ट करेंगे। बेसिस रहेंगे यहाँ पर इस फ्लाइट के हॉट ड्रॉप सिनेरियोज एंड दिस फ्लाइट पाथ I'd say ये बहुत ज्यादा सही है। It divides the map symmetrically from between
not total symmetric, but a little symmetric, a little bit of here and there, I'd say, but it's really good one. टीम्स यहाँ पर इक्वली हर एक अपने स्पॉट के ऊपर ग्लाइड कर सकती है, बीट फोर्थ रेव्स, बीट यहाँ पर कोई भी टीम जो प्रीमॉस्क जाती है, राइट, वो इन स्पोर्ट्स हमने देखा उन लोग प्रीमॉस्क रीजन के ऊपर जाते हुए पिछले मैच के अंदर, बट अभी के लिए यहाँ पर अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज करेंगे क्योंकि उन लोगों को पता है कि मिलिट्री बेस के ऊपर कोई भी टीम्स नहीं जाती है, बट एज द ड्रॉप फाइट्स, राइट, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिले दोस अर्ली एनकाउंटर्स, वो हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे, बट डीआरएस वर्सेस आई से वहां पर आरआरक्यू जो मिल्टा पे चलता है, वहां पर भी एक बार हम लोग कोई वो बैटल देखेंगे, एंड T2 के वर्सेस हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे SIT esports. They changed their drop location, and T2K esports, they're dropping somewhere around, and I know why you were saying, ooh, that zone, the water bodies are there. स्ट्रीम को लाइक एंड सब्सक्राइब करो गाइस. Ooh, indeed. That zone is looking interesting, and I want to see where things head out, where things are going to be ending to. George Paul Hospital, Ruins, Gaka Quarry, Ferry Pier, and Primorsk. We'll take a look at how things end up. It's not always about the start, but look at this. Another knife fight between Glue and 2K Esports. And everyone just going in with those melees there. And it looks like 2K are already gone out of the picture. Glue barely made it, by the way. It was a 1v1 towards the end. They will take it. And now you can see the teams are having a bit of fun. And, well, that's what we love to see. The fun is contagious. जी हाँ बिल्कुल, एंड DRS वर्सेस RRQ, ये राइवलरी, ये फन नहीं होने जा रहा है, जो 4v4 की बैटल है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी फन, इट्स अ रैंगल. एंड देखिए मेरे को पता है ये टीम्स को पता है कि जो टीम्स यहाँ पर अभी सेकंड पेज पर है ओवरऑल स्टैंडिंग्स में, द गेम इज ओवर फॉर देम, सो व्हाई नॉट हैव सम फन, डू दोस night fights incoming, the fan fights incoming, but right now DRS and RRQ, they're not here to do the fun. The rivalry will remain the same. Rivalry is still on. They're what, 52 points away? Yep, that is the case. 52 points away. So 26, 2 games. That's what they need. So 26 and a 26 game. One flash has 0, by the way. So a 230 bombers is what you need. And that's what anyone needs. So if any team has a 30 bomber, then, I mean, by any team, I mean Fortress or Alter Ego Eras. Both of these teams, they do have the potential to go for that one, but it's not going to be easy whatsoever. And if any of these teams actually manage to pull it off, then things could turn out to be interesting towards the last game of the day. At the moment, DRS is still punching players on the side of you could actually punch players on the side of DRS. Yeah, Killer Whitey, the Sultan standing. यहाँ पर आएगी आप में एक MP5K स्पॉट यहाँ पे प्लेयर को किया जाएगा, एंड स्टेयर केसेस पे यहाँ पे हेड चेज सबसे पहले होगा, राइट. सो एक नॉकआउट दूसरा नॉकआउट लेने की दरकार, बट नहीं, साथ ही में साथ पुश किया डाउन यहाँ पे उनको किया जाएगा. DRS यहाँ से होती हुई एलिमिनेट. We were starting with 18 teams by the way, and down to 16, and Grenadier का खिताब लेके जाएंगे Lapper, but man oh man, Asia Balwas chapter 3rd and especially phase number 2 का grand finals का day number 4, it's engraved in my heart, क्योंकि especially team secrets and team flash, जिस तरीके से वो जो sportsmanship यहाँ पे पिछले मैच के अंदर हम लोग को देखने को मिली, it's a rare moment I'd say, right? Teams showing up in the tournaments and showing that sportsmanship. So team secrets and team flash, kudos man. I mean it's one of the best moments we have seen right now in Asia Balwas chapter 3rd. But let's just have a look in the Stelbar region, because we can see team 52 versus team Wargay. Daku यहाँ पर शायद से जिंदा तो है, but उनकी टीम कहाँ पर है? टीम 52 के प्लेयर्स तो हैं मेरे को दिख रहे हैं मिनी मैप के ऊपर, और शायद से टीम वो आगे के भी प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे. शाका एंड सभी के सभी लोग यहाँ पर एक साथ आएंगे एंड फाइट लेने का ट्राई करेंगे, बट डाकू को यहाँ पर डाउन किया जाएगा. टीम 52 के प्लेयर्स दे आर लुकिंग गुड, एंड अजया T2 के esports की तरफ से इज दिस वन स्टैंडिंग, एंड क्या नॉकआउट ले पाएंगे या फिर नॉकआउट हो जाएंगे. अजया को डाउन किया जाएगा, एंड T2 के esports यहाँ से हो चुकी बाहर. एक और टीम हो चुकी है एलिमिनेट. Unfortunate turn of events for most of these teams, but we still focus on the top 3 as they still are alive here. RQ will get 4, make it to the top 4. Alliance now holding on to their position. Number 5, 164 points. They don't have any points going into this one. They don't really have anything to show for today's performance. Has just been grim for them. And DRS, on the other hand, getting eliminated as well. This has just been
a disappointing performance coming in from them too. Disappointing would be the word I use, of course, because of the fact that they are one of the fan favorite teams. I mean, it's them and the Fourth Rise. And Fourth Rise, well, they're still here in the fight to become the top team, to become that number one player, number one squad. Yeah. We'll see how it turns out. Yeah. But to the audience watching right now on your computer screens, आप लोगों के जो सामने जो QR कोड है, जल्दी से जाके इसको स्कैन करिए और जाके गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए। देखिए जो मैच है अभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्लो पेस के ऊपर है, हम लोगों को प्राइस नहीं देखने को मिलेंगी, तो जल्दी से जाइए, क्यों ना इन द मीन टाइम अपने समय को कहीं और अच्छे तरीके से इन्वेस्ट और व्यर्थ किया जाए और गिव अवे के अंदर अभी जाके पार्टिसिपेट करें। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्कैन दिस QR या फिर यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा एक पिन कमेंट के अंदर, एक कमेंट नाइट बॉट की तरफ से वो जो लिंक है उसके ऊपर टैप करें, जाके उस क्वेश्चन का आंसर करें। उस इमेज के ऊपर टैप करने के बाद में आप लोगों को अपना PUBG मोबाइल आईडी, कैरेक्टर आईडी, रियल नेम एंड आंसर वहां पर लिख देना है एंड वो जो कमेंट है उसको पोस्ट कर देना है। देखिए जल्दी से जाके करिए, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऑडियंस एंड द पीपल वाचिंग आउट देयर, आप लोगों से दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट रहेगी, 141 esports यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखिए व्यूअर्स को भी यहाँ पर कुछ इन द बैक दिया जा रहा है एंड वी ऑल रिस्पेक्ट द व्यूअर्स एज वेल, एंड आप लोगों के लिए गिव अवेज हैं, सो जल्दी से आके पार्टिसिपेट करिए एंड 141 esports एक बारी ओपी हो जाए तो और भी ज्यादा बेहतरीन रहेगा, बिकॉज दे आर पुटिंग अप अ शो फॉर अस, फॉर यू ऑल, and getting those, I mean, I'd say elite roll pass giveaways. So it's all happening because of them. But let's just come back to the fights, because the grenades are reigning supreme. Team Secrets, Juke को यहाँ पर डाउन किया जाएगा. The Pan Master, the Pan Fight Master is gone. Zeris हाथ में रहेगी, यहाँ पर एक एस्ट्रल के FPP के अंदर स्विच किया जाएगा. स्पॉट यहाँ पे प्लेयर को किया जाएगा या फिर नहीं, वो जो ग्रेनेड है कैसे थोड़ा बहुत प्रॉमिसिंग हो सकता है, कनेक्शन लेके जा सकता है. Let's see what will be happening. Grenade, oh that was good. That was good. And इसके साथ में यहाँ पर एक और टीम हो चुकी है एलिमिनेट. It's going to be Team Panam and Boom Esports versus Adams Esports. बेहतरीन नॉक यहाँ पर आएगा. ASID Esports के K2 and Crypto Doom and Standing, and यहाँ से इसके साथ में Boom Esports भी बाहर होती हुई मैच से. And पहले स्टेज के अंदर हम लोगों ने देखा 5 टीम्स का एलिमिनेशन. 5 teams, you're definitely right about that, getting taken down pretty early as well. Wrangle it is, and Xavier now trying to put the players on the side of ASI 8 down, but hope he gets taken out. K2 as well, K in hands, he'll be dropping one, will be going for that information immediately. Russell the only one standing right now here on the side of Xavier that's in the vicinity. He will be able to get one more down by Crypto. He thought it was only one, but the other 2 have arrived. The backup is here at ASI 8. Well, they're not here anymore as they get taken down in 13th position. Xavier, they'll be happy with this. 3 eliminations, 136 points right now, and Team War Guy, you got to be a little careful here. 52 Esports are in the vicinity, but War Guy, there's only one player standing. Mola, how long can you survive? Agent 47 is really tagged up here. 52 Esports are using everything in their power to stop this last surviving plan. It's burnt to a crisp. War Guy gone. I mean, the play zone will get that point, but regardless, 52 Esports, they will survive to fight another team. जी हाँ बिल्कुल, एंड टीम सीक्रेट जेरिस एंड जोके रहेंगे डुओ मैन स्टैंडिंग, और इसी के साथ में यहाँ पे जोन के अंदर जाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी. शुरुआत में हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा 4v4 बैटल्स देखने को मिलेंगी. टॉप 5 टीम्स जो हैं अभी भी सर्वाइव कर रही हैं. अलायंसेस, RRQ, ऑल्ट्रो ईगो, एवीज, टीम फोर्स रेड्स एंड टीम फ्लैश आर गोइंग टू बी आवर टॉप 5 टीम्स, एंड वो अभी तक सर्वाइव कर रही है. सो उन लोगों का फाइट आउट सिनेरियोस हम लोग को कभी भी देखने को मिल सकता है, एंड लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग. एंड टीम सीक्रेट्स अभी के लिए, आई मीन whenever I'll be seeing GK into the upcoming phases and playoff qualifiers, I will always remember that Pan fight. Yeah, that's something to remember for a really long time. The not exactly romance, but the mutual respect that they have, and both the teams coming in from the same region, the understanding and the love they have for each other. Once again, one of the best teams out there, Team Secret and Team Flash. At the moment, Flash probably the best. जी हाँ बिल्कुल, एंड I mean Team Flash, yeah, absolutely, I totally agree with you, because यहाँ पर देखिए
I'd say कि एक win यहाँ पर थोड़ा बहुत luck factor रह सकता है. चलिए हम it's a very hypothetical situation, right? We are thinking of. चलिए मान के चल सकते हैं that आप लोगों ने grand finals और grand finals 1 जीता, phase number 1 जीता. You might have a little bit of luck, but अगर आप लोग यहाँ पर grand finals second भी जीते, so it's all pure skills, right? It's all pure skills. We cannot give you luck factor. It's all pure skills incoming. But team all three go Aries and team BTR fighting यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है एंड 4v4 बैटल्स यहाँ पे बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएंगी एंड ये जो मैच है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चलता हुआ. देखिए यहाँ पर मजीद प्लेयर्स तो जिंदा नहीं है लॉबी के अंदर एंड हम लोग को पता है जो chaotic फाइट्स हम लोग को एंड के अंदर देखने को मिलती है वो नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि आखिरी दिन है एंड हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट भी किया था कि यही हम लोग को देखने को मिल सकता है. एंड ऑडियंस को बार बार हम लोग रिमाइंड कर रहे हैं. देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है 141 esports को तो जल्दी से आके सब्सक्राइब करिए क्योंकि हमारा भी एक गोल है आज के दिन के अंदर अगर आप लोग 44k सब्सक्राइबर्स करा देते हो सो नेक्स्ट फेज थर्ड के अंदर भी हम लोग आप लोगों के लिए गिवअवेज करेंगे. जल्दी से जाइए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. इफ यू गाइस वांट गिवअवेज इनटू द अपकमिंग फेजेस एज वेल जाइए जाके आप पे PUBG आई मीन प्लेयर्स जितने भी फेलो फ्रेंड्स हैं मेट्स हैं टीममेट्स हैं टीम्स हैं सबसे जाके शेयर करिए बिकॉज इट्स एशिया बैटल चैप्टर 3. इट्स नॉट जस्ट अ टूर्नामेंट, इट्स अ फेस्टिव ऑफ दिस इंटेंस बैटल. इट्स अ फेस्टिव ऑफ ग्रेट स्पोर्ट्समैनशिप इनकमिंग, राइट? इट्स अ फेस्टिव ऑफ PUBG मोबाइल. बट लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन टीम फोर स्ट्राइप्स क्योंकि पेंगुइन के अगेंस्ट आई मीन पेंगुइन यानी एके फलक यहाँ पर लेके जाएंगे एक बेहतरीन नॉकआउट टीम सीक्रेट्स के ऊपर एंड जो के ही इज द सोलोमन स्टार्टिंग. क्या टीम फोर स्ट्राइप्स लेके जाएगी इस मैच के अंदर chicken dinner? That is going to be the question क्योंकि टीम फ्लैश भी यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं. देखिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 50 पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, राइट? वो जो गैप है अभी के लिए यहाँ पर 41 पॉइंट्स का हो चुका है. इट्स अ रिकवरेबल गैप बट टीम फ्लैश को यहाँ पर जल्दी ही एलिमिनेट होना पड़ेगा अगर टीम फोर ट्राइब्स को यहाँ पर फर्स्ट स्पॉट लेना है. टीम फ्लैश दे आर टोटली एंजॉयिंग, राइट? Team Flash are having fun indeed. And this time again, they're starting off things on a little passive note. They're taking things slow here with all four players standing. 30-minute mark about ahead. Phase 3 circle coming to play in the next 90 seconds. It will close down. We will have a smaller circle. The Xavier, on the other hand, with 3 eliminations and 3 players standing, 36 players in the server at the moment. We did see that beautiful, start to the match with Glue and 2K going against each other with the knives there. That was kind of amazing to watch. It was fun. It was fun. That's the kind of fun everyone's hoping to get consistently. But that's something you don't usually get to see a lot. They understand that the game is pretty much done for them, and they pretty much know that no matter how many points they accumulate, they are not going to take down the Kings at the moment. That is Team Flash, 231 points. 4 tribes with the 1 elimination. They did get up to 180 all 2 areas, are not that far away, just 1 point away from 4 tribes. Hopefully, we will see some good competition towards the end. I do want to see Flash being contested. At the moment, they are just running away with the lead. Yep. Team 52, 3 elimination points and Bany 95 यहाँ पर होते हुए बाहर इस गेम से एंड कुछ शॉट्स आ रहे हैं, कुछ सेपरेट शॉट्स हम लोग ऊपर आएंगे से आसपास. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं द ज़ेवियर्स वर्सेस टीम फ्लैश. यहाँ पर ये जो फाइट है बहुत ही जल्दी इनिशिएट हुई. जॉर्ज कूल हिल लोगों के पास में रहेगा, जोन के बाहर है, जोन के अंदर भी जाना 500 जोन से दूर है, इतना नहीं बट रोटेशन के ऊपर यहाँ पर लोगों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. किस तरीके से यहाँ पर जोन के अंदर जाएंगे, किस तरीके से यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे. इट्स गोना बी रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं बोलता हूँ if you're I mean I'd say कि gun power is important, then your rotations are going to be the backbone in the game, right? So कैसे आप लोग रोटेट करते हो, जोन के अंदर कैसे एंट्री करते हो, कौन सा कंपाउंड को करते हो, कहाँ पर अपने आप को कौन से हिल्स के ऊपर रोकते हो, होल्ड करते हो, कब रोटेशन क्लैशेस लेते हो. it all works in a sync, right? और अगर कोई भी चीज सिंक से बाहर होती है तो उस चीज में कहीं ना कहीं आपके हाथों से फिसलते हुए देखने को मिलता है. Beat international lobbies, beat any classic games as well, right? So any official tournament. So it's all about the sync incoming. But 4 tribes के हुज़ैफा अपनी स्कारल का कहर मचाते हुए लैप्रो को डाउन किया जाएगा. आरक्यू के अगेंस्ट फाइट स्टार्ट हो जाएगी. टीम सीक्रेट्स का यहाँ से एलिमिनेशन आएगा. टीम सीक्रेट्स को बाहर किया जाएगा 11वें बाइक के ऊपर. 5 eliminations is all they're going to be getting into this one. Unfortunate situation for them, but Team Flash
now finally joining the fight as they will take down the big one. It's Rosemary hit the deck immediately, and guess what? It's Zyvin, the star player for today. He is the one coming out on top, and he will take down one of the players inside of Alter Ego areas. They're not done yet. Flash might go for more as the Xavier might be crossing paths with them, and if you have someone who is not being flashed, I don't think that's a good idea, as we have RQ getting taken down. Gloomatic now holding on their position for so long. 52 finally takes the fight against them. 52 on the verge of getting eliminated, and just as I say that, they will be gone too. No eliminations for the side of Glue though. I mean, no casualties, that is. They do have 7 eliminations coming in. Beautiful stuff. For 52 esports, they're going to be not happy with that, but the circle is now coming into play, which means the rotations are going to be inevitable. It's gonna be inevitable for sure. And Team 4 Thread शायद से बहुत चल फाइट के अंदर आ सकती है BTR के अगेंस्ट एम बिगोट्रॉन बाय विटालिटी स्पॉट यहाँ पे फेडरलेस कुछ शायद से किया गया है फिर नहीं तो देखने वाली चीज रहेगी बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑल्टर ईगो एरीज यहाँ पर एक एलिमिनेशन पॉइंट है बाद में यहाँ पे इजाफा करेंगे इस गेम के अंदर एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम 4 ट्राइब्स 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर इन लोगों के पास में भी हुज़ैफा I just really love हुज़ैफा's car skin. चलो बताओ कि हुज़ैफा ने अभी कौन सी कार की स्किन लगाई हुई है. Do let me know in the comment section. एक ऑडियंस के साथ में छोटा सा इंटरैक्टिव क्वेश्चन मैं पूछा है. Do let me know what's the name of that car. एंड देखते हैं कितने यहाँ पर कार एंथुसियास्ट हैं चैट के अंदर because I'm one of them. I love cars. I love to talk about cars. So why not? Let's just have a look कि चैट के अंदर कितने सारे हमारे कार एंथुसियास्ट हैं. बट अभी के लिए हम आप लोग देख सकते हैं जोन कट आएगा राइट. एंड ये जो जोन है ओपन के अंदर है. कवर फ्लेयर्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कारगर रहेंगी. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 19 सेकंड 18 17 सेकंड्स और फिर उसके बाद में जो जोन का कट है हम लोग को हमारी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा. एंड मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं साउथ साइड की तरफ ही जो जोन आ सकता है साउथ ईस्ट साइड की तरफ. एंड फोर्थ राइज कुड बी इन द जोन और मे बी पॉइंट ई स्पोर्ट्स के ऊपर ये जो जोन जा सकता है. नॉर्थ साइड का कट आई गेस I am not predicting, but there we have it. It's in the north side. I'm not best in predicting the zones. But Team 4 Thrives यहाँ पर अभी भी कुछ players उन लोग के zone के अंदर. And Team 4 Thrives एक बहुत बड़ा split खेलते हुए चारों players यहाँ पर एटलीस्ट 100 मीटर के दायरे में फैले हुए हैं. Yeah, the split is not insanely ridiculous. Things are looking good. As the circle is going to be drifting a little. There's still a bit of water in the mix, and I absolutely love to see that every single time. We're hitting 90-minute mark soon. 8 teams, 26 players now here in the server. Stage 5 circle coming into play. Wine with 4 players still surviving. They have just surpassed the 100-pointer. And Xavier, they're gone as well. In 8th position. As all 3 areas are going to be spotted by Falak, and now Falak is dropping them quickly. They'll at least try to go for this fight. He'll not be able to do a lot, but he does manage to deal a bit of damage. Can he capitalize and get a confirmation or 2? All 3 areas with just 2 players standing, and both of them are spotted out. So 4 tries, these should be free. There should be free eliminations for them. Yep. And Team Flash 4 एलिमिनेशन लेने के बाद में शायद से टीम फ्लैश दे रही है तो विन दैट श्योर आगे तरफ आगे जाते हुए ज़ेविन स्पॉट किया जाएगा. ग्रेनेड ही जस्ट बेरली सफाया था ग्रेनेड. अगर शायद से वो जो ग्रेनेड स्क्वाड है उसके बाहर होता तो मे बी मैं बोल सकता नॉकआउट आ सकता था. पर टीम फ्लैश यहाँ पर टीम बीटीआर को एलिमिनेट करेंगे. व्हाट यू गाइस आर अप टू. व्हाट यू गाइस आर अप टू. टीम फ्लैश, दिस इज टोटल डोमिनेशन इनकमिंग. दिस इज purely skills. This is the Team Flash we always look forward to. The typical Team Flash, but alliances यहाँ पर वो esports के against fight आती है. Team Flash, man, they are unfazed and unstoppable right now as Alliance on the verge of getting eliminated. It's just a no-name player standing tall for not for long as Wine will finally be able to get some numbers on the board. They will get themselves a team wipe, and we'll have to go for that revival immediately. We're in the top 5, and guess what? All 3 go. Wine, Blue are here, and 4 Tribes and Flash are also here. Yep. And now
आउटराइट को स्नेप ग्रेनेडियर यहाँ पर बनते हुए वन ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, बट अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्नेप 27 यहाँ पे टीम है। जुगलबंदी यहाँ पर बिल्कुल बनेगी, शायद से थोड़ा बहुत और खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फलक बेहतरीन स्प्रेज यहाँ पे दिखाते हुए ये चिकन डिनर शायद से मैं बोल सकता होगा टीम फोर्थ ने ले लिया। जो गैप है थोड़ा बहुत और कम हो जाएगा, बट टीम फ्लैश को यहाँ पे डोमिनेट करना पड़ेगा और उनको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, लॉबी तक का रास्ता दिखाना पड़ेगा यहाँ पे टीम फोर्थ देखते हैं यहाँ पे टीम फोर्थ वो चीज कर पाती है। फिनिश स्प्रेज यहाँ पर जाते हुए एक अच्छा ग्रेनेड फलक, एक अच्छा ग्रेनेड, द मैन विद द गोल्डन आर्म, कैन यू एक्चुअली थ्रो अ ग्रेनेड प्लीज, कम ऑन। एंड आई गेस अगर ग्रेनेड स्मोक में अंदर जाएगा, बिल्कुल स्मोक के अंदर ग्रेनेड, क्या ये कनेक्ट करेगा, क्या ये कनेक्ट करेगा? एंड आई गेस द ग्रेनेड्स आर लुकिंग गुड, कनेक्शंस यहाँ पे। ओ थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेनेड पीछे की तरफ, ये ग्रेनेड थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा और शायद से आगे जाके ग्रेनेड डाले तो मे बी मैं बोलता हूँ कनेक्शंस आ सकते हैं, बट पीछे से यहाँ पे शॉट्स आते हुए इसके ऊपर, एंड दिस इज नॉट लुकिंग गुड। बट फॉलक ओपन के अंदर ही गॉट कॉट ऑफ गार्ड एंड शायद से डायरेक्टली फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। जेटा पीछे से यहाँ पर शोल्डर लाइन से स्प्रे लेते हुए फोर्थ ट्राइब्स, दे आर डाउन टू 3 man standing. 3 players standing now. With that one player going down, it's looking a little more scarier them, but they're still gonna be here in the top 5, in the top 4, probably even as four sides will be now for the three players that are point on the side of one as they do manage to deal some damage. IQQ is very low with the S1 in the hand. Put it a 5. What is going to be the case? The DP28 is out. The DP is out and it's still alive. IQQ going to get dropped. Is he? No, he actually made sure to repush himself. And now the tag team is working out. T24 comes in. IQQ is dropped, but it doesn't really matter. They are making sure the Void pays, and Void shall pay indeed. 4 tribes. A beautiful tag team there coming in from Uzaifa, T24, and IQQ. All 3 of them played it perfectly, and they will take down the entirety of the squad of Void, and also whoever they're gone too. That's true. टीम फ्लैश, टीम फोर्थ ट्राइब्स की यहाँ पर खिलाड़ी डाउन होते हुए अभी के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टीम फ्लैश they're looking good। उनके ऊपर कुछ ग्रेनेड्स आएंगे, यूटिलिटीज को यहाँ पर डाला जाएगा, बट टीम ब्लू ई स्पोर्ट्स यहाँ पर 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ में आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा नंबर है। चिकन डिनर यहाँ पर इनके हाथों में भी आ सकता है, बट ये जो टॉप 3 टीम्स है, एज व्हाट डू यू थिंक व्हिच टीम माइट एक्चुअली पिक दिस आउट ऑफ, एंड मैटिक को यहाँ पर डाउन किया जाएगा बोस की तरफ से। It's a very tough prediction. It's a very tough say, to be really honest. I mean, Team Flash is here with 4, Glue with 3, 4 Tribes with 3. And it could go, it can go either way. Team Flash can lead the one with the advantage, but what has happened to them all of a sudden? That's 3 games that they're being really dominant. The last day here in the grand finals, and Flash are a different beast. We haven't seen them perform like this in day 1, 2, or 3, as a matter of fact. Now coming into day 4, it is just insane. Yeah, Team 4 Tribes यहाँ पर 8 अच्छे एलिमिनेशन लोग के पास में, एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं शायद से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन नॉकआउट आईक्यू देंगे, और शायद से टीम फ्लैश देयर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एलिमिनेटेड। यहाँ पर 2 प्लेयर्स अभी तक जिंदा, एंड उनके ऊपर ग्रेनेड्स जरूर आएंगे, ग्रेनेड्स का स्पैमिंग जरूर आएगा, एंड टीम फ्लैश दिस इज नॉट लुकिंग गुड, बट टीम 4 ट्राइब्स अभी के लिए यहाँ पर करते हुए थर्ड पार्टी बेहतरीन नॉकआउट यहाँ पर उजाइफा करेंगे, एंड एयूजी से बेहतरीन स्प्रे आता हुआ। 4 tribes. They're putting the screws to the players there, but it's just not enough. You know, they still have to go for those finishes now coming in. Flash with 2 players standing. Zyban will get taken down regardless. And 4 tribes will get one more domination, as you said. Uzaifa now holding strong. T24 will take down Zeus too. So Flash might just get eliminated. There's only 1 more player standing, and 4 tribes. This might be the perfect opportunity for them to get the chicken dinner. 3 players standing against 2 on the side of Flash again, and 1 on the side of Blue. That's it. जी हाँ, एंड यहाँ पर 4 Tribes they do have a chance. Rampage यहाँ पर T24 OP की तरफ से आता हुआ, एंड अभी के लिए सब कुछ शांत। The top 2 teams are still surviving into the lobby. It's Indonesian, it's Vietnamese, it's Pakistanis. कौन यहाँ पर इस चिकन डिनर को लेके जा सकता है? बेहतरीन ग्रेनेड
स्पॉट यहाँ पर आईक्यू ने किया इसके साथ में यहाँ पर लगाम लगाएंगे ग्लू स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को एंड टीम 4 ट्राइब्स वर्सेस टीम फ्लैश यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाएगी द इंडोनेशियन टीम सॉरी एक्चुअली वियतनामी टीम वर्सेस पाकिस्तानी टीम एंड इसके साथ में टीम फ्लैश के टॉप सी ही इज द सोलोमन स्टैंडिंग एक 1v2 फाइट किया द T24 OP एंड IQQ ये एक रहेगी राइवलरी ये एक बेहतरीन राइवलरी एंड T24 OP आ चुके हैं आगे स्पॉट यहाँ पे प्लेयर को किया जाएगा दैट वाज अ faulty grenade incoming एंड इसके साथ में शायद से this is the moment to pick him off Dropsy sprays यहाँ पे लेते हुए पहुंचा the low and he is gone and I guess the chicken dinner is in the hands of Team 4 Tribes and they will be taking the 5th chicken of the day 5th match of the day that is true. Fifth chicken, fifth match chicken, of course. But 4 Tribes towards the end, they will be the one coming on top, and they played it beautifully too. They are still in those fights. They take them down one at a time, and well, at the end, they also did manage to confuse. And I mean, it was more like a divide and conquer situation. There was the end a 1v2 situation, and Team Flash, I mean, unfortunate, the advantage they had did fall off. And Flash, they will be happy with the performance. But 4 Tribes, even though they got the chicken dinner, I still don't think it's enough to have that lead minimized. We will take a look at that. But for now, congratulations, 4 Tribes, with a beautiful chicken dinner. Exactly, and especially this 2K versus Team Blue Esports, this dagger fight, it was insane to witness from the start itself. But DRS versus Team RRQ in the region of Milta, it will be happening all the time whenever we witness both of these scenes. But this rivalry will exceed and stretch more and more. But now we can see Team Wargate, Team Secrets. I mean, they especially performed really good. But now just have a look on Team Secrets. Man, the grenade was good, but Zeris, he was the knight in the shining armor and he actually clutched it off. Screen को like करो guys. It did. I mean, there were some amazing moments throughout the game, right? Everyone played it beautifully, and the teamwork. I think it's about time that these teams show us that synergy is on point, and right now they are showing us that their coordination is good, the comms are building up, and Alliance showing up in a decent game this time. Wine is picking up the pace a little too little, I understand, but here's the thing: even though it's a little too late in phase 2, it is still in time for phase 3. This was a beautiful play. Coming in 3 surviving players inside of 4 Tribes, T24 and IQQ especially both these two. But anyway, 4 Tribes, that is when we could see the synergy in play, in action, and then they just took down the players inside of Glue, then Flash, and then secured a chicken dinner for themselves. Yep, and now 4 Tribes, this was a winning moment incoming. We'll be having a look on the winning stats, right? Because 4 Tribes, they actually played really, really good. And there we have it. Team stats on the screen right now. T24 OP will be taking 6, IQ will be taking 2, which Zypha will be taking 3, and Falak will be taking 2 as well. देखते हैं यहाँ पर ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर ये जो गैप है कितना कम होता है. That we will. We will wait to see how big of a difference I'll be talking about right now. Because 4 Tribes, after the chicken dinner, they'll be feeling confident. That's 13 in terms of eliminations, and then 10. So 23 points secured into this one. But I think Flash have also done a decent job going into this. Yes, exactly. And there we have it, the team stats and the match rankings. I mean, I want to look at the overall rankings as well. But there we have it, T24 OP, भयंकर performance यहाँ पर पिछले गेम के अंदर इनके साथ में यहाँ पर MVP का भी खिताब लेके जाएंगे. टॉप 4 प्लेयर्स के अंदर देखते हैं यहाँ पर कौन स्पॉट लेके जाएगा अपना. एंड देखते हैं. I mean, but T24 OP, one of a hell great fight it was, and 6 elimination with 4 knockouts के साथ में शायद से हो सकता है. ओवरऑल MVP के अंदर भी यहाँ पर शायद से थोड़ी बहुत बरकत कर सकते हैं and इजाफा करा जा सकता है. And Huzaifa, he keeps on performing really good from the side of 4 Tribes. He will be taking 3, Topsy will be taking 4, and Bany Esports that Pokis will be taking 4 elimination as well. So great performance overall it was, Edge, and especially Bany Esports, they were really close to make that chicken dinner happen, but yet too far. How far is the question that we are asking right now. Teams who watch and 4 Tribes are definitely going to be someone you need to keep an eye out for. Flash with 11 eliminations, 4 Tribes with 13, Wine with 7. The very bottom of the overall standings. They would have picked up the pace right now, but it's just not enough. And Glublook with 8 eliminations, looking good too.
going into phase number 3, things are definitely going to be heated up, and playoffs will begin from tomorrow. So once again, ladies and gentlemen, make sure you subscribe, hit the bell icon so you do not miss out on any of the action. As we take a look at the match summary, 69 total eliminations, 10 grand eliminations, 1 8 Due to 1 vehicle elimination, 7,010 healing done, and well, the longest elimination, it is from Zeus on the side of Team Flash, and 10 grand eliminations. Now, that is a big number, and I don't actually, I mean, I believe I do recall 6 to 7, but I can't really think of the other 2, 3. Exactly, and मैच समरी हमारी स्क्रीन के ऊपर है ना, एक दफा हम लोगों ने मैच समरी के ऊपर भी देखा, बट मैच रैंकिंग्स देखते हैं यहाँ पर किसने मैच रैंकिंग्स के अंदर ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करी है. इट्स एक्चुअली फोर्थ ट्राइब्स ऑफ कोर्स विद 23 पॉइंट्स एंड फ्लैश विल बी टेकिंग 17 पॉइंट्स. तो ये जो गैप था सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट्स का ही रिकवर कर पाई है टीम फोर्थ ट्राइब्स. आखिरी मैच के अंदर मुझे तो नहीं लगता कि टीम फोर्थ ट्राइब्स कोई एक 50 पॉइंटर से ज्यादा मैं बोलूंगा लेके जा सकते हैं मैच को. सो it's kind of impossible to dethrone Team Flash. स्ट्रीम को लाइक और सब्सक्राइब करो गाइस. I mean, yeah, it is looking impossible to dethrone Flash for sure. They probably need insane amount of points going into the last one, and I'm not really sure how they're going to be able to do that. But for now, these are the match rankings, and how does it affect overall? But I don't think we'll be heading down to the overall rankings here because we have the last 2 matches left, and I think we definitely will not be taking a look at that. But TTK on 0, 2K on 0 as well. DRS with 1 point along with Warga and Boom. BTR on 1 as well, 52 esports on 3 points along with Alliance, RQ on 4, DX and L3 Guerreros. Both these teams on 4 as well. 5 points for Panda, SIA, Team Secret, 11 for Wine, 13 for Glub Look, 17 for Flash, and 4 Tribes, of course, thanks to Chicken Dinner, they got themselves 23 points. That is the most important point there. And no overall standings, but overall MVP is going to be Win. Still from the side of Flash, 11,247 damage. Surpassing him in terms of damage is Rosemary, but behind him in terms of everything else, Zeus on 3rd position, Bose on side of on 4th position, and Firen on the 5th position. There, these are contenders for the overall MVP. Phase 1 overall MVP, I believe it was Huzaifa on the side of 4 Tribes, and he was on a roll going into this match too. So hopefully we can see something more out of him in the last match of the day here. And phase 3, of course, we will once again be taking a look at the 4 Tribes, and they definitely do have a really good chance to make it to the top. Again, throwables used, look at that, the difference between Vin and Rosemary, 192 to 100. Now that tells you a lot. The changes there, headshots, not much, but average survival, yes, Vin usually does manage to survive a little longer. We've seen a couple of games where he did survive as the last surviving player there too, but these are the head-to-heads coming in, as we have the favorite teams, 4 Tribes and DRS. Yep. Their fans are insane, and 4 Tribes at the moment leading the charts, but no real advantage. So once again, this is just to have an idea of how many of you are out there supporting and which team is the most fan favorites at the moment. Like and subscribe karo jaldi se guys. Yep, exactly, and there we go, man. These are the fan favorite teams on our screen, and especially the fans, they always keep on supporting 4 Tribes and DRS. We know because 4 Tribes ke fans and DRS ke fans, they are the mostly consistent on the channel of 141 esports, and especially हम लोग यहाँ पे बोले DRS के fans and 4 Tribes के fans बहुत ही ज़्यादा अच्छा support करते हैं. And even if they are not going to, I mean ऐसा होगा तो नहीं कि वो top 18 के अंदर ना आए playoffs qualifiers के अंदर, they will be in top 18, that is for sure. But अगर कभी ना भी आए, so they do have a plan B, and हमेशा 4 Tribes के fan and DRS के fans will be keep on supporting them. But last match हम लाजमी तरीके से हम बहुत ही जल्द start करेंगे, and एक बार गिवअवे का विनर भी देख लेंगे. एंड गिवअवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से आके पार्टिसिपेट कर लीजिए, and देखते हैं कौन रहेगा विजेता और लेके जाएगा एक elite royal pass. And जल्दी से जाके उस royal pass को I mean claim कर लेना. अगर जीते हो तो all you have to do is just scan that screenshot, take the screenshot and give some proofs to 141 esports. आप लोग उनके official Instagram के ऊपर जाके जल्दी से एक बारी मैसेज कर देना, DM कर देना, and you'll get your royal pass, that's for sure. And
देखते हैं क्या scenarios रहता है. But it's really good to see the Royal Pass happening and the Elite Royal Pass giveaway is happening. But let's just have a look on the giveaway winner. Congratulations, my guy, on winning this Royal Pass and having those UCs in your account and claiming that Elite Royal Pass right now. Congratulations, my man. But अगर आप लोग यहाँ पे wonder कर रहे हो कि आप लोग यहाँ पे giveaway के अंदर कैसे participate कर रहे हो, अभी भी आज के दिन का एक और giveaway बाकी है. Ladies and gentlemen, the boys and girls watching out there, निराश मत होना अगर आप लोग यहाँ पे नहीं जीते हो, तो हमारे पास में एक और गिव अवे बाकी है. सो जल्दी से जाइए, जाकर अभी पार्टिसिपेट करिए. गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल. एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे लिख सकते हो, या फिर एक जो लिंक है यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर पिन किया गया है नाइट बॉट का, वो कमेंट रहेगा, उस लिंक के ऊपर टैप करना एंड देखिए. Have a little bit of patience, right? वो लिंक वर्किंग है. I did. मैंने भी वहाँ पर लिंक खोल के देखा. So it's a working link. All you have to do is just wait a little bit. वो अपने आप यहाँ पर जाके वेबसाइट ओपन हो जाएगी. उसके सामने आप लोगों के सामने एक इमेज रहेगा. उसी इमेज पर क्वेश्चन रहेगा, राइट? एंड उस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करना है, राइट? सो उस इमेज के ऊपर टैप करना, फिर उस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर के साथ में अपना रियल नेम विद योर पबजी मोबाइल कैरेक्टर आईडी बिल्कुल ध्यान से और सही तरीके से लिखना. जस्ट इमेजिन यू गाइस आर गिविंग एन एग्जाम एंड कोई भी आप लोग यहाँ पे गलती नहीं कर सकते हो. और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को वो जो कॉमेंट है एक बारी पोस्ट कर देना है एंड दैट्स इट. आप लोग यहाँ पर इजीली तरीके से एक गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर लोगे एंड बहुत ही ज्यादा इजी एंड सिंपल स्टेप्स रहेंगे. आज के दिन का आखिरी मैप, आखिरी गिव अवे रहेगा मिरामार के मुकाबले के ऊपर. हम लोग को पता है दैट स्पेशली जो आखिरी मुकाबला रहेगा वो बहुत ही जल्द यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आखिरी मुकाबला है ग्रैंड फाइनल्स का, डे नंबर 4 का. और इसके बाद में वी कैन क्राउन आवर विनर्स एंड नो डाउट द टीम फ्लैश इज विनिंग दिस वन. We'll see. I mean, officially, if they will be the one coming out on top. At the moment, it does feel like Flash, they have this in the bag already. Or we will be, once again, giving the benefit of the doubt to all the teams that are still here in the party, still here in the chase to get that number 1 spot. Flash right now have already made the bed and slept in it. And they hope to sleep in it for a little longer. Giveaway. We've already talked about it. One more left, one more map left, one more winner. Unfortunately, once again, this wasn't me. So, I will immediately have to do this again, hoping the last match, if Flash wins or not, I hope that I win the giveaway once again. Every man for himself. I'm sorry for being selfish here, Inferno, but I mean, I hope you win too. But all I'm saying is, if not you, then me. But let's see Sure. how things turn out here on the map of Miramar, and let's see who will be the lucky winner in the audience from you guys watching us on YouTube. Let's see if you guys get yourself a free raw pass yourself. Anyway, the maps here. Rondo started off really well, and 4 Tribes, well, they had a chance, but RQ just stole that towards the end, and then 2K coming in towards the end of the angle there too. सब्सक्राइब करो guys. Did have a 4-player standing. Boom, we're on the verge of converting that 2v4 into a 1v2, but unfortunately turned around. It turned out to be a 1v2, but in the favor of 2K still. Miramar, well, Flash was just too dominant, and Rondo, Secret is the one who got the chicken dinner, but it was more like a Thanksgiving gift for Secret, as we did see a beautiful fan fight towards the end, which was very cool to watch. 4 players, and all 4 were taken over as UK on the side of Team Secret in a fan fight, by the way, 1 by 1. And match 5, 4 Tribes once again just absolutely dominated. And now going into Miramar, even if 4 Tribes dominate, I don't think it's gonna be as easy as much. Yep, Edge, the next match is going to be the last match of our day, and it is going to be match number 6. Ladies and gentlemen, are you guys ready? Go and get some snacks, right? And go and get some snacks out there. And Miramar is going to be Edge. I'm super duper excited to see who's going to be winning this one. And it is the last match, and then we will be crowning our winners of Asia Balbo's Chapter 3rd, Phase 2nd. And we do know who's going to be the winner, but we just don't want to spoil the party for you all. But let's see, can 4 Tribes take and make that chicken dinner in the end? But Miramar, man,
it's going to be one hell of a fight because we do know कि शुरुआती फेज के अंदर ही शुरुआती स्टेज के अंदर ही हो सकता है कि हम लोग को बहुत ही ज्यादा फुल बैटल्स देखने को मिल जाए पिकाडो के ऊपर अल्टर ईगोस एंड फोर्स ड्राइव्स का फाइट तो होता ही होता है क्या पता कि कोई और टीम आए और जल्दी इन फाइट्स को खत्म करने का ट्राई करे एच व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फॉर द अपकमिंग वन डू यू थिंक दैट वी विल बी विटनेसिंग दोस 4 battles or not I think we will be witnessing some more um, amazing duels coming in, but is it gonna be a squad fight? Is it gonna be pretty early? That is a question we will have to wait and watch to be answered, as we have teams dropping down for one last time here on the map of Miramar. In phase 2 grand finals, that is, we still have phase 3. We will have 10 more days of action lined up for you guys, so it's going to be interesting. But for now, Miramar, one last time. And you can already see Warga once again going to their drop location pretty early towards Ruins. Fairfield maybe towards, maybe for the side of Voin. Xavier entering the map as well. Atona probably will be occupied as well. And let's see if Picado once again will be contested here by Alter Ego Eris. I mean, it's going to be the case because लाजमी तरीके से हम लोग को वहाँ पर पिकाडो के ऊपर फाइट देखने को मिलेंगी एंड कितनी टीम्स यहाँ पर पिकाडो पे उतरेंगी वो देखने वाली चीज रहेगी वॉर गए रूइंस के इलाके में यहाँ पर स्पॉट करेंगे एंड वहाँ पर अपना लूट फेस स्टार्ट करेंगे लकोब्रिया खाली रहेगा एल्पोजो भी यहाँ पर खाली रहेगा हसन एल्पोजो के ऊपर हालांकि हम लोग यहाँ पर कुछ टीम्स जाते हुए देखने को मिल जाएंगी ओके पिकाडो के ऊपर वी कैन सी टीम्स आई गेस there are some a lot of teams actually dropping by जोन भी यहाँ पे बन चुका है जोन भी यहाँ पर शायद से टीम्स के लिए एक एडवांटेज लेके आएगा एंड जोन भी बहुत ज्यादा बेहतरीन हम देखिए यहाँ पर एक्चुअली पिकारो के ऊपर 3 टीम्स हम लोग को देखने को मिल जाएंगी अल्ट्रा ईगो एरिस G2 के ई स्पोर्ट्स एंड 4 थ्राइव्स हमारी स्क्रीन के ऊपर जो 12 प्लेयर्स है जो 12 प्लेयर्स की फाइट है अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और देखते हैं कि कौन सी टीम पिकारो के राजा बनेंगे और अभी तक अपने यहाँ पर इस ड्रॉप को डिफेंड करेंगे देखिए ड्रॉप को डिफेंड करने की बात आएगी सो वो रहेंगे हमारे टीम फोर्स ड्राइव्स क्योंकि हालांकि हम लोगों ने सबसे ज्यादा उनको यहीं पे उतरते हुए देखने को मिला है टीम सीक्रेट्स की टीम भी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाएगी ड्रॉप करते हुए टीम सीक्रेट्स वर्सेस टीम अलायंसेस फाइट है यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फाइट लेते हुए बेहतरीन नॉकआउट उसे एक ही हमसे हाथ में पकड़ेंगे उजी लॉलवू अगर यहाँ पर एक हेलमेट मिल जाए तो मैं बोलूंगा बेटर हो सकता है एक उनके पास फर्स्ट आई मीन मैं बोलूंगा वेस्ट भी नहीं है सो आर्मर के हिसाब से कुछ भी नहीं था एंड ऑफकोर्स यही होना था एक भी सिंगल बुलेट आएगी तो उनको सबसे ज्यादा डैमेज पड़ेगा रिवाइवल यहाँ पर होता हुआ अलायंसेस का प्लेयर्स यहाँ पर लॉलवू के उस खिलाड़ी का एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने अंदर आई मीन अपनी टीम के लिए किताब में लेके जाएंगे एंड हसनदा के ऊपर यहाँ पर टीम सीक्रेट्स भी आती हुई डीआरएस का अगेंस्ट यहाँ पर ये जो फाइट है बहुत ही जल्द इनिशिएट होगी एंड देखते हैं लाजमी तरीके से जो फाइट है यहाँ पर कौन जीत के जाएगा एंड कौन सी टीम यहाँ पर खामियाजा भुगतेगी बट अभी के लिए अगर आप लोग एक बार कंफ्यूज मत होना ये जो पॉइंट टेबल्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हो राइट साइड ऑफ द स्क्रीन के ऊपर इट्स एक्चुअली फॉर दिस इसके बाद एक और टूर्नामेंट मैच राइट ये ओवरऑल यहाँ पर नहीं है राइट सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल सो ये सिर्फ और सिर्फ इस मैच के लिए है एंड इसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने विनर्स फॉर श्योर बट वी कैन सी डीआरएस XMPLZ डाउन टू हिज नीज रिवाइव यहाँ पर करना लाजमी तरीके से करना पड़ेगा Yeah, I mean, they got to be really, really cautious going in for those rivals. And DRS, once again, last Miramar, they did start off decent. This one, it feels like they might just get taken down pretty early. As we do see 2 eliminations coming in immediately, and the Lions are the ones who are dropping them down. Cyclone is in a tough spot, and Revival may not be coming into play here. So the only one standing right now on the side of DRS is going to be Killer YT. For how long is another question that we'll have to wait and watch. Team Flash, in the meanwhile, they already got 1 elimination for themselves. They're dropping in anywhere that they want at the moment. They don't really need to worry a lot about their positioning on the overall on the map as well. Survive for as long as possible, get as many points as possible, then hope for the best. And at the moment, Team Flash, they're the ones on the top of the scoreboard, and they don't really need to struggle that much. They don't need to take unnecessary risk. All they need to do is to have an average or an above average game, or a decent performance overall. But the SIA might be dropping players inside of Flash. They actually lost 2 players pretty quickly.
जी हाँ बिल्कुल। एंड टीम फ्लैश अभी के लिए यहाँ पर 2 प्लेयर्स को खामियाजा भुगतते हुए, एंड यहाँ से शायद से मजीद प्लेयर्स हम लोग के आसपास एसाइड स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। 2 प्लेयर्स उनके भी जिंदा। अभी जो इक्वेशन है बिल्कुल इक्वलाइज कर दी गई है, एंड 2v2 की वो जो बैटल है वहाँ पे इनिशिएट हो जाएगी। ऑल्टर ईगोस के प्लेयर्स यहाँ पर बिल्कुल शांत तरीके से एंड चार प्लेयर्स वेट करेंगे सही अपॉर्चुनिटी का एंड ओपनिंग देखने का। बोथ ट्राइब्स के प्लेयर्स यहाँ पर अपना स्पॉट पकड़ते हुए कसिनो की उस बिल्डिंग के अंदर, एंड कैसीनो में ही सारे के सारे फोर्थ ट्राइब्स के प्लेयर्स रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल। एंड चार के सारे प्लेयर्स तो नहीं, एक्चुअली हुजैफा एंड हम लोग को देखने को मिल जाएंगे IQQ। वो एक्चुअली एक बिल्डिंग में है एंड अपर फ्लोर के ऊपर रहेंगे। थोड़ा बहुत एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा स्काउट करने के लिए ग्राउंड के ऊपर, बट अभी के लिए हम लोग देखने को मिल जाएंगे T2 की स्पोर्ट्स की टीम यहाँ पर डबल रेड बिल्डिंग के ऊपर। फोर्थ राइब्स की टीम यहाँ पर क्या सिनेरियोस देखने को मिलेंगे। मेरे को दिख रहे थे कि एक खिलाड़ी फोर्थ राइब्स का थोड़ा बहुत रिटेलिएशन दिखाते हुए Retaliation might be coming in play, but for now, they're holding on to their compounds, not letting go of those areas, and then retaliating too. Everyone just holding on to their position. Alter Ego, they're also one of the top teams there in the overall standings, top 5. Can they capitalize and become top 1? I'm not really sure, man. I mean, it's probably is going to take a lot. It's close to impossible. They probably have to take down the entire server down. Players in the server, I mean. Yep. DRS, the gone, and SID Sports, they're also gone, I guess. Yep, they are. Whew. Team Flash, 4 elimination points. And still in top 16. So यहाँ से शायद से 2 अच्छे elimination points लेने के बाद में इजाफा करेंगे गेम के अंदर. But मैं बोलूँगा बेहतरीन consistency. लॉस लेनस के रीजन के अंदर यहाँ पर अपना रोटेशन स्टार्ट करेंगे. 1000 मीटर है जोन से बाहर. I hope you guys are loving the live stream as well. अगर आप लोगों ने अभी Team Flash, they're like, we don't even want to play this game anymore. We know that we are winning. It shouldn't hamper their it shouldn't hamper their position there on the top, right? Once again, as I said, fourth tribes, if they can somehow clear out the entire server right now, I'm pretty sure they will have a chance. I believe same could be said about any other team. There's a really good chance that they can actually get that number 1 spot, but the only way to do it is get 50. Get a 50 pointer. And even then, I cannot promise you, by the way. Even then, I'm just saying you have a chance. You don't really. I mean, I'm not really sure if you're going to be in the number 1 spot. There's never that, guarantee. But Flash getting taken down, which means the server's going to breathe a little easier. As GRS and Flash, both of these teams, usually the most dominant ones on the map of Miramar, are gone now. जी हाँ, Alter Egos पेशेंस यहाँ पर थोड़ा बहुत छूटता हुआ. अजय के ऊपर जाएंगे, शॉट लिया जाएगा. रोजमेरी हाथ में रहेगी शॉटगन और आगे की तरफ बढ़ते हुए लास्ट में प्लेयर्स को यहाँ पे नॉकआउट करने का ट्राई करेंगे. इसी साथ में मजीद प्लेयर्स मैं बोलूंगा अभी पिकाडो के ऊपर 20 सेकंड्स और उसके बाद में जोन क्लोजिंग हो जाएगा. भयंकर तरीके से वो शॉटगन का शॉट है, गन डाउन को किया जाएगा. स्नेक आगे तरफ बढ़ते हुए हाथ में रहेगी डीवीएस एंड टीम फोर साइड्स यहाँ पर क्लोजिंग करेंगे अपने आप के डिस्टेंस को, शायद से थर्ड पार्टी करने का पूरा ट्राई करेंगे. पिकाडो का यहाँ पर टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ता हुआ है. पिकाडो इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर. स्पॉट यहाँ पे प्लेयर हो जाएगा एट T2 के ई-स्पोर्ट्स बाहर होते हुए. क्या फोर ट्राइब्स यहाँ से अब करेगी थर्ड पार्टी? हाँ जी बिल्कुल. इसके साथ में टीम फोर ट्राइब्स यहाँ पर अपना डिस्टेंस को क्लोजिंग करती हुई अल्टर ईगोस के अगेंस्ट. अल्टर ईगोस आते हुए 4v2 के बैटल के अंदर. Whoa. Four tribes, 0 elimination and third party के अंदर ही जो मैं बोलूँगा इजाफा है थोड़ा सा स्लो है. एंड क्योंकि स्प्लिट बहुत बड़ा था सभी प्लेयर्स का.
एंड टू द ऑडियंस मैं कुछ बोल रहा था दैट अगर आप लोगों ने अभी तक 141 ई स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके सब्सक्राइब करें, गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करें, एंड आप लोगों को बहुत ही जल्द एक क्यूआर स्क्रीन के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। उस क्यूआर को भी आप स्कैन कर सकते हो अपने फोन से एंड डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर जा सकते हो और गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड गिव अवे के अंदर आप लोगों को मिलेगा एक एलीट रॉयल पास, राइट? सो जाइए जल्दी से आके यहाँ पर गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए। बट जेनफोर्स हमारी स्क्रीन के ऊपर गैस इनके ऊपर ग्रेनेड जाएगा जी, हाँ बिल्कुल, बट जो ग्रेनेड का इंफॉर्मेशन है वो अभी तक नहीं आता हुआ। और भी ज्यादा ग्रेनेड्स जाते हुए इस साथ में टीम 52 बेहतरीन ग्रेनेड जेनफोर्स के ऊपर डाउन। यहाँ पे जेनफोर्स को किया जाएगा लैपर, ही इज द सोलोमन स्टार्टिंग हिट चेज वहां पर होता हुआ है एंड हिट चेज के बाद में आई गेस यहाँ पर इजीली फिनिश ऑफ कर सकते हैं खामियाज और शायद से टीम 52 ई स्पोर्ट्स को नहीं भुगतना पड़ेगा, बट टीम आरक्यू को जरूर भुगतना पड़ेगा। बट ये जो फाइट है 2v2 के अंदर बेहतरीन ग्रेनेड शायद से नॉकआउट ले सकता है टीम सीक्रेट्स यहाँ से होती है इस गेम से बाहर। एंड टू द ऑडियंस वाचिंग आउट देयर, yeah 13 Go ahead. RRQ. Always audience first, man. Come on. Audience first, yeah, for sure. And I mean, मैं ऑडियंस से एक सवाल पूछना चाह रहा था। देखिए, हमारा आज का दिन यहाँ पर खत्म ही होने जा रहा है, सो एक और चलिए आप लोगों से सवाल पूछते हैं। It's not about PUBG, it's not about anything related game, it's about your experience. And बताइए आज के दिन के अंदर आपका सबसे फेवरेट मोमेंट क्या था? Please do let us know in the comment section. आज के दिन के अंदर आप लोगों को सबसे फेवरेट मोमेंट क्या था, हम लोग को बताइए, and we'll be having a look on the chat section as well. And audience, we love you all and thanks for supporting 141 esports out there and us as well. But it's going to be the last day. इसके बाद में हम लोग phase 3 का भी इनिशिएशन करेंगे। बट एक बारी इस फेज का भी अंत करते हैं, एक बारी अपने आंसर्स भी बताइएगा आप लोगों का फेवरेट मोमेंट क्या था आज के दिन के अंदर। बट लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द फाइट वर्सेस टीम 52 वर्सेस टीम RRQ. We'll take a look at the fight, all right. But do you want to know what was my favorite moment here in the day? The grand I mean, final we know last that day. pan fight, right? Yeah. No, it was actually the moment you joined me to cast. Right, you thought that I won't be coming. No. I was just delighted to watch you come back. But anyway, 52 will actually drop the last surviving player. And there you go. Tandem are going to get taken down in position number 11 as we're now down to 10 teams, 31 players surviving in this. Oh, those grenades. Those grenades were important as they dropped two. The last two men standing now instead of one. The last player will be going for the heal, but I don't think it's going to be enough. But Russell, got to be careful. It's still a 2v1 situation. It is still possible. Foxy 5. Can he capitalize? One young gets a bit of damage. Takes a lot of damage actually. It's Jedi. It's not Foxy. It's actually Jedi 5. And he's going to get dropped. And Boyne, well, they will get taken out. Xavier. This iteration of players. I've had some questions from phase 1. But they are proving me wrong. They're always performing, well, decently, not great. I still think there's a lot of potential, and it's not over yet. Wait a second, the fight is now being dragged because BTR joins the party. Russell, the only one standing yet again here on the side of the Xavier, and the zone is also not going to be helping him. DBS in the hand, can he turn this around? 2 players on the side of BTR here now standing up. He will make sure to get the elimination. Beautiful play, but in a 1v2 situation, BTR might have the advantage, and they will definitely have the advantage as the Xavier get taken down. 9th position finish and 5 eliminations. Yep, BTR 2 प्लेयर्स का यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा जोन के अंदर जाने की दरकार रहेगी, एंड इसके साथ में यहाँ पर 350 मीटर जोन से बाहर रहेंगे। एंड इसी के साथ में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम फोर्स ड्राइव्स एंड ऑलरेडी उसके प्लेयर्स अभी भी है पिकार्डो के ऊपर। ये जो 4v2 की बैटल यहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट टाइम शायद जोन भी इनिशिएट नहीं हुआ था उसकी, हम लोगों ने देखा था टीम अल्ट्रा ईगल्स एंड फोर्थ ड्राइव्स अभी भी पिकार्डो के अंदर थी, एंड अभी तक अल्ट्रा ईगल्स या फिर फोर्थ ड्राइव्स फाइट लेने के लिए तैयार नहीं है। एज स्नेप अगर ओपन के अंदर आए तो डाउन किया जा सकता है। IQ is ready with his Scarl in his hand with the red dot. स्नेप क्या पता है उनको, क्या पता? नो
IQ, you gotta keep on checking that spot. You gotta keep on checking that angle. Oh no. अगर इसने बाहर निकलेगा तो नॉकआउट किया जाएगा. Oh, that timing, it was so unfortunate. Oh my God, IQ down होते हुए वहां पर. But वो जो एक सेकंड की जो टाइमिंग थी ना, it actually played a huge role. And now fourth drives, they have to make a decision. Do they leave him behind? And I believe they will not leave anyone at the moment. I actually thought they were gonna maybe let one fight go for those elimination points, but at the moment it looks like all of them are gonna go trying to go for the rotation, and Huzaifa will be back healing himself up while driving. The bandages will have to come into play. Stage 4 circle will be doing a bit of damage. They're not that far away from the zone, or are they? They actually are. Wait a second. T24 is gone. Huzaifa is gone as well. Okay, T24 is still alive, I'm sorry. T24 might get taken down thanks to the zone. They're very, very close now. They can actually make their way back in, and T24. Amazing driving skills there. Yep. And Ultra Egos, they are also coming into the zone, and Falak के against वो जो rotational clash है हम लोग को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा. इनका Falak spot करेंगे player को. Blue के ऊपर कुछ sprays आते हुए spot किया जाएगा. Player को Matic ने screen के ऊपर Ultra Egos के Snape यहाँ पे डाउन किया जाएगा. मैं वही बोल रहा था, Ultra Egos के अगेंस्ट फाइट में आएंगे, वो जो rivalry थी पिकाडो के ऊपर अब वो जोन के अंदर आके दोबारा से कंटिन्यू करी जाएगी. But Ultra Egos, I guess they're surviving with the Solomon standing. It's not going to be easy. Grenades are going in, and इसके साथ में Falak क्या यहाँ पर 1v2 कर पाएंगे या फिर नहीं. Grenade रहेगा हाथ में. The man with the golden arm यहाँ पर अपने टाइटल को क्या reclaim कर पाएंगे या फिर नहीं. But नहीं. Oh no, he was on the lower range. उसके साथ में यहाँ पे finish off भी कर दिया जाएगा प्लेयर को. T24 OP is going to be the Solomon standing. अब यहाँ पर एक 1v1 फाइट के अंदर, and T24 OP make the rivalry happen, take the revenge of Falak, and शायद से जाएंगे अपने बुगारी को लीड के अंदर बैठेंगे और डायरेक्टली पुशिंग करेंगे या फिर नहीं. देखने वाली चीज रहेगी. और Ultra Egos के स्कुलारी को यहाँ पर जोन के अंदर भी आना पड़ेगा. जोन भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है. शॉट्स यहाँ पर आ चुके हैं. अलायंसेस के प्लेयर्स यहाँ पे शॉट लेंगे. स्मोक नहीं है, ग्रेनेड है, एक सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बैंडेज रहेगी. नो फर्स्ट एड्स एंड कुछ नहीं है इनके हाथ में, एंड दे आर ड्रेन आउट. They are not having a good amount of healings and resources, and Ultra Egos यहाँ से होती हुई बाहर. It's the 8th position too. Unfortunate situation with 6 eliminations only. And I say only because of the fact that this is the last game, and that is not enough for them to surpass Flash at the moment, who is the one sitting on top with 230, 240, maybe even 250 plus points. But regardless, we're down to 7 teams, 18 players now, 70-minute mark about ahead. Stage 4 circle comes to a close in a minute. T24, the only player standing on the side of both sides. As Federal will take a bit of damage, will be repositioning himself, making sure that he's not spotted out completely out in the open. Make sure he doesn't get taken down pretty early into these fights. As T24 will be dropped. The Scarrel from the side of Maul, on the side of Boom. 2 eliminations for 4 drives. The last 3 games have turned out to be a disastrous ones for them. Yeah, Team Boom Esports 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर लोग पास में है, एंड इसके साथ में यहाँ पर 6 टीम्स, एंड मैं बोलूँगा मजीद प्लेयर्स लॉबी के अंदर नहीं है, बट देखते हैं कि इस नज़ाकत से इजाफा करते हैं यहाँ पर. एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बूम ई-स्पोर्ट्स के चारों खिलाड़ी जिंदा. जोन भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा. 6वें जोन की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे, एंड बूम ई-स्पोर्ट्स यहाँ पर अभी के लिए आगे तरफ जाते हुए. 2 ही एलिमिनेशन है, ज़्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स हम लोग के पास में नहीं. I mean, all these teams at the moment, it just feels like the ones surviving right now, right? None of them really have a lot of eliminations to show for, because it's been a very equalized, very equal playing field, this one. You can see Ultra Ego 6, 5 Alliance, 5 Void, 5 Xavier, 4 Glue, 4 Fifties was 4 Flash 4. So a lot of these teams, I mean, actually, almost everyone did manage to do, decent amount of damage, and everyone pretty much ended up getting at least a point. So, in terms of eliminations, at the moment 2K is the only one with no eliminations, but they still have 3 players left. So I'm hoping they get 1 point before they get taken out. But right now, every team in the server is leaving with at least 1 point. Yep, Team Glue Esports and the giveaway
का QR आप लोग जो स्क्रीन के आगे। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, बहुत ही ज्यादा इजी एंड सिंपल स्टेप्स आप लोगों के सामने, QR भी है, लिंक भी है, हर एक चीज आप लोग को प्रोवाइड करी जा रही है। तो जाइए जल्दी से जाके अभी पार्टिसिपेट करिए गिव अवे के अंदर, क्योंकि हमारा आएगा आज का आखिरी गिव अवे इस दिन का, राइट। सो इस QR को स्कैन कर सकते हो, लिंक के ऊपर टैप कर सकते हो, एंड गिव अवे के अंदर आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आप लोग को आंसर देना है। जैसे आप लोग गिव अवे के लिंक के ऊपर टैप करोगे या फिर QR कोड स्कैन करोगे, विल बी रीडायरेक्टेड टू योर ब्राउजर्स। वहां पर आप लोगों के जो सामने रहेगा एक इमेज, उसी इमेज के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, उस इमेज के ऊपर आप लोग जैसे ही टैप करोगे आप लोगों को वहां पर अपना रियल नेम विद अ PUBG मोबाइल कैरेक्टर ID एंड उसी के साथ में अपना आंसर वहां पर डाल देना है, एंड सब कुछ करेक्टली करना, स्ट्रीम को अपना लाइक आंसर एंड सही सब्सक्राइब देना। करो उसी के गाइस साथ में जल्दी यहाँ से। पर आप लोगों को अपना जो PUBG मोबाइल कैरेक्टर ID है वो भी बिल्कुल सही तरीके से टाइप करना, कोई भी यहाँ पर गलती होनी नहीं चाहिए ऑडियंस एंड लेडीज एंड जेंटलमैन वाचिंग आउट देयर। एंड उसी के साथ में मैं बोलूंगा अगर आप लोगों ने अभी तक 141 esports के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग को और भी गिवअवेज देखने हैं फेज 3 के अंदर, सो यू गाइस गॉट टू सब्सक्राइब, राइट। सो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड यू गाइस कीप ऑन गेटिंग दोस गिवअवेज। Well, the luck of the audience and the viewers will be tested there for sure, and a little bit of knowledge as well, because you need to definitely get the answer right there, right? So that is something, and plus the luck, of course. A little bit of luck is always good. It never hurt anyone. As we have Boom on the other hand, still surviving with 4 players and 2 points. That's it. 2K Esports. 3 players still holding on, and everything just come to a standstill at this point. The last stage, I mean, this circle, no real movements to forget about fight, but no movements at all. Everyone's just holding on because the circle is in favor of everyone. So the next 20 seconds, I don't think any action, but after that, there will be a drift in the circle and there will be some movements on the map. Yeah, and now we can see Glue Esports. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टीम 52 esports के प्लेयर्स एंड 2K esports, they are also enjoying. I mean कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट नहीं है, बट Glue esports के अगेंस्ट कभी भी जो फाइट है पैन आउट हो सकती है। एंड अभी के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2K esports एंड Glue esports सब कुछ शांत, एंड हसन लैंड सैंड मार्टिन के आसपास ये जो जोन है शिफ्ट हो चुका है। Not a lot of change, not a lot of teams that are not already in a good position. And Martin just exiting, Hacienda del Petron entering the circle. UK Esports holding on. They will be able to hear a lot of commotion and see a couple of players there on the side of Glue Blue as well, but everyone's going to be very, very cautious with this final circle. Stage 6 coming to an end in the next couple of minutes. All of these teams, all of these players are waiting. That last circle is definitely going to be a banger. But you can see